सरकार से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी आदि प्रणाली को सरकार ने कुछ मापदंडों के तहत मान्यता दी है, तो क्या सरकार ने इस प्रणाली को भी मान्यता प्रदान करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था और इसके लिए 5 मापदंडों को पूरा करने का सुझाव दिया था? क्या उस कमेटी ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है क्या? यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण दिया जाए। अध्यक्ष महोदया, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है इलेक्ट्रोपैथी के बारे में, इसकी मान्यता के संबंध में हमने इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई हुई है डॉक्टर कटोच की अध्यक्षता में, और उसमें हमारे पास समय समय पर कई पिटिशंस आए हैं इसके संबंध में, इसको मान्यता देने के संबंध में, और हम उसको एग्जामिन अभी इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो DHR का नोटिस था उसके हिसाब से जिस फॉर्मेट और जिस मैनर में ये प्रपोजल्स हमें मिलने चाहिए थे वो उसके अनुसार नहीं मिले हैं। सो वी हैव रिटन बैक टू द पेटिशनर्स, उनसे हमने कहा है कि आप सही फॉर्मेट में उसको दीजिए ताकि जो हमारे डिज़ायरेबल क्राइटेरिया हैं, जो एसेंशियल क्राइटेरिया हैं, उसके तहत हम इसको एग्जामिन कर सकें और उसके बाद हम निर्णय ले सकें कि हमें इसे मान्यता देनी है या नहीं देनी है। एज ऑफ नाउ ये कोई रिकग्नाइज सिस्टम नहीं है। सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इस प्रणाली को भी अभी तक मान्यता नहीं दिए जाने के बावजूद आज भी देश में कुछ संस्थाओं द्वारा इस विषय पर डिग्री और डिप्लोमा दिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या सरकार इन पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात सही कही है कि ये एक रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, इसे मान्यता नहीं है, और हमने स्टेट्स को इस विषय में लिखा भी था। उनसे हमने कहा था कि आपके अपने राज्यों में यदि कोई ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं जिसमें डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज इसमें किए जाते हैं, आप उनको रेगुलेट करें, उनके साथ कड़ाई करें। और जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी आई है उसने भी यही तय किया है कि हम ऐसे कोर्सेज को हम रेगुलेट करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि ये राज्य इसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमने राज्यों को इस संबंध में एडवाइस किया हुआ है। अब ये राज्यों पर है कि अपने अपने राज्य में वो इस पर रेगुलेट करें और ऐसे लोगों को डॉक्टर टर्म इस्तेमाल करने से भी रोकें, डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज चलाने से भी रोकें, और किसी भी तरीके से जब तक ये सिस्टम रिकग्नाइज ना हो, आम जनमानस तक इसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। तो ये काम राज्यों को करना है। विंसेंट पाला जी। Thank you, Madam, for giving me a chance. Madam, in my constituency, Shillong in Meghalaya, there's a beautiful institute, Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy. It has come. It has been inaugurated in 2016. I'm not sure whether the minister has already answered, but may I know from the minister, since in inception, lots of sanction posts, whether all these sanction posts has been filled or not? And if it has not been filled, what is the target date? And I request you to see on this issue. I'm sure if you may not have all the data, but please give me data. Thank you. Madam, Ayurveda and homeopathy, all this relates to the Ministry of Ayush. Yes, yes. So I can just say that if you write to the Ayush Minister, he would be able to give an adequate reply. Yes, yes. Sri Kulamani Samal. So, Madam, thank you very much for giving me an opportunity to raise this important question. Madam, I have gone through the reply report tabled by the Honourable Minister regarding granting sanction to a 150-year-old system of electro-homeopathy medicine in India. Granting recognition to a system of electro-homeopathy medicine should depend on its effectiveness to cure diseases in our country. My question is very simple and straight. Whether any study in all the states and union territories has been made by the government to find out the effectiveness of the electro-homeopathic medicines in curing the diseases, and whether there is a court judgment in this regard. Thank you, Madam. मैडम, जैसा कि आपने कहा कि ये 150 साल पुराना सिस्टम है, but we do not have any such data. We don't maintain it centrally, since I said that this is a system of medicine which is not recognized by the central government. And as far as the issue of granting recognition is concerned, it does not fulfill the desirable and essential criteria, which are many in terms of, say, the system having certain fundamental principles of health and disease. It should be a comprehensive system. That means it should not be related to certain specific diseases.
and should have some substantial literature, and in the country of origin or wherever it is practiced, it should be recognized. So there are various criteria. So the committee has to examine before granting recognition whether those criteria are being fulfilled or not. But as of now, it does not seem to fulfill those criteria, and we can't really say that we can recognize it right now. N.K. Premchandran ji. Madam, thank you very much. Madam, to my limited information, this homeopathy has no relation or connection to this electro-homeopathy. It is entirely different. But it is quite unfortunate that for the last 150 years, in the name of homeopathy, this electro-homeopathy has been practicing. That has to be checked. That is my first submission. And I would like to know from the Honorable Minister also regarding the medical education. Homeopathic medical education is being regulated by the Central Council of Homeopathy. But unfortunately, the Government of India's directions and stipulations, which are being issued according to the Act and rules and regulations of the Government of India, has not been complied by the medical institutes, homeopathic medical institutes, universities, and respective state government also. So I would like to know from the government, though it is belonging to Ayush, I would like to know from the Honorable Health Ministry whether the Government of India will give a mandatory direction to the concerned states and homeopathic institute that all the directions and regulations of the Central Council of Homeopathic should be complied with. Such a direction will be given. I would like to know from the Honorable Minister and through you, Madam. Thank you very much. As the Honourable Member has himself said that the matter pertains to the Ministry of Ayush. However, you may always write to us. We will talk to them, and whatever appropriate is being required to be done in terms of communicating to the states, we'll do it. Question number 182. Score Bharatendra ji. 182. Yes, Mr. Minister. The answer is laid on the table of the House. Supplementary. मैडम, मैं सबसे पहले तो प्रशंसा और बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े निकट है ये हृदय के ये बाल लिंग अनुपात जो बढ़ता जा रहा है और इससे जो दुष्प्रभावित हो रहा है पूरा समाज और हमारा देश, और हर बार इसमें बजट को थोड़ा बढ़ाया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि 161 जिले चुने गए थे जिसमें बाल लिंग अनुपात बहुत कम है। मैडम, इनमें से इस अपनी योजना के बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के बाद वो 10 जिले कौन से हैं जिनमें सबसे सफल ये योजना रही और हम इस लिंग अनुपात को सबसे कम कर पाए। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा मैडम, सेकंड सप्लीमेंट्री है आपको। Ma'am, this has been an extremely successful program. In the first year, 2014, we took 100 districts, and at the end of the year, 58 districts had done extremely well, even going up by 100 points. In the second year, we took 161, and so far the reports that have come in, we have done extremely well in 104. Of these, the first 10, North Sikkim has done the best at 831. It was in 2014. It is now 1,009, which means more girls than boys. Karnal, 758 has gone up to 884. Mizoram, Seha, has gone from 915 to 1022, which is phenomenal. Kadalur in Tamil Nadu has gone from 856 to 957. Ghaziabad, which is a difficult, very difficult area, has gone from 899 to 977. Champawat in Uttarakhand has gone from 887 to 958. Mansa in Punjab has gone from 857 to 925. Una in Himachal has gone from 857 to 904. Rewari 803 to 846. And Jhansi from 860 to 900. So you can see from this that it is across the board. It really is dependent on the enthusiasm of the state government and the ability and enthusiasm of the district head. And we seem to have done very well across the board. सेकंड माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि जो 10 सबसे दुष्प्रभावित हैं जिले वो कौन से हैं और वो क्या कारण हैं जो जिनकी चुनौतियां इन जिलों के सामने हैं, और इनका समाधान के लिए क्या सरकार के पास कोई मॉड्यूल है
The districts that have done not so well are in the last 10 is Etawah, 953 has gone down to 916, gone down. Farrukhabad, 913 has gone to 876. Saharanpur, 954 to 913. Eta, 984 to 942. As you can see, most of these are in UP. No, it's the downward. Bijnor has gone from 944 to 894. Champawat has gone from 1027 to 961. Pithoragarh from 977 to 908. Hardwar 964 to 885. Dehradun 1062 to 959. Chamoli 948 to 839. And Kolkata, which has gone from 1022 to 898. In fact, Kolkata is the worst of the 161 that we have taken, unfortunately. Now, what are the challenges that we face? Because the center has no feet on the ground, we are totally dependent on the local and the state administration. We do a huge backup with a sustained media campaign, with rewards, awards, which working with the health ministry for the PCP and DT Act to make sure that people are admitted, women are admitted in the early stages of pregnancy into administrative hospitals. Now, what challenges do we have? A, in the districts that didn't do too well, the funds did not go from the state government to the district in time. Especially in Bihar, we had a lag of 6 to 8 months. And in UP, we had a lag, I don't think the funds have still reached, or they may have reached now. The DCDM leads the campaign. And in many of the districts that have not done too well, the district DCDM was changed every 2 or 3 months. The lack of ownership and leadership by some of the states, which are now doing better when they changed, when the governments changed. There was unrest and violence in some of the districts, for instance, in J&K. Now, what are the corrective measures that we took? In the year 16 to 17, we revised the scheme and started the disbursement of funds directly to the district collectors. Since then, it's done much, much better. Then special attention is being paid to the districts which showed declining trend, and this is followed up by weekly and monthly conferences with DCs, nodal officers. We have trained 1,668 trainers, master trainers, who have gone on the ground there. We have monitoring visits to the states and districts to motivate them. We have improved the utilization of funds. The states that are doing well have been felicitated, and the districts in which collectors have shown a great deal of innovation, like Jalgaon, Kadalore, Kathua, Raigad, Junjunu, North District Sikkim, Gwalior, Osmanabad, Yamunanagar, Mansa, the collectors have been given awards. Rajasthan and Haryana have done the best, so they have been awarded. We are now putting dedicated manpower in each district with a newly formulated scheme of Mahila Shakti Kendra, in which these people will man it from our side. And, of course, motivating the local people. It's a challenging process, but seeing that it is extremely doing extremely well in most districts, we're very happy with the results. श्री डॉक्टर किरीट सोलंकी। धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी है। मैडम, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत डिटेल रिप्लाई दिया है और भारत सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण जो कार्य हो रहा है इसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हमारा प्रधानमंत्री जी का वो एक मुख्य कार्यक्रम रहा है। जहां तक इतने कार्यक्रमों के बावजूद भी कितने बड़े स्टेट में जो लिंगुअल अनुपात है इसमें बेटियों की संख्या बहुत कम है और हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं इस बात पर एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया था
और पुरजोर से अभियान चालू हुआ था। इसमें एक महत्व की बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि अकेली सरकारें कुछ नहीं कर सकती है, जहां तक इसमें लोक भागीदारी नहीं जुड़ती है, जहां तक इसमें जन भागीदारी नहीं जुड़ती है, और एक जन आंदोलन के रूप में उन्होंने किया था। मैं मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार इसको जन आंदोलन करने के लिए क्या कार्यक्रम करेंगे, एक लोक भागीदारी, क्योंकि वहां गुजरात में कई समाज ने प्रतिज्ञाएं लेकर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था। कई ऐसे कपल है कि जिन्होंने एक सिंगल डॉटर उनके पास है, तो ऐसा अभियान समाज की भागीदारी से होगा। आप इसमें क्या प्रयत्न करोगे, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। मैम, ये प्रोग्राम इसलिए सफल रहा है क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी है, नहीं तो सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो रिवाज है ये हज़ारों साल पुरानी है कि हम लड़कियों को we kill them either in the womb, or we kill them after, or we abort them, or we kill them after they're born. So to change the mindset, especially in patriarchal societies as in Haryana, Rajasthan, and other places, and the fact that we've been able to do it means that people have been involved at every step. To give you a few examples, for instance, all birth statistics are put in public places in Gudda-Guddi boards, and debate is encouraged on this in every village. For instance, Jalgaon district has installed digital Gudda-Guddi boards in all offices and public places. We have had the brand visibility of the BBB logo. All government buildings, public offices, official public vehicles, public transport, school buses are using the Beti Bachao, Beti Padhao logo. For instance, in Haryana, Chandigarh, UTs, etc. Then we celebrate the birth of the girl child, and we dedicate special days on the value of the girl child, linking Sukanya Samriddhi accounts with the birth of girl children, and felicitating parents who had girls, plantation drives, symbolizing nurturing and care. And we've also been very strong in the prevention of child marriages. To give two areas of special interest, Cuddalore and in Jind, where they had this amazing program called Selfie with Daughters, which the Prime Minister also took part in, which we were, it sort of became viral. Then we take local champions. We choose them from sports, academics, writers, lawyers, students. The district administration uses them as role models. And these champions go to different blocks and spread the message of BP. For instance, in Sikar district, Una, Gwalior, the role model way has been very successful. Then we award best panchayats. We award parents who have valued their daughters. We award community members, local champions, meritorious girls. For instance, Nagaland, Jammu, and Gandhinagar have been very good at this. Then we have enrollment campaigns focusing on child education. And we have a lot of plays that every school is allowed, is encouraged to do. With things like School Chale Hum, which Jalgaon has done, Our School Chale by Sikar, Apna Bacha Apna Vidyalaya and Collector Ki Class by Junjunu, which has been an extremely innovative and good program. Career counseling guides by Sirsa and other places. We have special Gram Mahila Sabhas on the issue of declining child sex ratio, in which women stand up and talk about themselves. Our media has been very strong. We've used radio, cinema, digital media, mobile exhibitions, community engagement programs like Nukkad Nataks, puppet shows, and the positive reinforcement of the girl child has been going on now for 3 years. We've reached out on 140 radio stations. We've got TV spots in every one on TV channels. We have contacted 4.5 crore people through the mass SMS campaigns. We have used the social media, MyGov, Facebook, and we have a lot of NGOs involved in this, including grandmothers associations and other ones. On the other hand, we are also using people to give us information on the sex selection machinery. So the PCP and DT Act, we've tightened up the procedures on that. So far, we have implemented the inspection of 57,510 diagnostic facilities.
The convictions have been 416, and the medical licenses that have been suspended have been 114. The largest number of cases filed have been Rajasthan, followed by 24% in Maharashtra. So we have been working at this, through media, through NGOs, through changing mindsets. Yes, thank you. Mrudanko Manto. प्रश्न आप ही का था ना, बैठिए, अच्छा काम. In West Bengal, our popular Chief Minister, Srimati Mamata Banerjee, initiated the program Kanyasri in 2011. Yes. And in this year, the 2017-24 June, the United Nations has awarded the West Bengal government the first place for public service for its Kanyasri scheme in this year. The award ceremony was held at World Forum The Hague in Netherlands. Yes, out of 552 projects among the 62 countries, this Kanyasri scheme has got the first Kanyasri bags the first UN award in this year. So it is a great honor to this our country. And my request to the central government that this Kanyasri Prakalpa or scheme that is taken up by the West Bengal government should follow by the all other states, and it should be taken as a model to this initiated this program. Okay. And my another humble submission in this August House that I want to mention is one incident that has happened in Chandigarh this few days back. No. You don't have any question, please. Yes, question. This is not a suggestion hour. Government is trying to. This is not a suggestion hour. It is a question hour. No, you don't have any question. No, I'm sorry. Ma'am, I'd like to take this opportunity to speak on this. While the program that the West Bengal government has launched on their own is effective, it is the only state in India which has completely refused to do the Beti Bachao Beti Padhao scheme. And as a result, out of 161 districts, Kolkata is showing a severe declining trend in women. One second, एक minute. And the scheme that they have started, the scheme, please. Ma'am, the scheme that they have started is, many states have done equally well in that scheme. Madhya Pradesh, Ladli Lakshmi Yojana has done extremely well. Haryana has got Ladli Yojana. Jharkhand has Mukhyamantri Lakshmi Ladli Yojana. Rajasthan has got Chief Minister Rajeshri Yojana. Goa has the Mamta Yojana. Gujarat has... That's what I said. Gujarat has the Banika Samriddhi Yojana. Karnataka has Bhagya Lakshmi. Chhattisgarh Saraswati Cycle Yojana. Maharashtra Majhi Kanya Bhagyashri Scheme. Andhra Pradesh Bangaru Talli Scheme. Manipur has Balika Samriddhi Yojana. So many states have got similar programs and are doing extremely well as well. But I would urge the West Bengal government to adopt the Beti Bachao Beti Padhao program, because it's neither political, it benefits girls, and I see no reason why the Chief Minister should not adopt the program. Sri E.T. Mohammed Bashir. Thank you, Madam. Yes. Madam, this Beti Bachao, Beti Padhao is a flagship program because it is focusing on very important issue that is pertaining to birth rate ratio of the girl child and their educational empowerment. A minister in her reply have explained the certain success stories and the hurdles in implementing that. See, it is high time to review the entire thing because we had even CAG report says that, citing certain glaring example, they says that the scheme has not attained its real objective. Similarly, sir, Parliament is standing committee on HRD with regard to educational empowerment of girl child. They have also said that our budget allocation and expenditure, compared to that, expenditure is very less. So what I am saying is, Minister said there are certain problems with the state in that. But anyhow, what I am asking is, whether we can have a time-bound, strict program for the adherence of the guideline on implementation. Number two, have an effective mechanism for monitoring. This kind of thing, let the Minister. No, what you have pointed out basically is the girls going to school.
My emphasis when I talk about the effectiveness of the program is really getting the girls born to begin with. In that, we have been extremely effective. After that, going to school is a challenge by the state government. We have reinforced that. As I read out, so many programs where the collectors have taken up saying that girls going to school. Many state governments have this list that I read out of the Ladli Yojanas are really to give incentives for girls to go to school. So almost every state is offering incentives. So as far as the girls being born, it has been extremely effective. संतोष एलावत जी, बस प्रश्न महत्वपूर्ण है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मंत्री महोदय ने 2 बार मेरे जिले का नाम लिया, इसके लिए भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे जिले ने और राजस्थान ने, मैं कहूँगी, इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जहाँ 1000 बालकों के एवज में 730 बालिकाएं थी, वहाँ झुंझुनू में आज के दिन 1000 बालकों की एवज में 930 बालिकाएं हो गई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जो राजस्थान में चल रही है, मैम, बच्ची पैदा होती है उस समय 2500 रुपये उसके अकाउंट में होते हैं। तो ऐसी योजना क्या केंद्र सरकार भी शुरू करने जा रही है ताकि देश भर में बेटियों को बचाने का जो प्रधानमंत्री जी का स्टेट ने बहुत सारी योजनाएं कही, इससे भी ज्यादा। मेरा मंत्री जी से एक अनुरोध है। कहाँ? I haven't understood the question. No, राजस्थान के राजश्री योजना। नहीं, राजस्थान की स्कीम जो झुंझुनू में है वो बहुत ही इफेक्टिव स्कीम है और हम देख रहे हैं कि उसको अगर हम डुप्लीकेट कर सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में। सिराजुद्दीन अजमल, शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज नाउ, बहुत समय हो गया। Thank you very much, madam, for giving me this opportunity. In central and eastern India alone, some 22 million women reside in relief camps in disturbed area, and also 3 lakhs people since 1992 and 93 from ethnic violence. 3 lakh people are residing in camps there. 50% of them are children and women. Madam, there is no health facility, no education facility, even toilet facilities are not there for these women and children. Now my question is whether the ministry concerned has any role regarding these women and children living in these sheltering camps, and if steps are being taken, what, and if not, why? Thank you. I don't think this pertains at all to the Beti Bachao program, but I'm glad you raised the issue. I don't have a direct role on this, but if a complaint comes in, and I'm sure I'd be happy to receive a complaint from you on specific areas and where we could intervene, I'd be happy to intervene. Thank you. Supriya Sule, bilkul short question, bahut samay ho gaya. Just a quick question that Maharashtra is doing exceptionally well in this program, and statewide it's implemented everywhere. But we do have cross-border rackets of illegal abortions. So in your reply, you said you've done a nationwide awareness and advocacy program. But what more can we all do to make sure these interstate illegal abortions don't happen? Thank you. Quite frankly, I'm at a loss to give you an exact answer. Where the state is doing extremely well, as in Maharashtra, as in Haryana, people go outside the state and they then have their sex selection done, and then they do the abortion there. Better policing methods. If somebody can identify where they go to, we have informed the police several times that this has become a center or a hub for illegal sex selection, PCP and DT machines, and then they've taken action. Yes. We actually are taking a lot of action every day. So if you can identify a place where they go out, then we can take action on that. We have a lot of, we reward, another thing we do have is between the health ministry and us, in this program, Beti Bachao, we pay whistleblowers, we pay informers, we have strengthened the PCP and DT cells, and they can now go cross-border to check whether some problem is happening. So there is action being taken. Thank you. Question number 183, Sri Nana Patole ji. Question number 183. Yes, Minister. Madam, answer is laid on the table of the House. Supplementary.
अध्यक्ष महोदय, अंगदान ये हमारे मानव जीवन में सबसे मूल्यवान दान है और आज हम देखते हैं कि किडनी की चोरियां और उससे बड़े पैमाने में लोगों को मारा जाता है और उनका किडनी जैसी चीज़ें निकाली जाती है। आज देश में हम बहुत से लोग देखते हैं कि खुद प्रोत्साहित होके अंगदान करने को तैयार रहते हैं, वो फॉर्म भी भर के देते हैं, लेकिन आखिरी के समय तक उनके अंगदान की व्यवस्था की जाती नहीं और उसी आधार पर कई लोगों की जाने जाती है। मेरा स्पष्ट प्रश्न अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि जैसे कनाडा जैसे देश में जो अंगदान दाता रहते हैं, ऐसे लोगों को नागरिक सम्मान से नवाजा जाता है। क्या सरकार भारत देश में भी ऐसी व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है? ये मेरा प्रश्न है। Can you just repeat the last bit of the question? Can you just repeat the last bit of the question? I'm sorry. अंत में आपने क्या पूछा? फॉरेन में उनको पुरस्कृत। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ऐसा है, कनाडा जैसे देश में अंगदान करने वाले जो लोग रहते हैं उनको नागरिक सम्मान से गौरवा जाता है। क्या अपने देश में प्रोत्साहन करने के लिए ऐसी योजना लाने की भारत सरकार की कोई योजना है क्या? मैडम, ये योजना ऑलरेडी है। हम जब नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं 27 नवंबर को, तो ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स, ऐसे तमाम डॉक्टर्स, ऐसे तमाम फैमिलीज़ जिनके डोनेशंस हुए हैं, कैडेवर डोनेशंस हुए हैं, उनको और जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम अवार्ड करते हैं। ये पद्धति है हमारे यहाँ। दिस इज़ वी डूइंग इट। जी, थैंक यू। मैं इसमें एक कहना चाहूँगी थोड़ा मेरी तरफ से कि इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी खूब हिस्सा ले सकती है। मेरे अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम इसमें हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान की केसेस हुई है। सेकंड सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय, मला सपोर्ट करा माध्यम, हे मला डिस्टर्ब करतात आहेत, बाजूचे लोक डिस्टर्ब करतात आहेत। हाँ, बोला बोला। अध्यक्ष महोदय, तुम्ही इतके कमजोर नाही आहे की तुम्हाला अध्यक्ष महोदय, मेरा जो ख वाला जो प्रश्न था उसमें मैंने कहा कि राष्ट्रीय अंग और उत्तेजक प्रतिरोध संगठन द्वारा विचार टिप्पणियां मांगी गई क्या, तो उसमें तसंदुब बोरा क्या है, उसमें मेरे को कोई जवाब नहीं आया। मैडम, जो वेबसाइट हमने देखी, जो सरकार की वेबसाइट है, उस वेबसाइट में भी ऐसे कोई स्पष्ट नहीं है कि अंगदान करने वालों के लिए सरकार की तरफ से उनको क्या क्या मार्गदर्शन किया जाता है और क्या क्या सपोर्ट किया जाता है। जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग इससे प्रोत्साहित है, करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन आखिरी समय में उनके जो आंखें हो, किडनी हो, नहीं निकाली जाती है। उसके लिए सरकार की क्या योजना है और राज्य सरकार को क्या दिशा देंगे? मैडम, ये जो इन्होंने प्रश्न किया है, जहाँ तक ख पार्ट में प्रश्न किया है, इन्होंने कहा है कि डोनेशन की दृष्टि से जो चेंजेस लाए गए उसमें आपने कंसल्टेशन की गई कि नहीं की गई, लेकिन प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। ये कह रहे हैं कि आप अंगदान को बढ़ाने के लिए आईईसी के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने आईईसी के माध्यम से, नोटों के माध्यम से लोगों को अंगदान करने के लिए पहले तो इसके क्राइटेरिया को बहुत हद तक चेंज किया है। उसमें हमने अमेंडमेंट्स लाई हैं और उस अमेंडमेंट्स के माध्यम से हम इसको वाइडर इसका परव्यू बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीयू में हमने कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं ताकि कोई एक्सीडेंटल, इस देश में लगभग 1.5 लाख डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, और वो आईसीयूज में जाते हैं। तो वहाँ पर हमने कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं ताकि वो कोऑर्डिनेटर्स उनके साथ कंसल्टेशन करें, काउंसलिंग करें और उनको बताएं इसके बारे में। जहाँ तक उनको प्रोत्साहित करने का सवाल है, वो हम हर लेवल पे कर रहे हैं। हम ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से भी कर रहे हैं, एनजीओज के माध्यम से भी कर रहे हैं, नोटों के माध्यम से भी कर रहे हैं, एंड वी आर इन वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद ऑल द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग। Yes. Dr. Shashi Tharoor. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Yes. This is an extremely important issue because unfortunately in our country, the national
organ donation effort has not been successful. Our organ donation rate is about 1 per million, which is actually one of the lowest in the world. I was very touched, Madam, that you yourself mentioned the efforts in your constituency, and I'm wondering whether you as Speaker might want to encourage all us MPs to set the example by pledging our organs on a voluntary basis from this Parliament. I have done so myself, and I urge others to do so. Many of us have done so, and I think it would be very good if it became an appeal from you. But my question to the Minister is, given the fact that we are lagging so far behind international norms, is there not a case for a massive national awareness campaign? The Prime Minister has demonstrated the awareness that is possible through his Mann Ki Baat and so on. If we can, at the highest levels of the government, encourage the public to actually contribute their organs and do so in a spirit of selfless, they don't lose anything, it's only after they are gone that the others will benefit. If it can be done at a very high level, it seems to me that the nation might wake up and be sensitized to this. So perhaps the Honourable Minister might wish to convey to the Prime Minister, and perhaps the Honourable Speaker might wish to inspire MPs to follow this example. Madam, I think a bit of the question has been addressed to you. As the Honourable Member himself has admitted that Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he spoke to the nation about how important and valuable organ donation is in the Mann Ki Baat program. As you're saying that there is a need to convert it as a national drive, Madam, because in India, the rate of organ donation is, you said 1 per million, it's not even that, it's 0.58 per million, that means less than a million. So that is a serious case. And ma'am, we have more of live donations. We want to increase the number of cadaver donations, and that is why a series of activities we have done so that we are able to raise the levels of awareness. And I want to specifically quote here that after the Honourable Prime Minister spoke about this particular thing, the number of visitors on our website has increased. The number of organ donation pledges have increased. Madam, NOTO has come into existence in 2014. We have just set it up in Safdarjung Hospital. And we are trying to set up 5 regional offices as well in 5 different states of Tamil Nadu, Maharashtra, Assam, Chandigarh and West Bengal. And we're also trying to set up the SOTOs, the state units. Since it is in the nascent stage, we will need time to strengthen it. But I want to assure the Honourable Member that we are leaving no stone unturned to make sure that the levels of awareness rises. And for that, we have undertaken several activities, and we have made several amendments in 2011 in the Act itself, which the Honourable HFM mentioned about. I don't want to repeat it. So there's a lot that we are doing. And of course, I would appeal to the MPs here as well, that you speak about the cause in your respective constituencies so that the levels of awareness about organ donation increases. Shri Dinesh Trivedi ji. Madam, we all know that India is a very strong country, and whatever we decide can be implemented. And we have seen this during the pulse polio. Dr. Harshvardhan is sitting here. He was one of the pioneers. At the outset, the Minister in the statement has mentioned that this is a state subject, which I understand. Dr. Shashi Tharoor mentioned that India has only 1 per million, US has 26, Spain has 36, France has 26 per million donors. Madam, we know that this is a question of supply and demand. While demand is about 2 lakhs, supply is about 6,000. Madam, I want to ask that what is the progress on the National Organ Registry? And second, I also would like to compliment the Ministry for making the research on stem cells, because stem cells is the future. And I'm aware that the live embryos research was stopped for some reason. You have restarted. I must compliment you. Future is stem cell. So what is the government and the ministry thinking about that as well? Thank you. Madam, specifically talking about the progress in the increase in the number of donors, we've increased from 2.5 lakhs to 10 lakhs. Regarding the stem cell, I don't have an answer right now, but if you write to me, I'll definitely answer you. Thank you. Question number 184. Sri Kesinani Nani. He is not there. Minister? सर एक उत्तर सदन के बोतल पर रखा गया है. Yes.
प्रहलाद पटेल जी। मंत्री जी ने जो जवाब में लिखा है उसमें स्वीकार किया है कि दो मुख्य जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं उसमें आयुष का उल्लेख नहीं है। साथ में ये भी कहा है कि जो भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण इडाई है उसने 15 साधारण बीमा कंपनियों को उनकी उत्पादों की सूची में डाला है। नीचे साथ में ये भी कहा है कि उनके मूल्य का निर्धारण कर दिया, लेकिन किसी भी उपभोक्ता को जिसको आयुष का इलाज कराना है अगर उसका सूची में नाम नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। एडाई को क्या भारत सरकार, क्योंकि अध्यक्ष जी मुझे आपका संरक्षण चाहिए कि आयुष के मामले में अक्सर ये होता है कि नियमों में उलझा दिया जाता है। यदि ये सुविधाएं उसमें नहीं होंगी, अगर आपने मूल्य निर्धारित कर दिया है, अगर सूची में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से उस उपभोक्ता को जो उस औषधि का लाभ लेना चाहता है उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि सूची मूल्य तय करने से काम नहीं चलेगा। क्या एडाई को सरकार निर्देश दे सकती है या जल्दी करा सकती है ताकि उस सूची में उसका नाम हो जाए शामिल? सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य महोदय को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार आयुष के प्रति बहुत सजग है और ये मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 2003 में आदरणीय अटल जी की सरकार में आयुष का विभाग बना था और 2014 में वर्तमान सरकार ने आते ही एक मंत्रालय का गठन किया। जो बात आपने बताई है वो हमारे समझ में आई है और मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें कहीं भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे इसकी अनदेखी की जाएगी। जो भी आप सुझाव दे रहे हैं उसको क्रियान्वित किया जाएगा और मैं आप जो दो विभाग बता रहे हैं वो दोनों श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। पर इस संदर्भ में आयुष के माध्यम से आयुष की जो विविधताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। इसमें जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। अजय मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व से प्रचलित दोनों बीमा योजनाएं RSBY और SCHIS के अंतर्गत निर्धारित स्वास्थ्य पैकेज में आयुष चिकित्सा शामिल नहीं है, लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 साधारण बीमा कंपनियां आयुष उपचार की एक या अधिक प्रणालियों को कवर करते हुए अपने उत्पाद प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर में यह भी बताया गया है कि साधारण बीमा कंपनियां व IRDAI के हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन 2016 में बीमा कवरेज प्रदान कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये जानकारी चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय तकनीकी सलाहकार परिषद ने कुछ नई औषधियों के स्थानीय चिकित्सीय परीक्षण में छूट दी है, जिसमें कुछ पेटेंट दवाएं भी शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, चूंकि अब आयुष चिकित्सा प्रणाली का उपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, स्वाभाविक रूप से दवाओं की खपत भी बढ़ी है, क्या लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा व दवाओं की गुणवत्ता व दक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयुष अस्पतालों व दवाओं को कवर करने के लिए विशेष बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई जाएगी? सुझाव आपके लिए आपने दिया है, हम उसको ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से हम कदम उठाने का काम करेंगे। पर इतना मैं कह सकता हूँ, ये संबंधित सीधे हमारे मंत्रालय से नहीं है और ये आयुष मंत्रालय, जैसा मैंने बताया, एक अलग मंत्रालय हो गया है, तो इसकी जानकारी वहाँ से मिलेगी, मैं उनको कह दूंगा। पर मैं इतना व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि इस संदर्भ में कहीं भी हमारी सरकार कोई कमी नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 185, श्री आनंदराव अडसुल जी, नॉट देयर। श्री श्रीरंगप्पा वर्णे, नंबर 185। यस मिनिस्टर, यस पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो रक्षा विभाग के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए उत्पादन का काम करती है, कई सारी कंपनियों के वेंडरों के माध्यम से 60% के ऊपर विभिन्न उत्पादन करके इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लाया जाता है, जबकि वेंडरों के द्वारा भेजे गए रक्षा विभाग की सामग्री के कई सारी तकनीकी कमियां होती है। देश भर के इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 90,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों में पूरी उत्पादन
करने की क्षमता है, फिर भी भारत सरकार जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल के डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट्स रहे, उसके बारे में सरकार द्वारा कोई जवाबदेही ठीक तरह से रही नहीं, पहली बात। और जो कैग का जो रिपोर्ट आया अध्यक्ष जी, उसमें कैग ने ये कहा है कि नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट took place in the critical deficiency in availability of ammunition and quality of ammunition supplied by the OFB। कैग ने ये भी कहा है कि बहुत सारे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या सरकार ने ये कैग के रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और जो अधिकारी उसमें जिम्मेदार है उसके बारे में सरकार एक्शन ले रही है? Madam, as per the parliamentary procedure, any report of the Comptroller and Auditor General which is placed before the House goes for consideration to the Public Accounts Committee, and after the recommendation of the Public Accounts Committee, the government takes appropriate action. If any action is to be taken in the matter, the government certainly will take action. But since the honourable member has asked this question, 2013 with regard to the year 2012 and 13, and thereafter now with regard up to the year of March 2016, with regard to certain ammunition, the CAG had made an observation. They had made it in 2013, they made it in 2016. These relate to the availability as per a particular point of time. Thereafter, significant steps have been taken by the government, including decentralization of power being given to the vice chiefs, more procurement which is required, and I can tell the honourable member and through you to the whole House that as far as the armed forces are concerned, they are fully equipped to face any contingency, and any shortages which have existed are being expeditiously made up in ammunition. Short question. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रक्षा मंत्री जी को। मेक इन इंडिया के तहत युद्ध सामग्री का विनिर्माण भारतीय उद्योगों के द्वारा किए जाने का जो प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, मैं जानना चाहता हूं कि ये खुली निविदा में कौन कौन से उद्योग इसमें आगे आ रहे हैं, उनके नाम क्या हैं। दूसरा भी जो कैंग की जो आशंका थी, जिसका उत्तर भी माननीय मंत्री जी ने दिया है, समाचार पत्रों में छपा था कि कैंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध सामग्री की कमी है। जहां तक मेरी जानकारी वो शायद 2013 के पहले का है, लेकिन जिसका उत्तर अभी मंत्री जी ने दिया है, मैं चाहूंगा कि उसको और स्पष्टीकरण कर दें ताकि ये जो आशंका है वो दूर हो जाए। माननीय सभापति जी, अभी तक एक व्यवस्था रही है कि जो DPSUs हैं, डिफेंस PSUs हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेपोज हैं और अन्य फैक्ट्रीज हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है, अन्य फैक्ट्रीज, वहां अधिकतर जो देश की आवश्यकता थी उसके डिफेंस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता था, एम्यूनिशन का मैन्युफैक्चरिंग होता था। वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उनका योगदान भी है। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि बहुत अधिक हमें इक्विपमेंट ऐतिहासिक दृष्टि से विदेशों से मंगवाना पड़ता है, और अभी तक जहां तक हमारी स्थानीय क्षमता है DPSUs की, उनमें जो इंडिजिनस कंटेंट है, जो उसमें भारतीय योगदान है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आज 50% से लेकर 85-90% जो तरह तरह का इक्विपमेंट बनता है, उसमें इंडिजिनस कंटेंट उसका बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन विश्व के भूगोल में इस प्रकार की है कि हमें उससे भी आवश्यकता और अधिक है, तो सरकार ने इसमें जो नीति बनाई है, जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी कहते हैं, उसमें कई प्लेटफॉर्म्स हमने ओपन किए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये प्राइवेट सेक्टर भारतीय कंपनीज होंगी। ये जॉइंट वेंचर, चाहे कुछ इक्विटी का, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, किसी भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कर सकती हैं, और उसके संबंध में जो RFP प्रपोजल्स अभी आएंगे वो सार्वजनिक होंगे। कई भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने आरंभ की है, जॉइंट वेंचर्स एंटर किए हैं, उनका नाम लेने की मैं आवश्यकता नहीं सुनता, लेकिन हर प्लेटफॉर्म में एक भारतीय कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा। और जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स, मेन बैटल टैंक्स, ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये इस प्रकार के एम्यूनिशन
और आवश्यकताओं के मुताबिक इनको खोला जा रहा है। थैंक यू। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन समय हो गया, बिल्कुल शॉर्ट हो तो पूछो। There is no time, madam, left for this. I know that. Please, I don't want an answer to be given by the minister. Even if he sends it writing also, it is okay. I just want to have a simple question: how much ammunition is required by the armed forces? How much are we manufacturing in our country, and how much are we importing? That can be sent to me even in writing. It is in larger public interest. These are some details which are never made public. And therefore, what is the availability, what is the shortage? These are things which are better. If the member wants to know, I can tell him otherwise. But it's better in larger public interest not to make a disclosure of this. Thank you. Question hour is over. Papers to be laid on the table. To Sri Jagat Prakash Nadda ji. Madam, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 of the today's revised list of business. Item number 3 से संतोष कुमार गंगवार जी। सर, आज के पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित विवरण को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 4 श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदया, मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। 5 अर्जुन राम मेघवाल जी। अर्जुन राम मंत्री जी, thank you, Madam Speaker. With your permission, I rise to lay papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 5 in the today's revised list of business. Thank you. 6 Anupriya Patel. Madam, with your permission, to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Dr. Subhash Bamre. Madam, with your kind permission, I rise to lay a copy of each of the papers on the table of the House listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Item number 8, Secretary General. Madam, I have to report a message from Rajya Sabha regarding the National Institutes of Technology, Science, Education and Research Amendment Bill 2017. Yes. Item number 9, Anand Kumar ji, Business Advisory Committee. महोदया, आपकी अनुमति से मैं यहाँ सूचित करता हूँ कि सोमवार 31 जुलाई 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा। सॉरी 9 है ना? मैडम, रिपोर्ट ऑफ 9 नंबर 9। हाँ मैडम, I rise to present the 45th report of the Business Advisory Committee. हाँ, that is the thing. Item number 10, Dr. Satyapal Singh, Office of Profits. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 16वीं लोकसभा का 21वां और 22वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Item number 11, Anand Kumar ji, अब वो दे दो। With your permission, madam, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 31st of July 2017 will consist of 1. Consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration of passing of the Indian Institute of Management Bill 2017, the National Bank of Agriculture and Rural Development Amendment Bill 2017, the Banking Regulation Amendment Bill 2017 to replace an ordinance, and 4th, the Indian Institute of Petroleum and Energy IAP Bill 2017. 2. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Punjab Municipal Corporation Law extension to Chandigarh Amendment Ordinance 2017 number 2 of 2017 and consideration in passing of the Punjab Municipal Corporation Law extension to Chandigarh Amendment Bill 2017 to replace an ordinance. 3. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Central Goods and Services Tax extension to Jammu and Kashmir Ordinance 2017 number 3 of the 2017 and consideration and passing of the Central Goods and Services Tax extension to Jammu and Kashmir Bill 2017 to replace an ordinance. 4. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Integrated Goods and Services Tax extension to Jammu and Kashmir Ordinance 2017 number 4 of 2017
and consideration and passing of the Integrated Goods and Services Tax extension to Jammu and Kashmir Bill 2017 to replace an ordinance. 5. Consideration and passing of the following bills. A. The State Bank's Repeal and Amendment Bill 2017. B. The Repealing and Amending Bill 2017. C. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Amendment Bill 2017. D. The Central Road Fund Amendment Bill 2017. E. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Amendment Bill 2017. F. The Public Premises Eviction and of Unauthorized Occupants Amendment Bill 2017. 6. Discussion and voting on supplementary demands for grants, including railways for 2017-18 and demands for excess grants for 2014 and 15. 7. Introduction, consideration and passing the appropriation number 3 Bill 2017. 8. Introduction, consideration and passing of the appropriation number 4 Bill 2017. Thank you. Okay. Submission by members. Shri Om Birla ji. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कई जिले फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या को झेल रहे हैं। राजस्थान के कई भागों में फ्लोराइड की मात्रा पेयजल में 24-41 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई है। पिछले वर्ष में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सब्जेक्ट पढ़ो। फ्लोराइड से उठते मेरी सरकार से मांग है कि सतही जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और हम सबको सतही जल देकर फ्लोराइड से मुक्त कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हर साल समर्थन मूल्य तय करती है। मेरी सरकार से मांग है कि समर्थन मूल्य तय करने में व्यावहारिक बनाया जाए और हम ये सुनिश्चित करें कि सभी किसानों की फसलों को हम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की सुनिश्चित व्यवस्था की कार्य योजना बनाने की बात करें। राजीव सातव जी। अध्यक्ष जी, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में महाराष्ट्र में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा भरते वक्त पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आने वाली समस्याओं के बारे में सदन में चर्चा की मांग करता हूं। दूसरा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार सेना में गोला बारूद की कमी के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सदन में मैं चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए। नंबर 1, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लोहे अयस्क पर आधारित स्टील कारखाना लगाए जाने के संबंध में। नंबर 2, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में कृषि आधारित उद्योग के लिए मानव श्रम की पर्याप्त उपलब्धता है और रोजगार हेतु कृषि पर आधारित उद्योग को लगाए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। भैरव प्रसाद मिश्रा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न अति लोक महत्व के विषयों को शामिल कराने की कृपा करें। पहला, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बांदा एवं चित्रकूट में सिंचाई प्रतिशत अति न्यून है। गरीब मध्यम किसान सिंचाई व्यवस्था होने से खेती में केवल एक फसल ही ले पाता है, वो भी यदि बरसात हुई तो, वरना उसके खेत परती पड़े रहते हैं। अस्तु आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट में कम से कम 100 राजकीय ट्यूबवेल प्रत्येक जनपद में प्रतिवर्ष लगाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें। दूसरा, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जानवरों की अड्डा प्रथा एक गंभीर समस्या है। हजारों जानवर खुले घूम रहे हैं जो खेती का नुकसान कर रहे हैं, जिससे किसान बहुत ही हताश एवं परेशान है। अस्तु हर ब्लॉक स्तर पर एक बड़ी गौशाला एवं हर न्याय पंचायत स्तर पर छोटी गौशाला बनाने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार को निर्देश देने की कृपा करें। निर्देश नहीं दिए जाते, चर्चा के लिए विषय लिया जाए, ऐसा बोलना होता है। श्री सुशील कुमार सिंह। आपके माध्यम से सरकार से अगले महीना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से और आपकी अनुमति से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए। अत्यंत पिछड़े
और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए, वहां की जनता की आवागमन की सुविधा के लिए पटना, अरवल, औरंगाबाद जिले की पिछड़ी और एक घनी आबादी के क्षेत्र के विकास के लिए रेल सुविधा हेतु बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन जो वर्षों से लंबित है, जिसका सर्वे कई वर्षों पूर्व हुआ, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में इस विषय को शामिल किया जाए कि विशेष धनराशि आवंटित किया जाए और इस पर चर्चा हो। महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के कई जिले वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित हैं, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र का दोनों जिला औरंगाबाद और गया भी है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि नक्सली घटनाओं को रोकने और नक्सली क्षेत्रों में विकास करके वहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सम्यक विकास और वहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए, ताकि नक्सली घटनाएं, नक्सली का प्रभाव कम हो, इसके लिए एक विशेष योजना चलाई जाती थी केंद्र सरकार के माध्यम से, जिसका नाम इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान था, जिसे बदलकर बाद में दिया जाए। जी, इस योजना को पुनः चालू कराने के लिए सदन में चर्चा हो, अगले सप्ताह की कार्यसूची में इसे शामिल किया जाए। धन्यवाद। गोपाल शेट्टी जी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही कम समय में अपने विषय को रखने वाला हूं। अध्यक्ष जी, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित 2 विषयों को सम्मिलित किया जाए। मुंबई नॉर्थ, उत्तर मुंबई कांदिवली में अध्यक्ष जी 35 एकड़ भूमि खाली पड़ी है, लेकिन ये भूमि राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास खेल कूद के लिए खर्चे करने के लिए पैसे है, लेकिन राज्य सरकार ये जमीन केंद्र सरकार को नहीं दे रही है। इसलिए ये 3 साल से मैं प्रयास करने के बाद में भी मुझे अभी तक सफलता मिली नहीं है। अध्यक्ष जी, इसका वॉल्यूम और इसका ग्रेविटी कितना है मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहूंगा। हमारे उत्तर मुंबई में रोहित शर्मा जैसा इंटरनेशनल प्लेयर क्रिकेट में हुआ। हमारे उत्तर मुंबई रॉयल पॉल आयताड़ी जैसा एक प्लेयर IPL में किया। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने जिनका कल सम्मान किया, पूनम राउत, ये हमारी बोरीवली के है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियां मैदान उपलब्ध होने की वजह से आगे आए हैं। उत्तर मुंबई का ये 35 एकड़ अगर जमीन विकसित होता है तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बच्चों को एक बहुत बड़ा लाभ होगा, इसलिए इस विषय पर चर्चा हो। दूसरा विषय अध्यक्ष जी GST के बारे में है। मेरा 0 आवर लगा, इसलिए स्पेसिफिक विषय के बारे में उसमें बताऊंगा, लेकिन टोटलिटी में GST का देश के लोगों ने स्वागत किया है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और उनके पूरे टीम का अभिनंदन करता हूं। अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी इसमें थोड़ा करेक्शन और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। जैसे मन की बात के माध्यम से या तो फिर अड़िया जी कभी कभी आकर टीवी के माध्यम से क्लैरिफिकेशन करते हैं। सांसदों को हेल्प डेस्क का भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करके दी गई है, लेकिन व्यापारियों को उसकी सुविधा मिलती नहीं है। मेरी मांग ये है कि जो भी व्यापारी अपना सुझाव देंगे, उसका अगर अड़िया जी हफ्ते में 1-2 बार क्लेरिफिकेशन देते तो बहुत बड़ा लाभ देश को होगा। इसके बारे में चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भानु प्रताप सिंह वर्मा, चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अगले सप्ताह की सूची में निम्न विषय लेने का कष्ट करें। पहला, जनपद जालौन के कालपी नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जो कानपुर से झांसी 4 लाइन है, उसका अनियमित 4 लाइन बनाए जाने के संबंध में। दूसरा, राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई उत्तर प्रदेश में न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना कराए जाने के संबंध में। शाबाश, ऐसे ही बोलना होता है। श्री के अशोक कुमार। Madam, the following item be taken for discussion during the next week business. Fishermen in Tamil Nadu reside in precarious terrain by the sea coast, have distinct custom and lifestyle as EK of a meager livelihood from the traditional occupation. Most of them are very poor. Therefore, inclusion of the fishermen community is in the list of scheduled tribe. Thank you, Madam. श्री रंगप्पा बारनी। माननीय अध्यक्ष जी, अगले हफ्ते के कार्यसूची में निम्नलिखित 2 विषय चर्चा के लिए शामिल किए जाए। एक, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लोनावाड़ा और चिंचवाड़ा स्टेशन आते, इन स्टेशनों में प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्रा करते। मॉडर्नाइजेशन किया जाए, बस इतना ही बोलो। हाँ। लेकिन बाकी नहीं, उसको मॉडर्नाइज किया जाए। दैट इज दोनों स्टेशनों में सुधार करने की आवश्यकता है, किए जाए। दूसरा है, लोनावाड़ा स्टेशन से लोकल चलती है
पूना तक, उस लोकल में ये डिब्बे पुराने, ये डिब्बे आधुनिक करने की मांग करता हूँ। ये विषय लेने की मैं यहाँ निम्नलिखित चर्चा के लिए शामिल किए जाए। Yes. Now 0 hour. I have not allowed any adjournment motions, but I will take now 0 hour. Shri Dhananjay Mahadik ji. थैंक यू मैडम स्पीकर। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, किसी भी शुभ काम की शुरुआत हम भगवान गणेश जी की पूजा से करते हैं। हमारे देश में गणेशोत्सव या गणेश फेस्टिवल बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। करोड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि भगवान की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति पे भी 28% GST लागू किया गया है। अध्यक्ष जी, हमें यह समझना होगा कि हर साल रॉ मटेरियल में 10% की वृद्धि होती रहती है और उस पर GST लगने से ये मूर्तियाँ और भी महंगी हो जाएंगी। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक 15 फीट की गणेश मूर्ति जो 80-90 हज़ार की मिलती थी, GST लगने की वजह से वो 1,05,000 या 10,000 की होने वाली है। सब तो वो देता है तो उसके लिए भी पैसे खर्च करो, क्या हो? ये हमारी आस्था का विषय है मैडम जी। अध्यक्ष जी, हमारा ये भावना और आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है। दुनिया में अध्यक्ष जी, हमारे महाराष्ट्र में ये उत्सव बहुत बड़ा होता है। हमारे महाराष्ट्र के सभी तरुण मंडलों ने, गणेश उत्सव मंडलों ने, विशेषतः मुंबई का लालबाग का राजा है, पुणे का दगड़ूशेठ हलवाई है और कोल्हापुर के सभी हमारे गणेशोत्सव मंडलों ने इसका विरोध किया है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि गणेशोत्सव 1 महीने में आ रहा है, मई और जून महीने में ही कई लोगों ने उसका बुकिंग किया हुआ है, तो उनको ये ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि भगवान की मूर्तियाँ हमारी आस्था और भावनाओं का विषय है, इसमें GST नहीं लगना चाहिए। हमारे गणेश जी की कोई भी मूर्ति पे भगवान की GST नहीं लगना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री अंशुल वर्मा। अंशुल वर्मा जी। अध्यक्षा महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। अध्यक्षा महोदय, IPC के सेक्शन 498A से हो रहे उत्पीड़न के ये आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं कि सन 1998 से 2015 तक लगभग 27 लाख लोग अकेले इस सेक्शन से गिरफ्तार किए गए हैं। अध्यक्षा महोदय, ये किसी भी अपराध से अधिक है। इसके आगे मान्यवर 6.5 लाख औरतें जो कि शादीशुदा व्यक्ति के रिश्ते के माध्यम से विवाहिता के साथ जुड़ी हुई होती हैं, गिरफ्तार की गई जाती हैं। वास्तविकता में ये महिलाएं कभी भी दाम्पत्य के साथ नहीं रही होती हैं। अध्यक्षा महोदय, आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि इस देश में 7,700 नाबालिग बच्चे बिना किसी जांच के, शिकायत के आधार पर जेल में डाले गए हैं। अध्यक्षा महोदय, इस प्रावधान को कानूनी आतंकवाद कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इससे बहुत से लोग इसकी प्रताड़ना से दुखी होकर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर शादी के शहीद करार कर दिए जाते हैं। अध्यक्षा महोदय, इस बढ़ती प्रताड़ना के चलते हुए मर्दों के हकों के लिए जागरूक कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं। जैसा कि आपको और सदन को बताना है कि पहली बार देश में सन 2016 में UGC ने एक रेगुलेशन पास की, जिसके तहत मेल स्टूडेंट्स भी सेक्सुअल हरासमेंट्स अगेंस्ट मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर के खिलाफ शिकायत दाखिल कर सकेंगे। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि इसके प्रति सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी चिंतित है। जैसा कि विदित हो, सन 2005 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को लीगल टेररिज्म के नाम से नवाजा था। अध्यक्षा महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रावधान की कमियों को दुरुस्त कर आदमियों को न्याय दिलाया जा सके। और एक चीज कहना चाहूंगा मान्यवर कि इस पुरुषों को कि इस देश में मेन सेल, कृपा कर मेन सेल खुलवाने का प्रावधान किया जाए और इसमें 498A में संशोधन किया जाए, जिससे महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे और पूर्व में रहे मुखिया को दुखिया की स्थिति में जाने से बचाया जा सके। और एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, प्रो वुमेन मस्ट नॉट बी एंटी मैन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री नारायण भाई कछाड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के एक ऐसे विषय की और आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब ये हादसा हुआ तो पूरे देश को
दहला दिया था और वो हादसा था भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का। दिनांक 18 फरवरी 2007 को यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कुछ 68 लोग मारे गए थे और तथा अन्य घायल हुए थे। ये घटना लगभग 10 साल पुरानी है। घटना के बाद जब जांच होने के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए थे और उन्होंने पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल किया था महोदया। ये हादसा 10 साल पुराना है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उसका खुलासा अदालत में हुआ है। महोदया, आश्चर्य की बात तो ये है कि अब तक इस मामले में आखिरी फैसला क्यों नहीं आया, जबकि इसमें 2 पाकिस्तानी पकड़े गए थे, जिसमें से एक ने अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन उस समय की सरकार ने उसे सिर्फ 14 दिनों में जांच करके बेगुनाह करार दिया गया था और अदालत में पाकिस्तानी संगीत को बरी करने के लिए अपील की और सरकार के दबाव में गलत रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिससे संगीतों को छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 पाकिस्तानी संगीतों को छोड़ने के लिए इतनी क्या जल्दी थी और इतने बड़े हादसे के गुनहगारों को केवल 14 दिनों की जांच करके क्यों छोड़ा गया। जब संगीतों को डॉक्यूमेंट के सामने आए तो तत्कालीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी द्वारा 9 से 2017 को बताया गया कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी अजमत अली को गिरफ्तार किया गया था, जो बिना पासपोर्ट के भारत आया था और दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में घुमा था। जब उसमें तहकीकात की गई तो उसमें अपना अपराध कबूला था, परंतु इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत में दिए गए स्टेटमेंट में अनुसार इससे साफ जाहिर होता है कि दबाव में आने पर संगीत को इस केस के निकलवाया गया था। महोदया, पुलिस अधिकारी कभी भी अपने मन से गलत काम नहीं करते। उन पर दबाव पड़ता है तभी अनुचित कार्य करते। अजमत अली के डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये पाकिस्तानी नागरिक था, उसके पास ना तो कोई वीजा था और ना ही कोई अन्य लीगल डॉक्यूमेंट। उसने पूछताछ में यही कबूल किया था कि वो पाकिस्तानी नागरिक है तथा उसके लंबा चौड़ा पढ़ना एक मिनट तथा उसका पिता का नाम मोहम्मद शरीफ था ये जिला लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला था। अजमत अली को छोड़ देने का तत्कालीन सरकार की एक बड़ी साजिश थी, जबकि इस केस की शुरुआत जांच के यूपीए सरकार ने यह कहा था कि इस ब्लास्ट के लश्कर तोयबा का हाथ है, लेकिन कुछ ही दिन बाद हिंदू आतंकवाद का नाम सामने आ गया और इस समय यूपीए सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद की बात सामने रखकर पूरे देश को चौंका दिया था। बाद में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बार बार बीजेपी को ब्रेकफास्ट पे लाने के लिए इस जुमले को इस्तेमाल किया और स्वामी अच्युतानंद को इस मामले में सामने लाकर केस को पूरी तरह से पलट दिया, जो कि एक बहुत बड़ी तत्कालीन सरकार की साजिश थी। ये देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है और हिंदू धर्म का बदनाम करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया गया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इस केस को फिर से पूर्ण जांच होनी चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले और दोषियों को दंड मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल जी, आपका भी यही सेम है। राजेंद्र अग्रवाल, यही विषय है, इसलिए तुरंत दे दो। जी धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। थोड़े में बोलो, आपको नंबर आया जरूर है तो। हालांकि बहुत सारा विषय मेरे सम्माननीय मित्र ने रखा है, मैं एक दो चीज और जोड़ना चाहता हूं। इसका जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे गुरदीप सिंह, उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा है कि ये जो व्यक्ति पकड़ा गया था अजमत अली, जो पहाड़गंज का अपना पता बताता था और इसने अपना नाम रख रखा था राजेश खन्ना। जी जी जी, रिकॉर्ड के अंदर है। तो इसको बाकायदा ये बात सोची गई थी इसके और ग्रिलिंग की जाए, पूछताछ की जाए। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऊपर के दबाव के कारण से इसको छोड़ा गया। ये बात सफदर नागौरी, जो सिम्मी का पूर्व अध्यक्ष है, उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसने बात स्वीकार की कि सिम्मी के आतंकवादी और पाकिस्तान की योजना के साथ ये विस्फोट का कांड हुआ था जिसमें 68 लोग मारे गए थे। उसके छोटे भाई ने भी इस बात की पुष्टि की और ये कहा, बड़ा शहर का नाम सुनकर के आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा मैडम, लेकिन वो इंदौर का भी कमरुद्दीन ये नहीं अब्दुल रज्जाक है वो, जो इसके अंदर शामिल था। यानी सारी बातें कही गई हैं और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को इसके अंदर शामिल बताया गया, सारी बातें कही गई। शिंदे साहब से पूछा मीडिया के लोगों ने कि कौन था, बोले मैं उन दोनों गृह मंत्री नहीं था। जो गृह मंत्री इन दोनों थे सारा देश उनको जानता है।
उन्होंने जिस प्रकार की बातें की हैं, गृह मंत्रालय के दफ्तर का जो दुरुपयोग किया गया है हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए, सबको साथ लेकर के चलने वाले सर्वधर्म समभावी हिंदुत्व का अपमान करने के लिए ये बहुत चिंताजनक है। मेरी एक चिंता ये भी है कि विरोध पक्ष का विरोध करते समय क्या इस सीमा तक कोई दल जा सकता है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले आतंकवादियों का संरक्षक बन जाए। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपके माध्यम से सवाल है, सुनिए, बात सुन लीजिए। मेरा मैडम आपके माध्यम से ये सवाल है कि क्या ये दिग्भ्रमिता है, ये दिशा भ्रम है यूपीए का और कांग्रेस का, या ये षड्यंत्र है? इस बात की जांच की जाए। ये बहुत चिंताजनक है। देश के प्रति दुश्मनी का भाव रखने वालों के साथ खड़े होना ये बहुत चिंता की बात है। ये इसकी पूरी जांच की जाए। गृह मंत्री जी की क्या भूमिका थी? आप देखिए अध्यक्ष जी, एक सेकंड और एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जाने ये क्या बात है, बाटला हाउस का कांड होता है, इसमें एक स्टेटमेंट आता है, नेता चीन से विवाद है, इनके नेता एम्बेसडर से मिलने जाते हैं, इनके सांसद पाकिस्तान में जाकर अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा किसानों के हित वास्ते लाई गई महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या दो माननीय सदस्यों ने मामला उठाया है, उसकी जांच होनी चाहिए। वो तो करना चाहिए, करें, हम मना नाना पाटोले जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा किसानों के हित वास्ते लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। महोदय, इस योजना के लिए चुनी गई बीमा कंपनियों की नियुक्तियां अवधि वर्तमान में 1 वर्ष है। इसे बढ़ाकर कम से कम 5 साल किया जाए, जिससे किसानों को संपर्क करने में जो असुविधाएं हो वो दूर हो जाए। धान की फसल के लिए जोखिम स्तर 70 से बढ़ाकर 90% किया जाए, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। ऋण धारक किसानों को ये योजना सख्ती से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से धान की फसल वास्ते किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला, जिसके कारण किसानों में नाराजगी है। धान की खेती के लिए मौसम के आधार पर फसल बीमा लागू की जाए, ताकि किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। विष्णुदयाल राम, यस, विष्णुदयाल राम, आपका माइक ऑन करो। हाँ, हो गया। मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, पलामू एवं गढ़वा। दोनों जिले के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल चुकी है। गढ़वा जिला के लिए 5 साल पहले ही स्वीकृति मिली, परंतु आज के दिन में भी विद्यालय के लिए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पठन पाठन का कार्य किराए के मकान में चल रहा है, जहां पर बच्चों की संख्या अधिक होने के चलते उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। बरसात के दिनों में उसकी छत चू रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर शीघ्रातिशीघ्र भवन का निर्माण कराया जाए। भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। इसी तरह से पलामू जिला के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हो गई है, लेकिन भवन का निर्माण नहीं हुआ है। जमीन की प्रक्रिया अधिग्रहण की चल रही है, लेकिन जब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हो जाता है तब तक किराए के मकान में पलामू जिला में भी पठन पाठन का कार्य शुरू कराया जाए। यही मेरा अनुरोध है और आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें, ताकि पठन पाठन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू। मैडम, the bond, I am talking about the revival of the Barnstable and Company. This Barn and Company came into existence in 1781 at Howrah. Barn and Company built up 2 important structures, Calcutta like St. Andrew's Church in 1818 and Saeed Minar in 1828. Madam, in 1976, following nationalization, Barn and Company was amalgamated with Indian Standard Wagon Company and renamed as Barn and Standard Company Limited. Madam, Barn and Standard Company is one of the oldest and leading wagon builders in India. But owing to various reasons, Barn Standard Company has become a Sikh industrial company since 1995.
Thereafter, restructuring scheme was revolved. Now, after the financial restructuring scheme, totaling a cost of rupees 245 crores, was approved in the June 2016 by the Ministry of Railways and processed for approval of the cabinet, but the same was not materialized due to non-recommendation of Niti Aayog. Now, madam, what I am praying, requesting through you to the ministry, that under the present circumstances, Barnum and Standard Company Limited, being one of the oldest and leading wagon manufacturers in India, should be revived with central assistance to regain its lost glory, and without any delay, in the of the same by Government of India is this really strongly opposed by us. I will request to consider our prayer. गोपाल शेट्टी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जीएसटी के पूरे देश ने स्वागत किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के अर्थ मंत्री अरुण जेटली जी और उनके पूरे टीम का भी देश ने अभिनंदन किया, हम सब भी करते हैं। जितना ज़्यादा पैसा सरकार के तिजोरी में आएगा और वो सरकार जब जनता के पास जाएगा तो जनता सारी दुआ भी आने वाले दिनों में सरकार को देने वाली, इसके बारे में कोई दुमत नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं तो जब विपक्ष में भी था तो सरकार जब टैक्स बढ़ाती तो उसका मैं समर्थन नहीं करता था, क्योंकि पैसे के बगैर कोई देश चलने वाला नहीं है। लेकिन टैक्स का जब रिफॉर्म होता है तो कुछ करेक्शन की भी कभी कभी आवश्यकता होती है। ये सरकार के ध्यान में नहीं होता, जो अधिकारी जिस प्रकार का फीडिंग करते हैं उसके हिसाब से कामकाज किया जाता है। इन दिनों में जो जीएसटी होटल इंडस्ट्री के ऊपर लगा है, 5% लगा है, उन्होंने भी स्वागत किया है। 12% लगा है, उनका भी स्वागत है। और 5 स्टार होटल को 18% और 28%, उसका भी स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिक्स होटल्स है उनका एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर 2000 फुट का होटल है और 500 फुट उसमें एयर कंडीशन है तो 1500 फुट वाले को भी 18% लगाया जाता है। यानी जो नॉन एसी में जाकर बैठते हैं उनको भी एसी का चार्ज लगाया जाता है। ये मैंने सरकार के ध्यान में लाकर दिया है। डेलीगेशन भी लोग आकर मिलकर गए, सरकार ने इस बात को मान भी ली है। अध्यक्ष जी, आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो पार्सल लेके जाते हैं उनको भी 18% लगाया जाता है। वो तो एसी का भी यूज नहीं करते और नॉन एसी का भी यूज नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जो क्लेरिफिकेशन नोट अगर चला जाए तो देश में बहुत बड़ा एक गलतफहमी जो निर्माण हुई है वो भी खत्म होगा और बड़े पैमाने में कामकाज भी बढ़ेगा, धंधा कारोबार भी बढ़ेगा और सरकार के तिजोरी में पैसा भी ज्यादा आएगा। इसलिए मैं फिर एक बार जीएसटी का स्वागत करता हूं देश के जनता की ओर से। ये सुदीप राज मेरे लोकसभा में बादली एक विधानसभा है और भलसवा एक गांव है मुकरबा चौक के पास। वहां पर गंदगी का पहाड़ बन गया है। जो मलबा उठाया जाता है उसे ट्रकों से डाला जाता है और 24 घंटे ट्रकें वहां पर मलबा डालती रहती हैं। आसपास में जो लोग रह रहे हैं रहने लायक की स्थिति नहीं रह गई है। तमाम तरह की गैसेस निकलती है, बदबू है। एक बार प्रयास किया गया था कि इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए। कलकत्ता बेस्ड कोई कंपनी थी, उसको दिया भी गया था ठेका, लेकिन कंपनी मीट आउट नहीं कर पाई तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको परमिशन दे दिया, जिसके आधार पर वो हाई कोर्ट में चले गए हैं, चूँकि लालच उनको 12 एकड़ ज़मीन की है। परिस्थिति इतनी भयावह वहाँ हो चुकी है, जो पहाड़ जैसे बना हुआ है खत्ता, जिसको सैनिटरी फिल लाइन भी कहते हैं, कि या तो वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दी जाए ताकि गंदगी खत्म हो जाए, या बायो कोटिंग कर दिया जाए उसको। और जहाँ तक सड़कों पर इसका इस्तेमाल करने की बात है उसमें भी संभावनाएं कम हैं, क्योंकि उससे सड़क दब सकती है। तो आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री और गृह मंत्री दोनों से अनुरोध है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आपका आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत तात्कालिक और अवलंबनीय और लोक महत्व के विषय के प्रश्न की उठाने की अनुज्ञा दी है। एक निर्णय से उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्र, जिनका प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के
निर्णयों के बाद राइट टू एजुकेशन के सहायक शिक्षकों के रूप में उनका समायोजन हो चुका था और वो सहायक शिक्षक पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से प्रदेश के वो तमाम ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो उन्हीं शिक्षा मित्रों के द्वारा वो विद्यालय चल रहे थे और प्रदेश के गांव के सुदूर अंचलों में जो शिक्षा से वंचित रह सकते थे उनको शिक्षा देने का काम कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले जो निर्णय आया वो आज फिर सहायक शिक्षकों का समायोजन निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। उससे ऐसी उत्पन्न परिस्थितियां हुई हैं कि आज वो फिर शिक्षा मित्र की श्रेणी में हो गए हैं। 3500 रुपये पे जो 20-20, 25-25 साल से अध्यापक पढ़ा रहे थे, पूरे प्रदेश में पठन पाठन ठप हो गया है क्योंकि उस निर्णय को लेकर के निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इसके बावजूद आंदोलनरत हैं। 7 अध्यापक सुसाइड कर चुके पिछले 3 दिनों में। आज बस्ती हो, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, खीरी, लखीमपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, कौसाम्बी, आज ऐसी परिस्थितियां हैं। माननीय मानव संसाधन मंत्री जी बैठे हैं, मैं तो इनको धन्यवाद दूंगा कि इस फैसले के 2 दिन पहले ही आरटी एक्ट में एक अमेंडमेंट किया कि जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं उनको 31 मार्च 2019 तक का मौका दिया जाए। शायद वो अमेंडमेंट नहीं होता तो ये अध्यापक सड़क पे आ जाते और नौकरी से भी वंचित हो जाते, तो इसलिए आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन जो 23 सेक्शन ए में उनका अमेंडमेंट हुआ है, आज कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलेख में उनके हितों की रक्षा हो सके। अगर वो शिक्षा मित्र के रूप में उनको निश्चित तौर से वो क्वालिफाई करेंगे एग्जाम, लेकिन उनका जो वेतन 40,000 से 3500 हो गया है। मैं केवल अपनी बात खत्म करूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय। आज पूरे प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र आंदोलनरत हैं। आप उत्तर प्रदेश के जितने माननीय सदस्य हैं सबकी चिंता है, ये कोई विषय ऐसा नहीं है। और पूरे जो एक तरफ स्कूल चलो अभियान है, एक तरफ हर जिलों में इस तरीके से बेटियां पढ़ें, लेकिन स्कूल बंद होने के कारण अध्यक्ष महोदय इस विषय का संज्ञान लेकर के इस पर निश्चित तौर से सरकार हस्तक्षेप करे और उन शिक्षा मित्रों के हितों की इस विषय से हम लोग और बोटाद की एयर कनेक्टिविटी के बारे में बोलने का अवसर दिया। मैडम, हमारा भावनगर का एयरपोर्ट 40 साल पुराना है। पूर्व में यहाँ से 3-3 बोइंग उड़ान भरा करती थी, लेकिन फिर इसमें से 2 हो गई, फिर 1 हो गई और एक समय तो मैडम ऐसा आ गया कि हमारी फ्लाइट बिल्कुल खत्म ही हो गई, हमारा एयरपोर्ट का अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं माननीय सिविल एविएशन मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने तत्काल एक हमें एयर इंडिया की फ़्लाइट दे दी। लेकिन दिक्कत ये है मैडम कि ये जो एयर इंडिया की एक फ़्लाइट है मुंबई के लिए, वो भी हफ्ते में 4 दिन ही आती है और वो भी शाम को उड़ान भरती है। हमारे यहाँ मैडम एशिया का सबसे बड़ा अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ब्लैकबक की नेशनल सेंचुरी भी है, पीपावाव पोर्ट भी नज़दीक में है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ भी यहाँ से जाया जाता है, निष्कलंक महादेव और बहुत बड़े पालीताना जैनों का तीर्थधाम भी हमारे यहाँ है। और व्यापारिक तौर से भी हम बम्बई के साथ जुड़े रहते हैं, सोशली भी हम बम्बई के साथ जुड़े रहते हैं। व्यापारियों को हर दिन बम्बई आना जाना रहता है। मैं आपसे आपके माध्यम से माननीय मिनिस्ट्री को आकर्षित ध्यान करना चाहती हूँ कि हमारी भावनगर की बम्बई के लिए एक सुबह की और एक शाम की मुंबई एक फ्लाइट दी जाए सुबह और शाम को, जिससे हमारा भावनगर और बोटाद का डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहेंगी। थैंक यू मैडम। श्री राजीव सातव जी। धन्यवाद। मुझे महाराष्ट्र के किसानों की बात उठाने का मौका आपने दिया। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र का किसान संपूर्ण कर्ज माफी नहीं मिलने से और स्वामीनाथन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने से बड़ा दुखी है। एक तरफ किसान को सरकार कोई मदद नहीं कर रही अध्यक्ष जी, और दूसरी तरफ स्टाफ की कमी दिखाते हुए बैंक किसान की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो किस्त है वो किस्त लेना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर वो कारण ये दिखा रहे हैं कि आप ऑनलाइन भरिए। अब 1 अगस्त तक ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर बैंकों ने बंद कर दिया है। अब ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर भी आपने डाउन कर दिया और ऑनलाइन भरने के लिए कह रहे हो, तो किसान कैसे किस्त भरेगा? एक पहली बात। दूसरा अध्यक्ष जी, 2 दिन पहले मेरे लोकसभा क्षेत्र में हिमायतनगर में जो लाइन में खड़े किसान थे उनको बेरहमी से मारा गया, क्योंकि जिस प्रकार से लाइन थी
3-4 हजार किसान लाइन में थे और उनको मारा गया। 4 किसानों को फ्रैक्चर हुआ अध्यक्ष जी। इसलिए मेरा आपसे, आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन किसानों को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, तो सरकार ने इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस संज्ञान लेते हुए उसके लिए विशेष कक्ष की प्रावधान करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, शॉर्ट में बोलना है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए खड़ा हूँ। आज श्रीमान, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार और उसमें देहरादून दोनों जिले आते हैं, यहाँ के सैकड़ों गांव आज भी पेयजल के लिए छटपटा रहे हैं। दर्जनों गांव में दूषित पेयजल होने से सैकड़ों लोग भयंकर बीमारियों से त्रसित हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी इस बात को उठाया था। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो दूषित पेयजल के कारण लोग वहाँ भयंकर बीमारियों के चपेट में आए हैं और वो निर्धन लोग हैं, वो अपनी जांच कराने के लिए भी जिनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे गंभीर प्रकार की बीमारियों का इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो केंद्र से तत्काल टीमों को भेजा जाए, उस पेयजल को संशोधित किया जाए और जो लोग बीमारियों के चपेट में आए हैं उनको निश्चित रूप में इलाज कराया जाए और जो हिमालयी क्षेत्र के ये जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, इनके संरक्षण और संवर्धन की कार्रवाई की जाए और जो फैक्ट्रियां अध्यक्षा जी, जो फैक्ट्रियां विष को फेंक रही हैं, इनको या कि बंद किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण रेल मंत्रालय के मांगों के ऊपर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। मैंने अनेक बार रेलवे बोर्ड को और माननीय मंत्री जी को अपने संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद नरसिंहपुर में रेलों के स्टॉपेज के लिए मांग की, लेकिन खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि मंत्रालय द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मेरे क्षेत्र में आम आदमियों, गरीबों और स्टूडेंट्स के लिए चलने वाली एक शटल ट्रेन जो जबलपुर से इटारसी चलती थी, उसको सुधार के नाम पर बंद कर दिया गया है। कई महीनों से बंद है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वो गरीबों की ट्रेन, शटल पैसेंजर ट्रेन को तुरंत चालू कराया जाए, जिससे आम आदमी को लाभ हो। दूसरे, बनखेड़ी स्टेशन पर जबलपुर अमरावती एक्सप्रेस 12159, 12160 और सुहागपुर में नई दिल्ली जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस, होशंगाबाद में भगत की कोठी एक्सप्रेस और करेली में इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्टॉपेज हो, जिससे क्षेत्रीय जनता, विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके, लोग आ जा सकें। हिंदुस्तान का हमारा ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां सर्वाधिक लंबा रेलवे ट्रैक है माननीय अध्यक्ष जी। 17 रेलवे स्टेशन आते हैं और वहां पर इन स्टॉपेजेस की, खासकर बनखेड़ी में जबलपुर अमरावती ट्रेन को रोका जाए। बहुत लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, पहले दुखी थे, अब क्रोध में हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि लोगों की मदद हो। सरकार का जो मूल मंत्र है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो। हर व्यक्ति को सरकार की रेल मंत्रालय से चलने वाली हमारी ट्रेन्स का सुविधाओं का लाभ मिले। आपके माध्यम से मंत्रालय से ऐसी अपेक्षा करता हूं, आग्रह करता हूं। धन्यवाद। चौधरी बाबूलाल इंदौर, सुखबीर सिंह जनपुरिया कहाँ है? ओहो, तो खड़े क्यों नहीं रहते हो? ये बोलिए। इसमें आज आलू का किसान सबसे ज्यादा परेशान है और इसमें आगरा मंडल में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है और आलू की कीमत आज करीबन 300-400 रुपए क्विंटल के बीच में है। वो भी 300-400 रुपए क्विंटल में मैडम जी, सबसे छोटा आलू जिसे कर्री कहते हैं, उसको कोल्ड स्टोर वाले और किसान उसको खरीद नहीं, फेंक रहे हैं उसको। और गुल्ला जो बीज होता है वो 125 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। ऐसे ही जो बड़ा आलू है वो 300-400 रुपए क्विंटल की बिक रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके अनुरोध से, आपकी कृपा से, जब किसान इतने परेशान है कि एक उद्योगपति जो आलू फेंका जा रहा है, उद्योगपति उसको आलू, काजू से और बादाम से भी ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। और चिप्स का एक 10 ग्राम का पैकेट 20 रुपए में बिकेगा, करीबन 1000 रुपए किलो उसकी कीमत पड़ती है। और आज हम लोगों को, किसान पूरे देश का
और खास तौर से आगरा मंडल में, फरुखाबाद में और बरेली मंडल में, पूरा उत्तर प्रदेश में हमारा आलू का किसान परेशान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, किसान आयोग का गठन हो, उसमें एक किसान का परिवार का आदमी हो। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आलू को मिड डे मील में शामिल किया जाए जिससे को उसकी खपत हो सके। आगरा में आलू का प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए जिससे कि किसानों का उसमें आलू की खपत हो सके। आलू की सरकारी खरीद आप लोग सरकार के द्वारा कराएंगे तो निश्चित तौर पे उसमें मैं अध्यक्ष जी एक बात और कहना चाहूँगा, एक मिनट लूंगा आपके, 1 मिनट लूंगा। गुजरात सरकार आलू के किसानों के लिए 100 रुपए क्विंटल भाड़े में सब्सिडी दे रही है। इसी तरीका से उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं, पूरे देश के किसानों को सब्सिडी 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की जेब से जुड़े हुए मामले पे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, जोधपुर भोपाल से चलने वाली ट्रेन जो कि भोपाल से जयपुर के बीच चलती है, इस ट्रेन को जुलाई महीने से पैसेंजर से एक्सप्रेस ट्रेन में बदल दिया गया है, जबकि इससे पहले समय 3 घंटे 25 मिनट लगते थे और अब वो सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है। केवल 5 मिनट का अंतर हुआ है और इसमें अब एक्सप्रेस जैसी कोई सुविधा भी नहीं है। वही पुराने डिब्बे लगे हुए हैं और वही उसी हिसाब का है, जबकि इसके किराए में लगभग दोगुनी वृद्धि कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर से सवाई माधोपुर के पहले 30 रुपए लगते थे, अब 60 रुपए लगने लगे। जयपुर से चाकसू 10 रुपए लगते थे, अब 20 लगने लगे। जयपुर से चौथका बरवाड़ा 25 रुपए लगते थे, अब 50 लगने लगे। जयपुर से कोटा पहले 25 रुपए लगते थे, अब 85 रुपए लगाने लगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी मैं मांग करता हूं कि इस किराए की बढ़ोतरी को पुनः विचार किया जाए और वापस लिया जाए, क्योंकि इसके चक्कर में ये चौथ के बरवाड़ा में क्रॉसिंग बदली जाती है, उस पर भी 3 घंटे ट्रेन खड़ी रहती है और इसमें यात्री बहुत परेशान होते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसके किराए को वापस किया जाए ताकि गरीब आदमी जब शहर पहुंच सके। धन्यवाद। Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, this House should take note of and celebrate the 100th anniversary of the publication of Rabindranath Tagore's famous book, Nationalism. In it, Tagore recorded, countrymen will gain truly their India by fighting against that education which teaches them that a country is greater than the ideals of humanity. ये इंसानियत के बात आज याद रखना है. He had something even more perceptive and far-sighted to say in 1917 that is relevant in 2017. He wrote, "The social habit of mind which impels us to make the life of our fellow beings a burden to them, where they differ from us even in such a thing as their choice of food, is sure to persist in our political organization and result in creating engines of coercion to crush every rational difference which is the sign of life." Today, you know, Madam Speaker, the engines of coercion are snuffing out life in the form of mob lynchings. It is our duty today to save the expression of rational difference that can nurture and nourish a healthy national life. Our HRD Minister is present here today. He has given an assurance that Tagore will not be removed from our textbooks, but he should go further and include more of Rabindranath Tagore in our textbooks so that our young students can learn the value of humanity. Thank you, Madam Speaker. मैम, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समकक्ष स्थापित होने वाले दूसरे एयरपोर्ट की तरफ दिलाना चाहूँगा। दुनिया के तमाम महानगरों में न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक कई एयरपोर्ट उनके इर्द गिर्द हैं। इसी बात को देखते हुए एयर ट्रैफिक बढ़ते हुए एयर ट्रैफिक को देखते हुए 16 दिसंबर 2009 में कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार ने हरियाणा ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक दूसरे एयरपोर्ट को स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया था। 23 जून 2010 को इंस्पेक्शन ऑफ साइट्स इन हरियाणा और प्री फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी जो हरी झंडी उसमें मिली थी, और मगर ये कहा गया था कि एक नियम है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 1997 में कि 150 किलोमीटर तक कोई एयरपोर्ट नहीं स्थापित किया जा सकता। 29 अप्रैल 2011 को मैं स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिला था और इस
नियम की बाध्यता को दूर करने का रास्ता प्रशस्त हुआ था। उसके बाद 15 अक्टूबर 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एनओसी दिया था, क्योंकि एयरफोर्स की एनओसी इसमें आवश्यक होती है। अप्रैल 2012 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फीजिबिलिटी स्टडी ग्रुप की स्थापना की थी, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 2013 में आई थी, जिसमें महम में जो 7 जिलों के मध्य में पड़ता है हरियाणा में, उसमें एक एयरपोर्ट की स्थापना करने का प्रस्ताव था। 2016-17 तक इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट और 2018 से इसको फुल सर्विस सारे ऑपरेशंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को दिया गया था। फीजिबिलिटी स्टडी ने जनवरी 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको रिपोर्ट को अपनाकर इसकी हरी झंडी दी थी। मगर अभी पीछे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। उसके बाद हमने देखा कैबिनेट की एक मीटिंग हुई भारतीय सरकार की, और कैबिनेट में 15 से 20 हजार करोड़ के इस बड़े एयरपोर्ट की स्थापना करने के प्रश्न पे एक नोएडा के समीप एक जेवर के अंदर इस एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट को स्थापित करने की घोषणा कर दी गई, मंजूरी दी गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें उत्तर प्रदेश से कोई लड़ाई नहीं, जेवर में भी स्थापित हो, हम उस बारे में कोई लड़ना नहीं चाहते। मगर जब प्रश्न भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, मैं पूछना चाहता हूं क्या एक भारत में हरियाणा भी आता है कि नहीं आता? जब सारी मंजूरियां मिल गई थी तो अंतिम समय में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी हो, मगर ये जो सारी मंजूरियां मिल गई थी महम क्षेत्र में भी स्थापित हो, और इसके साथ साथ हरियाणा में 2 और एयरपोर्ट मंजूर शुदा हैं, हिसार और करनाल। इन दोनों एयरपोर्ट्स पे भी कोई कार्य नहीं हो रहा। हरियाणा अकेला एक राज्य है मैडम जिसमें एक भी एयरपोर्ट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जवाब दे, हरियाणा के अंदर जो एयरपोर्ट मंजूर शुदा है हमारे समय के उन एयरपोर्ट को स्थापित किया जाए। और ये जो महम है, इस महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के समकक्ष जरूर स्थापित किया जाए, ताकि लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। और एक भारत की जो बात करते हैं उस एक भारत में हरियाणा भी समझे, हम भी समझे कि एक भारत में हम भी शामिल हैं। गुरजीत सिंह, you don't want to? Yes. Yes. मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 0 ਆਵਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੇ ਔਰ ਜੋ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਠੇਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਬਾਹਰ 25,000 30,000 ਪਰ ਏਕੜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 65 ਦੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ 71 ਦੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ। श्री पी करुणाकरण is not there. श्री कोतापल्ली गीता. Thank you, Speaker ma'am, for giving me this opportunity to speak about the very important issue regarding the tribal children studying in the tribal ashram schools, madam. Every year, 30 to 40 children studying in these schools are subject to vector-borne diseases like malaria and jaundice, and they are losing their lives, madam. And there is no accountability fixed on these ashram schools for the loss of the lives of these children, madam. And it is a shocking factor, madam, that these people living in studying in the tribal welfare schools are lacking the minimum amenities to live, madam. They are being stuffed into one room without proper amenities to live. And not only that, madam, children are suffering with they are all anemic, madam. They are suffering with bloodlessness, and no medical care is provided to these students, madam. Even in the girls' schools, there is a provision for providing an A&M or a nurse, madam, which is not provided by the government, madam. Not only this, the class 4 employees are not there in the schools, and the students are subject to a lot of harassment, and they are cleaning and they are doing all the sanitation work in the schools, madam. It is a matter of fact that government has
also failed in providing safe drinking water, madam. Though there are RO plants in these institutions, some institutions, madam, not in all institutions, but these RO plants are also lacking maintenance, and the children are being infected with lot of diseases due to the contaminated water, madam. Not only that, madam, there are no wardens appointed on regular basis in these schools, madam, and there is no budgetary provision for the class 4 employees in these schools, madam, and they don't have the responsibility fixed. In view of the above, madam, through you, I would like to request the Tribal Welfare Minister, madam, to allocate more budget to the tribal welfare schools and thereby provide these amenities of health and infrastructure in the tribal welfare schools. Sri Ramchandran ji. Yes. Thank you for Now having given me this opportunity. No, yes, madam. No I time. draw the attention of this August House to a grave injustice done to the most deserving athlete, Ms. P.U. Chitra, who won the gold medal at the recent Asian Athletic Meet held at Bhubaneswar for 1,500 meter event. It is extremely distressing to note that she has, for no reason, been denied opportunity to participate in the World Athletic Meet to be held in London. Ms. Chitra is the pride of our country, and she hails from an extremely poor family of Kerala. Thousands of sports-loving persons are deeply agitated over the authoritarian attitude of the Athletic Federation of India, depriving the most promising athlete of the opportunity to participate in the London meet. Madam, sports federations are virtually becoming law unto themselves, and decisions are being taken and at their sweet whims and fancies. I request the government to intervene in the matter, and immediate steps may be taken to ensure that Ms. Chitra represent India at the international meet at London. Madam, we are seeking a class. Rahul Kaswan ji. Okay. You can associate. Rahul Kaswan. Yes, yes, yes. 1 minute only, not more than that. Yes. मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमारे क्षेत्र चूरू के अंदर करीब 3.5 लाख किसानों ने अपना बीमा करवाया। मैडम, बहुत ही ऐतिहासिक एक स्कीम रही जिसमें प्रीमियम बहुत लो है और रिमोट सेंसिंग से इसको हम देखते हैं। मैडम, 2016 की जो खरीफ फसल में 3.5 लाख किसानों ने करीब अपना बीमा करवाया। मैडम, प्रीमियम जिले से करीब 90 करोड़ का इकट्ठा हुआ, जिसमें किसानों का कंट्रीब्यूशन 8 करोड़ था। मैडम, क्लेम का कि जहां तक मैं बात करूं, क्लेम की जो परसेंटेज निकल के आई वो मात्र 8 करोड़ रुपए की क्लेम दिए गए। मैडम, जिले का बाकी सिर्फ 1% प्रीमियम ही रिलीज किया गया। किसान ऐसे बड़े हताहत है। मैडम, 33,000 किसानों को इस प्रीमियम मिला है। मैडम, आज की तारीख में चूरू, तारानगर, रतनगढ़, सरदार शहर और सुजानगढ़ के किसान उस क्लेम के लिए बड़े चिंतित हैं, न उनको क्लेम मिला जा रहा है। और मेरा आपसे निवेदन है मैडम कि उनका क्लेम जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। ओके, श्री तारिक अनवर जी, 1 मिनट में करो प्लीज। और मैं आपका ध्यान और इस सदन का ध्यान अपने क्षेत्र कटिहार के बाढ़ पीड़ित इलाके की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो विस्थापित लोगों की है। हमारा कटिहार जिला, उसकी जो भौगोलिक की स्थिति है, वहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। गंगा, महानंदा, गंडक, रीगा और ऐसी कई नदियाँ हैं, जिसकी वजह से हमेशा वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, कटाव की स्थिति बनी रहती है, बड़े पैमाने पर एरोजन होता है और जिसकी वजह से लाखों लोग विस्थापित पड़े हुए हैं। कई वर्षों से ये समस्या अपनी जगह पर खड़ी है। बाढ़ नियंत्रण जो विभाग है वो सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है, कोई उसकी तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग जो विस्थापित हैं उनको बसाने की व्यवस्था हो, क्योंकि वो विस्थापित होने के कारण जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी उनको प्राप्त नहीं होती है और इस तरह से वो अपने बाल बच्चों को लेकर कहीं बांध पर, कहीं सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। मोहम्मद फैजल। Thank you very much, Madam Speaker, for allowing me. This is a very important issue, Madam. Last time also I missed my 0 hour. This is the plight of the fishermen in Lakshadweep. Ma'am, you know that 1/5 of India's exclusive economic zone belongs to Lakshadweep. Nearly 4.02 lakh square kilometer exclusive economic zone marine wealth we have. And the potential says that around 15 metric ton potential is there in Lakshadweep, but so far exploited quantity is just 15,000 metric ton. My point is here, ma'am, Lakshadweep fishermen's the one and only produce is the mass mean, which is locally called, and it is called the dried tuna fish.
All these years, this dry tuna fish is the consuming country is Sri Lanka. Now, all these years, it has been going to the Sri Lanka through this middleman. The chunk of the profit portion was being exploited and taken by the middleman. To stop that, Lakshadweep administration thought of procuring this mass meat through its cooperatives. So this year they started the collection of dry tuna fish from the fishermen by this cooperative. Around 250 metric ton is in this stock go on. Yes. Now to topple that, this middleman again has started sending these same product in a malified manner, and without explicitly saying that this is a dry tuna fish and it is a assorted fish, and to topple the market, and the price offered by the buyer to disturb the fishermen, this was toppled by the middleman. So my request before you, madam, through the government is that those exports which is going as dry fish, the product's name should be clearly, explicitly mentioned that which is the product going. If it is a tuna fish, it should be dry tuna fish. The disguise they are showing is it is an assorted fish. Yes. So they simply send any material in the name of that and toppling the market. Now the problem here is that this 250. Yes, समझ गए. Yeah, मैं complete ही करता हूँ, ma'am. Now the problem here is that I'm submitting two things. One is the government should take the export, that commercial industry which is MPDA is controlling it, should take note of that. The export should go in the particular product's name. Second part is that since this has been toppled, there is a likely chance of getting lost for the fishermen and the cooperatives. And my request with the government is that if such a request from the Lakshadweep administration coming for a compensation for the fishermen, it may be considered. Thank you very much, madam. Chandu Banjara ji. थैंक यू मैडम। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता देनी चाहिए। देश भर में मैडम जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो है उनको मान्यता दी गई है, किंतु केवल चंडीगढ़ है जहाँ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है। माननीय मंत्री जी, मेरे मित्र जुदेकर जी चंडीगढ़ गए थे, उन्होंने ठीक कहा था कि इंग्लिश तो लिंक भाषा है, ये कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है। देश में जो 22 लैंग्वेज हैं उसमें पंजाबी है। 22 गांव जो उठाए गए थे चंडीगढ़ के समय उनमें पंजाबी स्पीकिंग एरिया थे सारे। तो मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाए। दूसरा, हरियाणा पंजाब के 60-40 से रेशो के वहाँ एम्प्लॉइज थे, अब यूटी केडर बना लिया, पंजाब हरियाणा के एम्प्लॉइज ही वहाँ जाने बंद कर दिए। ऐसे मैडम जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, वहाँ मिनोरिटी स्टेटस सिखों को देने की मांग सबने की थी, मगर अभी तक वहाँ की सरकार ने नहीं दिया। और कल मंत्री जी ने कहा, मिनोरिटी मंत्री जी ने, कि देश में 6 मिनोरिटीज नोटिफाई हैं, 5 मिनोरिटी को तो मिनोरिटी कमीशन में मेंबर प्रतिनिधिता दे दी, सिखों को जो 6वीं मिनोरिटी है उसको प्रतिनिधिता नहीं दी गई। तो आपसे माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिखों के मामले जो हैं सॉल्व किए जाए। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान, बीते दिनों रेलवे के खाने को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि खाने का सामान इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें आईआरसीटीसी इस काम को पूरी तरह से देख रही है। मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से। रेलवे में दिया जाने वाला पदार्थ पूरी तरह से हाइजीनिक होना चाहिए, उपभोग युक्त हो, इसके लिए रेपुटेटेड ब्रांड को बढ़ावा देना चाहिए। रेलवे में पूरी तरह से कुकिंग पर बैन करना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर एवं ओवन द्वारा ही खाद्य पदार्थ को गर्म किया जाना चाहिए। रेलवे में विदेशों की तर्ज पर प्रचलित फ्रोजन फूड को बढ़ावा देना चाहिए। जो कंपनियां फूड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन का काम कर रही हैं उनका सीधे किसानों से व्यवसाय जुड़ा है और वे उनसे वेजिटेबल इकट्ठा करते हैं। फ्रोजन फूड को रेलवे के और स्टेशनों में शुरू करने के यात्रियों को शुद्ध, हाइजीनिक और फ्रेश खाद्य पदार्थ मिलेगा। फ्रोजन फूड की लाइफ 3 माह से 6 माह होती है, जो कि टेम्परेचर टेक्नोलॉजी के कारण फ्रेम और हाइजीनिक होता है। फ्रोजन फूड में किसी प्रकार की कुकिंग करने की जरूरत नहीं होती। प्रयोग के तौर पर फ्रोजन फूड सभी राजधानी दुरंतों एवं शताब्दी ट्रेनों में शुरू किया जा सकता है तथा फूड स्टार एवं फूड प्लाजा में बेचने की अनुमति दी जा सकती है। धन्यवाद। भर्तृहरि मेहताब जी। Madam, it was in 2014 I had raised a matter relating to a budding athlete, Duti Chand. And that time the then Sports Minister, the present Chief Minister of Assam,
Mr. Sonowal had taken it up. Again, that issue I'm raising it because Court of Arbitration of Sports is now going to reopen Duti Chand's hyperandrogenism case. Government should challenge the IAAF's latest finding with charges of conflict of interest and bias. It is IAAF's researchers and leading scientists, Stephen Berman and Pierre Yves Garner. Both Garner was part of the IAAF's Medical and Anti-Doping Commission for many years. Similarly, Garner is the director of the Health and Science Department of IAAF. This is a case of conflict of interest since the World Anti-Doping Agency was a party of this research paper. These scientists should have been neutral, but they own their own allegiance to IAAF. Duti was barred from competing by the Athletic Federation of India, as in the case of Chitra that was mentioned by Mr. Ramchandran. In September 2014, she challenged the decision at the CAS, that is Court of Arbitration, which overturned it on July 27, 2015. CAS had given 2 years' time to IAAF if they come up with some new findings. But the situation today here is that after IAAF's research paper, I would say the Athletic Association of India, which had disqualified Duti Chand, a rising sprinter, in 2014 due to violation of hyperandrogenism policy of the International Association of Athletic Federation. However, the Court of Arbitration for Sports had overturned the decision of AFI in 2015 and directed AFI to reapproach the court after 2 years with more evidences on hyperandrogenism regulations. The IAAF's research paper on the issue, however, in question due to charges of conflict of interest and bias on the part of IAAF's researchers and scientists. Both the researchers and scientists who prepared this research paper were associated with IAAF for a very long time. It is a prestige of our country. And Duti Chand is an aspiring gold medalist. That's what was proved in Bhubaneswar athletics and other athletes also. Therefore, let me complete. Just let me complete. Yes. And here is a case where my request to the government is, I urge the government is to fight it out in the international court that is in Switzerland, where this case was fought in 2014. And here is a case that we have to say that there is a conflict of interest, and accordingly the respective ministry or minister may be approached to take up this case. This is for sex-based discrimination and undue harassment due to biased research paper of IAAF. Okay. I would be happy if the government responds to this case, please. Yes. Earlier also, our honorable members from Kerala, they have raised a similar matter. And now, my dear colleague, Shri Bhartrihari Mehta, who is a veteran parliamentarian, he has also raised this issue concerning the Indian athletes from 2 different states. And if there is a issue of conflict of interest, and if it has to be raised at the level of IAAF, and if India has to represent that Court of Arbitration in Switzerland, then I think we will definitely take this matter through our Honorable Youth Affairs and Sport Minister. I'll bring to his notice the entire our members' 0 over mentions here today, and see that our athletes will get the justice so that they can win gold medal for India in Olympics. डॉक्टर सत्यपाल सिंह, आप कुछ स्पोर्ट्स के संदर्भ में कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैं भारत सरकार अभी खेल के क्षेत्र में ऊंची ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बागपत क्षेत्र जो है NCR का एक क्षेत्र है,
50% एयर शूटिंग में पूरे देश के बच्चे केवल बागपत से आते हैं। एथलेटिक्स के अंदर, बास्केटबॉल में, फुटबॉल के अंदर, तीरंदाजी के अंदर और कुश्ती में सैकड़ों जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा किए हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बागपत में एक राष्ट्रीय खेल संस्थान का जो है परमिशन दिया जाए, मंजूरी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्युत बरन महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत SCL ICAC के सुरदा माइंस के ठेकेदार इंडियन रिसोर्स लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया NRI कंपनी ने मार्च 2007 में चालू किया, 2 जून 2017 तक खनन कार्य किया। इसके बाद अचानक कंपनी काम बंद कर दी। कंपनी मैनेजर डायरेक्टर अरविंद मिश्रा एवं मैनेजर के रातों रात वहाँ से सप्लायर तथा मजदूर का पैसा लेकर भाग गए, जिसके कारण सप्लायर मजदूर करोड़ों रुपया फंसा हुआ। इस कंपनी के अंदर लगभग 2000 मजदूर काम किया करते हैं, जिसका पैसा लेकर भागा गया। मजदूर सप्लायर समझ रोजगार एवं भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी। अतः आपके माध्यम से माननीय कॉर्पोरेट मंत्रालय से मांग करता हूं, उपरोक्त विषय में उच्च स्तरीय कमेटी जांच करवाकर कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए तो सप्लायर मजदूर को धन्यवाद। बस 1 मिनट 1 सेकंड में डिमांड रखो, केवल डिमांड है आपकी। चलो धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक केंद्रीय विद्यालय दिया। माननीय जावड़ेकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे संसदीय क्षेत्र में दिया गया है। भारत सरकार और मंत्री जी ने विद्यालय दे दिया, लेकिन विभाग के अधिकारी वहाँ पर उनको किराए पर भवन भी उपलब्ध हो गया। हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर में भवन मिलने के बाद भी और अभी 31 जुलाई के बाद एडमिशन नहीं होंगे और वो अधिकारी वहां पर आपस में पत्राचार करके उस मामले को लटकाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि विद्यालय इस वर्ष शुरू ना हो पाए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो किराए पर भवन उपलब्ध है, उसको तत्काल भरुआ सुमेरपुर का केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Speaker, Madam, I have 3 points that I am praying before the central government through you that in my constitution, constituency area, that is Boshirat constituency, there is no center school. Several times I prayed, but till today, government has not taken any action. Secondly, my lord, my prayer is this, that my area is border area, Bangladesh border area, which is within the jurisdiction of the central government. Their road are very dilapidated condition, तो वो रास्ता को भी ज्यादा मरम्मत करना चाहिए। थाली मैडम थाली वन सीरियस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं लोकसभा मिश्री की विधानसभा बिल्लौर में मैं मांग कर रही हूँ कि बिल्लौर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15107, 15108 छपरा मथुरा छपरा को बिल्लौर रेलवे स्टेशन पर रुकवाने की कृपा। धन्यवाद। के परशुराम, ओनली डिमांड इन 1 second, that's all. Gauge conversion. बोलो। Honorable Speaker, Madam, I would like to draw the attention to the Railway Minister regarding important railway demands under my constituency. The train number 16853, 16854 Solan Express is operated between Trichy and Chennai Egmore via main line for many decades. Solan Express is only daytime daily express via main line and is widely used by the passenger. Furthermore, patronage exists in this train between Sidambaram and Trichy from short distance travels. Hence, passengers are demanding for attaching more second-class coaches and reserving certain sleeper class coaches for the benefit of short distance travelers. Until this train is operated fully with the city. Not the whole railway problem you are not. के परशुराम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में कमरिया घाट, जो कि जिसका टेंडर भी हो चुका था और तय सीमा अवधि जो उसकी थी, उस तय सीमा अवधि में जो कंपनी टेंडर डाली थी वह कार्य न कर पाने के कारण उसकी सिक्योरिटी भी जब्त हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जनहित में उपरोक्त पुल को अविलंब फुट से वह टेंडर के आधार पर शुरू कराने की कृपा कराएं। 1 सेकंड में डिमांड रखो, बस ज्यादा बोलना नहीं। कौशल के अध्यक्ष महोदय 1 सेकंड में तो खड़ा हो गया।
तो फिर बैठ जाओ। मेरे संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले के केंद्र सरकार के अधीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एक भी कौशल विकास नहीं खोला गया। तो वहाँ जो युवाओं जो हैं वो अब विचलित हो रहे हैं कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये हुआ है, हम लोग भटक रहे हैं, हमको कौशल विकास के लिए कुछ जगह नहीं मिला है। दूसरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर की स्थिति तरियानी प्रखंड के अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है एवं शिवहर जिले का सबसे बड़ा प्रखंड है। इस प्रखंड के तरियानी चौक पर अंचल कार्यालय, प्रखंड स्तरीय चिकित्सालय, BSNL का कार्यालय, इंटर कॉलेज अवस्थित है। तरियानी प्रखंड में डाक सुविधा हेतु आप डिमांड रखो ना। जी डाक सुविधा हेतु आपको कृपा कर रहे हैं, प्लीज हमारी ये मांग। डिमांड नहीं, ओनली वन डिमांड यू हैव टू, दैट्स ऑल। रोज रोज सब बात नहीं, पढ़ना नहीं लंबा चौड़ा। धन्यवाद मैडम। बोलो जल्दी कंप्लीट करो 1 सेकंड में। तरियानी प्रखंड के डाक की सुविधा हेतु शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में अति शीघ्र उप डाकघर खोलने का कार्य किया जाए। धन्यवाद मैडम स्पीकर, मुझे अपने इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। मेरे यहाँ पर कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंबरनाथ शहर में एक 100 साल पुराना रेलवे का डैम है, जो पहले ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने बनाया था। अभी उसका इस्तेमाल IRCTC के द्वारा रेल नीर प्लांट के लिए हो रहा है, लेकिन कल से उस डैम में लीकेज होना शुरू हुआ है और 1.5 साल पहले भी यही डैम में लीकेज का काम था, लेकिन रेलवे ने कहा था कि मरम्मत हो गई है, लेकिन आज भी स्थिति बरकरार है। 20 लाख लोगों की जान का यहाँ पर सवाल है। तो मेरे आपके माध्यम से रेलवे मंत्री से दरख्वास्त है कि इस जो डैम है जल्द से जल्द इसका रिपेयर किया जाए। धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया मैडम, बहुत इसके लिए धन्यवाद। महोदया, बिहार अंतर्गत भागलपुर जो मेरा गृह क्षेत्र है, वर्षों से मैं वहाँ विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा महोदया। वहाँ एक महत्वाकांक्षी NH की योजना जो 16.5 किलोमीटर सड़क मेरे लगातार संघर्ष और प्रयास के बाद वो बन रहा है महोदया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं अभी गाँव गया था महोदया, और वहाँ हमारे गाँव में जो चानन नदी है महोदया, दरियापुर पंचायत के कई मौजे में बालू का और मिट्टी का अवैध खनन NH के ठेकेदारों द्वारा जोरदार हो रहा है। वहाँ के किसान छटपटा रहे हैं महोदया, और आपको आश्चर्य होगा कि सारे बांधों का हजारों एकड़ जमीन 1950 में 59 में बाढ़ में चला गया था। आज फिर से वही हालत कायम हो गया है। किसान बहुत ही परेशान है महोदया, और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अवैध बालू और मिट्टी का खनन, अवैध अस्त्र शस्त्र का भंडार वहाँ इकट्ठा हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है महोदया। इस पर ध्यान दिया जाए। Honorable Speaker, Madam. Yes, क्या problem है? Madam, I am facing very much trouble to implement MP-led funds in my constituency. Yes. District Magistrate is the implementing authority of my constituency. 3 years passed, but I got an allotment of only 7.5 crore. It happened due to the non-cooperation of the District Magistrate. He is not releasing fund in proper time, so the implementation is delayed. In last 3 years, he has not convened any meeting to review the MP-led works. Yes. So we got no chance to speak anything about the MP-led funds. Recently, Ministry of Statistics has noticed that Murshidabad is far behind the state level, so many districts. So hence I request the government, through you, madam, please make an inquiry and take necessary action so that I can utilize MP-led fund for full amount for the benefit of the people. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं एक बहुत ही अति गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे बुंदेलखंड में किसान इस समय बहुत ही परेशान एवं आक्रोशित है। पूर्व की केंद्र सरकार की राहत राशि तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की जो कर्ज माफी की योजना का लाभ बुंदेलखंड के अधिकतर किसानों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम पैदावार होने के कारण वहां सन 1971 के राजस्व संहिता में एक नियम बनाया गया था कि वहां की 2.5 गुना जमीन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बराबर मानी जाएगी।
तो वहां पर जो लघु और सीमांत की जो गणना की जाती है वो पूरे प्रदेश के बराबर की जा रही है, जबकि उनको राजस्व संहिता के अनुसार 2.5 गुना जमीन में ज्यादा में उनकी गणना की जानी चाहिए। आज तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं में वहां के लघु और सीमांत किसानों को 2.5 गुना ज्यादा यानी 2.5 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर तक के लोगों को लघु सीमांत माना जाए। Okay. Now we'll take up item number 12, no lunch hour today. So, Minister. Thank you very much. आज कल जैसे ये बिल की शुरुआत हुई तो मैं केवल रिकैप करूंगा। पहले तो हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक खास स्थान है और उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी है। Our institutes are not only famous in India, they are famous all over. कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, रांची, रोहतक, रायपुर, त्रिची, उदयपुर, अमृतसर, बोधगया, नागपुर, संबलपुर, सिरमौर, विशाखापट्टनम, जम्मू, all are working in a very good, it's an ecosystem of IIM which is working. An ecosystem is of quality. And therefore, what we are proposing through this bill is that they are not, because they are run by societies, we want to now declare them as institutes of national importance, thereby they can award degrees. So, awarding the degree, that power we want to give, so it will be regular MBA, not a diploma, and not a fellowship, but a PhD. And that these two things have to be there. तो डिग्री देना की पावर देना एक काम है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि हम स्वायत्तता दे रहे हैं। बिकॉज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये विश्वास रखती है कि अगर देश के विद्वत्ता पर हम भरोसा नहीं करेंगे, अगर देश के जो अच्छे संस्थान हैं उन पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। Therefore, we must give autonomy to the educational institutes who have achieved the quality benchmarks and who have achieved a reputation and have created an ecosystem for themselves and for everybody to follow. Therefore, ये autonomy देने की भी इसमें बहुत मुद्दा है। पहले गवर्नमेंट ही बोर्ड अपॉइंट करता था, गवर्नमेंट ही चेयरमैन अपॉइंट करते थे, पहले गवर्नमेंट ही सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती थी। अब ये कुछ नहीं हम करेंगे, ये सब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉमिनी बहुत होते थे, अब नहीं होंगे और एक ही होगा। और आईएम काउंसिल का भी चेयरमैन मंत्री होते थे। मैं अभी जो प्रस्ताव दे रहा हूं, मैं अभी नहीं रहूंगा उस काउंसिल का चेयरमैन, क्योंकि आई बिलीव जैसे हम घर में पेरेंट्स अपने बच्चों पर अगर ट्रस्ट करते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, वैसे देश को भी अपनी संस्थाओं पर जो काबिल संस्था है, जिन्होंने क्वालिटी अटेंड किया है, उनको अच्छी स्वायत्तता देकर उन पर विश्वास करना चाहिए। फिर हम जो पैसे देते हैं, ये 7 साल ही पैसे देते हैं आईएम को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 7 साल खर्चा चलाने के लिए, लेकिन बाद में वो सेल्फ सफिशिएंट है और ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। और इसलिए वी मस्ट ट्रस्ट आवर बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक कल्चर को ये बढ़ावा देना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, we as a nation must learn to believe in our people, to trust our people, to trust our best institute and give them autonomy to conduct their affairs. और इसलिए ये है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो पैसा दिया उसका क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आखिर हम अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है और वहाँ सीएजी का ऑडिट तो होगा, उनका एनुअल रिपोर्ट यहाँ आएगा, तो जिनको चर्चा करनी कभी पड़ेगी तो संसद में भी चर्चा हो सकती है, अपने स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हो सकती है, तो वो है ही चेक्स एंड बैलेंसेस में। लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी जो गवर्नमेंट डायरेक्शंस देती थी, आपको पता है आईएम्स यहां से चलाना और जॉइंट सेक्रेटरी हो या बाकी हमारे अधिकारी हो, उनके द्वारा आईएम का संचालन होना, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है।
और इसलिए फॉर ए मैच्योर्ड डेमोक्रेसी वी मस्ट ट्रस्ट आवर मैच्योर्ड इंस्टीट्यूट्स and therefore this is effort to give them power to accord degrees and to give them complete autonomy, freedom so that they excel more. वो फैकल्टी ले सकते हैं, अच्छी फैकल्टी का वेरिएबल पैकेज दे सकते हैं, उनको देश के कानून लागू है, तो छात्रों के या प्राध्यापकों के हितों के जो कानून है, बाकी कानून है, वो तो लागू है, लेकिन हर चीज के लिए सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, दिल्ली में नहीं आना पड़ेगा, चिट्ठी नहीं भेजनी पड़ेगी, दे विल कंडक्ट देयर अफेयर्स देमसेल्व्स। और मुझे लगता है कि दिस इज ए बिग चेंज, इसलिए ये बिल एक ऐतिहासिक बिल है, ये दिस इज हिस्टोरिकल बिल विच इज हमें एक नए युग में हम जा रहे हैं कि जहां हम हमारे बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स को और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ट्रस्ट करके उनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं। तो ये दोनों के कारण ये महत्वपूर्ण बिल है, इस पर चर्चा होगी, सबके सुझावों का स्वागत है। उसके का नाम क्या है? मिस्टर शशि थरूर। Madam Chair, and I'd like to thank the Minister for his eloquent introduction of this bill. On the face of it, as he said, the Indian Institutes of Information, I beg your pardon, the Management Bill is a fairly routine one, and he has presented it in a very unexceptionable light. But I do have some concerns, Madam Chair, that I would like to share with him. First of all, because the legislation brings to the fore certain larger issues involved in our government's approach to the higher education sector. But secondly, of course, there are specifics on the bill that I would also like to address. The larger point is that we have in our country a potential demographic dividend because of our youthful population. But it's very clear that if we don't revitalize our education sector, and in particular higher education, this demographic dividend potentially will transform into a demographic disaster. If we cannot train, educate, equip our young people to take advantage of the opportunities that the world economy and the national economy will offer them in the 21st century, then we will actually end up with a lot of frustrated, unemployed or underemployed young people. And we have seen the consequences of that in our tribal areas with the Maoist movements, the Naxalite movements, and we don't want to see that kind of negative consequence amongst our youth at large in our country. I do fear that this seems not to have been given the importance that it deserves by our government, and I'm not blaming my friend the HRD minister. The problem lies at heart in this government's inability or unwillingness to provide the necessary resources required to be able to drive our higher education sector towards a demographic dividend. If we were to look, for example, at the specific case of the IIMs, they were created, and they were created many years ago, very much as an earnest of the state's determination to equip, train our bright young people, to contribute towards their future by equipping them with management qualifications, which were earlier unknown in our country. Management education has been around for 100 years or more in countries like America. In our country, really, they started with the IIMs. And what is striking is that instead of investing in our future through strengthening our education, higher education, what have we seen in the share of budgetary outlay towards education? In the most recent budget, it was stagnant at only 3.7%, and only a meager 1.5% has been allocated to higher education altogether, even though the need has risen year after year, the population is growing year after year, and inflation is also reducing the value of the amounts year after year. The Standing Committee report in March this year, which discussed the demands for grants of the Department of Higher Education, made very strong and pertinent observations and noted that though the government claims to have increased the expenditure for IIMs and IITs, these institutions have been dealing with a chronic shortage of resources and funds that deters them from competing with the global institutions against which we must benchmark institutions like the IIM. Only 3 of our IIMs
feature in the list of top 100 management schools in the world as per the 2017 Financial Times ranking. Now, considering the quality of the students that we get in the IIMs, we have very rigorous selection procedures in place in our country, strong competitive examinations. I must say we are failing our young minds if we cannot offer them the access to the best universities in the world in our country. There are young men and women who have to go out and compete with the world. We are in a globalizing economy. Indian companies must also hold their own with multinational corporations and against the best that the world has to offer. Why can't we offer them the best or even better educational facilities than is available in some of these Western countries? I believe that having only 3 out of 100 is a travesty, and I think it reveals that the government is not doing enough to bolster their development. Now, the government is proud to announce that it's created another institution of national importance. I welcome and applaud that, but the expenditure of the government towards higher education in real terms, it's coming down. In nominal terms, it's increasing very, very modestly. I think 2% in the last couple of years. Now, when you have an institution of national importance, Madam Chair, it must also be an institution of budgetary importance. But where is the budgetary importance that has been given? I think that my good friend, the HRD Minister, is not getting the support he deserves from the Finance Ministry. And it seems to me that for the government to make, understandably, very ambitious claims about its efforts has to be matched with suitable budgetary allocations. I can see my friend, the Minister for Women and Child Development, has the same problem. This emphasis on fiscal rectitude is all very well, but not at the cost of the nation's objectives and priorities. In fact, if I can just return to the HRD Ministry, having worked there myself for a brief period, if we see how the government's budgetary priorities are functioning with the Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, I know it's not connected to the IIMs directly, but it reflects a larger problem, that in the name of fiscal probity and controls, you are starving the one thing you have created, we have all created, to promote the excellence, the equity, and the access to institutions of higher education at the states. And we had hoped to upgrade those poor universities through this Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, RUSA. But by March of this year, Madam Chair, only 46% of the total central share of RUSA expenditure has been released, and only 24% has been utilized. My worry is this shows either a lack of intent or a lack of monitoring of implementation, or both. And I want to draw the Minister's attention to this. We have a similar problem when it comes to teachers in higher education. The government launched the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Training, which is supposed to strengthen the creation and training of teachers in our educational institutions. But what do we see? No progress in the establishment of centers in the universities, and a tiny fraction of the fund has been utilized since 2014. In fact, coming back to the IIMs, let's look at the vacancies. Just recently, this very month, the Minister of State in HRD responded to an honourable MP's question about vacancies in teaching positions, and he stated that 26% of faculty posts in the IIMs and 35% of faculty in the IITs are lying vacant. Now, the race to create more institutions in numbers, which is definitely necessitated by our population growth, must not overshadow the aspects of quality of education. We cannot make up in mindless numbers the glaring lack of quality in higher education in India, but for quality we need resources, we need money, we need facilities, we need faculty. And this is where, I'm sorry to say, the government is collectively lacking. The government has also delayed the implementation of the Higher Education Financing Agency. How many years have we been hearing about this, Honourable Minister, and we have actually not seen the establishment of this agency? If we really want to have an effective higher education sector for our youth, the government has to be more innovative in its approach. We can have slogans, but those slogans must be fulfilled in reality, and that's not happening.
multi-pronged malaises have really held the universities of India back from realizing the aspirations of our young people. And I think only a vision that goes beyond superficial change, that goes beyond slogans to real tangible action will work. But let me come to the specifics of the bill, and I want to agree entirely with the Minister that brand IIM has truly come into its own and is synonymous with a world-class management education with a distinctively Indian flavor. Even though only 3 of those IIMs have made it to the top 100, those 3 are, I think, a revelation of what the rest could be like. After all, the story of our country's economic resurgence would be incomplete without acknowledging the critical role collectively played by the IIMs in providing our country with an amazingly talented, motivated, and highly successful pool of managers who have gone on in many ways to transform every area of our society and our economy with their exceptional leadership. So, because they've done that, and because we all have come across very distinguished IIM alumni and the difference they've made to India, I also want to affirm that, in my view, they've realized the hopes and vision of the man who established the IIMs, Pandit Jawaharlal Nehru, who had the vision to realize that India needed management education and brought it into this country. As in many other areas of our nation building, we must pay homage to his far-sightedness in realizing that if India is to meet its tryst destiny, India would need world-class leaders for business and industry as well. Now let me turn to the specifics of the bill, because while applauding many good things about it, I do want to acknowledge it's clearly an improvement on the earlier draft that was circulated by the minister's predecessor. That had been assailed by various legitimate controversies, and I congratulate the government on having been able to move past those issues and to come up with a very far-reaching bill. And I want to really congratulate Javadekar Sahab, because there's a significant degree of autonomy conceded for the first time. I think really it's a remarkable moment when a government minister in our system actually surrenders powers and says, please have more autonomy. Many of us have been clamoring for this for some time, and I want to congratulate the Honourable Minister that he has taken this step. But though I support this thrust, I must say that I have some concerns. Now, he has already summarized the bill, Madam Chair. Institution of national importance. One thing that is very striking is the post of visitor is abolished, so that the visitor of these IIMs was the Rashtrapati. Now, it's perhaps a slightly surprising welcome to our new Rashtrapati that he's being stripped of a function as soon as he takes over, but Javadekar Sahab will be answerable for that. It may be an odd welcome, but nonetheless, the result of this is that the Board of Governors has a lot more authority. They'll select the chairperson, they will select the director, and neither the Rashtrapati ji nor the Human Resources Development Minister will now have a role in the selection of the top executives of these IIMs. And I think relinquishing government control is an example that I'm very glad he has set through the IIMs. I hope he will follow it in other institutions and create more autonomy for good higher universities and institutions of other ilk. And may I request him in the cabinet to encourage his colleagues in other ministries to start doing the same thing. We really need to see some of this being moved aside. And one particular feature I want to congratulate the minister for is he has insisted that the board shall comprise 3 women members, absolutely necessary, and 5 alumni, which is a very good thing. So those who are proud of being educated in these institutions will have an influence in how successive generations are also educated. Excellent idea. And an annual report in the IIMs will be tabled in our parliament. The CAG will audit their accounts. All of this is good, because then we too can ask questions and do some oversight when we see the report. The Coordination Forum is an interesting initiative. We had contemplated this in our time. I must say you have taken a bold step that you are not the chair, Mr. Minister, but you have left it to the eminent person, I gather, an eminent person chosen by the board to chair the coordinating committee. And all of these features I want to welcome in the bill. Where do I have some problems? First issue is the bill is completely silent on the issue of, I have just 5 issues, Madam. The bill is completely silent on the reservations issue, in teaching staff in particularly. Now, I've already mentioned the 26% vacancy in teaching staff and faculties. Now, on top of that, you don't say anything about reservations for people in the faculty positions. I know
that my good friend, the Honourable Minister, has stated that the law of the land will always apply, but I don't find a satisfactory mention of this in the bill. Beg your pardon? Earlier there was a specific provision, today there no longer is. And what is interesting is there is a very vague language saying the IIM shall try to recruit teachers from the weaker sections of society, but I don't understand why, as in the previous provision, it could not be explicitly stated as a requirement in the bill. Now, what is particularly worrying, Minister Sahab, is that of the 233 faculty members in the 6 IIMs that we have information for, only 2 belong to the scheduled caste community and none from the scheduled tribe community. Now, we are living in an era where more and more of our scheduled caste brothers and sisters are speaking of entrepreneurship as the way out of their lot in life. Dalit entrepreneurship is a major theme in recent years, and I think it is a worrying neglect of the legitimate aspirations for business leadership and business development on the part of our scheduled caste and scheduled tribe communities that we have only 2 amongst all of them out of 233 faculty. I would urge the Minister to give this attention. Second issue that the House must contemplate is a consequence of a good decision. The decision to give all 20 IIMs in the country the right to award degrees is welcome, and I support it. Madam, I need 3 minutes because just 3 more points. Prior to this, IIMs, like other universities, used to offer something called a postgraduate diploma in management, which obviously was not universally accepted as an MBA, particularly in many foreign countries. If IIMs give MBA degrees, which now they're going to be allowed to, that will be very good. But it will now create a difference between the IIMs and all the other private and semi-private institutions of management, which are still stuck with giving PG DMs. And Minister Sahab has got to be aware that creating a new differential is not going to help the challenge of educating the large number of young people in our country who need management degrees, and it will be an unnecessary disadvantage placed upon these other institutions. And therefore, I propose that the government in its next step should have a more ambitious management education bill so that other management institutions can benefit from these reforms, create a national management university to which they could all be affiliated and which can issue MBAs as well. So it's not only the IIMs giving MBAs as a result of today's bill, but other management institutions can also do so. Singapore did something very similar with the Singapore Management University. It has been a huge success, improved management education in the country, but it's also gone very far in terms of global recognition. Third issue, ma'am, the complete control over the board that has been granted by this bill over the fee structure worries me a little bit. I completely advocate autonomy of the university in other matters, IIMs and so on, but a lack of control of the government over the quantum of fees may lead to disadvantages for the marginalized sections in our society. The needs of the nation could not be properly met if students from poorer families would have to undertake the burden of very heavy loans just to be able to study in a government institution, which is what the IIM is. They would then feel obliged to look for lucrative jobs in the business sector. They would not necessarily try and work back to their communities. The chances of such an IIM graduate burdened with loans pursuing academics or research or even teaching in future IIMs would not be there. And therefore, I think it would defeat the purpose of the bill if there wasn't some way in which we could guide some control. Madam, last 2 points, madam. Fourth concern is lack of full-time directors in the IIMs. November 2016, the minister has told us that 13 of the 20 IIMs are functioning without full-time directors. The government has failed to fill up these vacancies consistently, and this is creating a vacuum of leadership in the IIMs. And then there are 2 small provisions which I want to mention. One is you're changing the name of IIM Calcutta to IIM Kolkata in this bill. I'm a little worried about the erosion of the brand value of IIMC as a term. But equally, I come from Kerala, and we already have an IIMK in IIM Kozhikode. How can you have 2 IIMKs? You will actually undermine the identity of both. I think this requires a rethink, and you might want to leave IIM Calcutta as Calcutta, or call it IIM Kolkata, but let it be known as IIMC, because that is a very distinctive brand. And finally, a rather petty thing has been done, Madam Chairman, in this bill. With great regret, I want to mention that the government has decided to drop the prefix Rajiv Gandhi from the name of IIM Shillong.
Now, this is symptomatic of a pattern of attempting to demolish traditions and erase history. Of course, Rajiv Gandhi's contribution to this country is something that does not need one name here or there to justify it. He has done a great deal to take India into the 20th century. But I must say it is rather petty of the government to stoop so low in such a manner. To conclude, Madam, management education is extremely important in our country. These institutions have actually done a great deal for India. They have driven our nation forward. Many of the IIM products must hold key positions in our economy, in our society, and therefore I hope that the government will actually see this bill as an opportunity to bolster the potential of these institutes, address these flaws, and give India the management leaders it deserves. Thank you, Madam. Jai Hind. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया. As our honourable member had just paid homage to Nehru and Gandhi family, I would like to pay my homage to कल ही हमारी आदरणीय अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि थी. उनको मैं याद करके ये कहना चाहती हूँ कि he spoke about India's future for 2020, कि युवा कैसे आगे बढ़े, how to ignite minds. तो I actually want to pay homage to Honourable APJ Abdul Kalam when this bill is there, where he is giving his ideas to take the young Indian minds to take India's future forward. And second person I would like to pay homage is to Professor Yashpal ji. As Honourable Minister knows that Professor Yashpal was the head of the committee. He headed the committee in 2008 to advise on renovation and rejuvenation in higher education, which was tabled in 2009. और उस पे भी IIM के विषयों पे आदरणीय प्रोफेसर यशपाल जी ने भी बहुत अच्छे रूप से बहुत सारे अच्छे मुद्दे दिए थे और हायर एजुकेशन पे दिए थे. उनका कुछ दिनों पहले देहांत हुआ. सो आई वुड लाइक टू रिमेंबर हिम ऑल्सो विद दिस बिल. मैडम स्पीकर, सभापति महोदया जी, जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, हम भारतवर्ष के विचारों पे आगे बढ़ना चाहते तो हम ये जानते हैं कि भारत डिस्कवरी और इनोवेशन पे हर वक्त अपनी संस्कृति के रूप से आगे बढ़ता जा रहा है. वो डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो हो, इंडियाज़ डोमिनेंस इन वर्ल्ड ट्रेड टिल 17th सेंचुरी हो, एडवांसमेंट इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, रमन इफेक्ट हो या अभी मंगलयान हो, भारत में हर वक्त डिस्कवरी और इनोवेशन की रूप और प्रथा और प्रचलित होना हर वक्त हमारे यहाँ चलता रहता है. IIM के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र भारत के बाद एक बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप से सरकार आगे देख रही थी. लेकिन उसके बाद IIM का विषय इसलिए निकला क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आपको इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है और समय भी बदलता गया, उस रूप से बहुत बड़े जॉब डिस्क्रिप्शन भी बदलते गए. और IIM का निर्माण 1960 और 1970 के दशक में हुआ. 1961 में अहमदाबाद और कोलकाता IIM का निर्माण हुआ और 73 में बंगलोर IIM का निर्माण हुआ, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप से IIM को आगे लेके जाए. IIM के रूप से हम आगे इसलिए बढ़ना चाहते हैं कि मुझे कहानी याद है जब मैं पेपरों में पढ़ती थी कि हम हर वक्त अपने एक विचारों को आगे लेके जाना चाहते हैं. इस भारत का युवा कुछ न कुछ करना चाहता है. 2003 में मुझे याद है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अभी के, तभी वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने 2003 में अपनी पूरी मंत्रिमंडल और अपने ब्यूरोक्रेट्स को लेके वो IIM अहमदाबाद गए. वहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं था, बट टू कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ एंड टॉक टू द प्रोफेसर्स एंड टीचिंग फैकल्टी टू अंडरस्टैंड हाउ ही कैन मेक हिज एडमिनिस्ट्रेशन मोर प्रोफेशनल एंड टेक हिज एडमिनिस्ट्रेशन फॉरवर्ड एंड कनेक्ट विद पीपल ऑफ गुजरात. मुझे लगता है ये विचार IIM के साथ हमारे प्रधानमंत्री तभी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस रूप से उन्होंने आगे लेके जाने की कोशिश की. आप सोचिए 30 साल पहले कभी विचार हमारा था कि नए नए जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसे निकलेंगे कि मोबाइल के बटन पे हम कुछ दबाए तो एक टैक्सी आपके घर पे आ जाएगी और आप उस टैक्सी में बैठ के कहीं पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं. There are so many job description changing. We never thought about it 30 years ago. Well-being coach, offshore wind farm engineer, chief listening officer, app developer, genetic counselor, blogger, web analyst, ऐसे कितने अलग अलग रूप से जॉब डिस्क्रिप्शन बढ़ते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं. उसके लिए स्किल और इनोवेशन की ज़रूरत है और ऐसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि IIM ने उस रूप से बहुत अच्छा काम किया है कि एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उन्होंने उस रूप से उसको आगे बढ़ाया है. मैडम, हम अभी जिस प्रकार से जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं जो 30 साल पहले देखते नहीं थे और आने वाले 30 सालों में और कुछ बदल जा सकता है, उस रूप से वी लुक एट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0. आज हम अलग रूप से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन देख रहे हैं.
उसमें हमें टैलेंट पूल की ज़रूरत है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, 3D प्रिंटिंग हो, हर रूप से ये रेवोल्यूशन 4.0 के रूप बढ़ता जा रहा है। और भारत की, एज मिस्टर थरूर सेड, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप से और यूथ ऑफ दिस कंट्री वांट टू स्ट्राइव विद दैट, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत उनकी ज़रूरत है। IIM का वैसे भी एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनता जा रहा था 1960 के दशक से। उनकी खुद की फैकल्टी थी, अलग अलग रूप से इंक्यूबेशन सेंटर बनता गया, फिनटेक बनाते गए, और IIM ने भी अपना ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एक बड़े पैमाने पे बनाया, जिससे फॉरेन फैकल्टी भी IIM से जुड़ती गई। जितना मुझे याद है कि 1963 में जब IIM 61 में अहमदाबाद और कोलकाता IIM बना था, तभी हार्वर्ड और MIT के साथ एक पेट्रन के रूप से हार्वर्ड और MIT ने IIM को मदद की थी सेटअप करने के लिए। आज स्थिति बदल गई है। मैडम स्पीकर, मैं सिर्फ 4 मुद्दों पे इस बिल पे कहना चाहती हूँ कि ये 4 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अपलॉडेबल है, बहुत अच्छे रूप से विचार किए गए हैं कि हमारा भारत का युवा किस रूप से भारत के इस आने वाली सदी में, जहाँ पे भारत आगे बढ़ रहा है, वो किस रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहता है। जब IIM का विचार किया गया, IIM तो बने थे, बहुत अच्छे रूप से आगे बढ़ रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू डू समथिंग। ऑटोनॉमी देना ये IIM के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका मुझे लगता है इस संसदीय कोई भी दल के हमारे नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी हो, वो यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। और मैं आदरणीय मिनिस्टर श्री जावड़ेकर जी को और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि बच्चों को उनका विश्वास उन पे रखना, बच्चों के विश्वासों को आगे बढ़ाना, ये हर किसी पालक का, पेरेंट का एक अपनी जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है एज अ पेरेंट जावड़ेकर जी ने वो जिम्मेदारी ली कि इस इंस्टीट्यूशन में जब तक मैं विश्वास नहीं रखूंगा कि वो कुछ कर सकते हैं, मैं उनको वो ट्रस्ट नहीं दे पाऊंगा। ट्रस्ट डेफिसिट इतना होता है कि हमें पता नहीं होता हमारे बच्चे क्या करते हैं। बट ही वांटेड टू बिलीव दैट माय चाइल्ड विल थ्राइव, ही विल डू वेल, ही वांटेड टू बी पॉजिटिव। उस रूप से उन्होंने बिल में पूरी ऑटोनॉमी दी हुई है। आप सोचिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। IIM ने भी अपनी ब्रिक बाय ब्रिक इंस्टीट्यूशन बढ़ाते गए। IIM के एलुमनाई नेटवर्क आप देखेंगे तो इतना बड़ा है, जो कि भारत के बहुत क्षेत्रों में भी, सिर्फ कॉर्पोरेट क्षेत्रों में नहीं तो हमारे सरकारी क्षेत्रों में भी IIM के स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर्स हैं वो काम करते आ रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि फिर से एक बार हर कोई युवा क्या चाहता है कि मेरी जो सोच है उसे आप बंदी मत बनाओ, मुझे ताकत दो, और वो ताकत इस ऑटोनॉमी से, ये स्वायत्तता से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री महोदय ने दी है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं दूसरी विषय पे और एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मुझे लगता है विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि इन द पैसेज ऑफ दिस बिल आप लोगों ने कहा जैसे 3 महिलाएं इस पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे होगी, BOG पे, और 5 मेंबर ये एलुमनाई नेटवर्क से लिए जाएंगे। जब हम हमारे स्कूल में थे, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ स्कूल में अच्छा होने के लिए हम कहते थे कि कल जाके हम स्कूल से बाहर जाएंगे तो आने वाले स्टूडेंट्स, कल बेंच टूटी हुई है, बाथरूम ठीक नहीं, तो हम कुछ आगे जाके कहें और एक एलुमनाई नेटवर्क बनता है। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन IIM का वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है मैडम। हम जब देखते हैं IIM के एलुमनाई नेटवर्क पे तो हम दोनों रूप से देखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हार्वर्ड और MIT ने सपोर्ट किया था कोलकाता और अहमदाबाद IIM को आगे बढ़ने के लिए, एक पेट्रन के रूप से मदद की थी, एक लर्निंग कोलैबोरेशन किया था। लेकिन जब आप हार्वर्ड और येल या स्टैनफोर्ड इन सबको, MIT को देखते हैं तो इनका एंडाउनमेंट अभी $35 बिलियन की है। एलुमनाई नेटवर्क मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये आजू बाजू से जमाती है और वो देना चाहती है कि हमारा ये क्षेत्र, हमारी ये इंस्टीट्यूट, हमारा ये विश्वविद्यालय किस रूप से और आगे बढ़े। तो इस रूप से ताकत हार्वर्ड, येल ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क में उन लोगों को मिली है। IIM ने तो अभी शुरुआत की है, सरकार 7 साल पहले उसमें पैसे देती है और उस रूप से विद्यार्थियों को उसको सपोर्ट मिलता है इंस्टीट्यूशन में। लेकिन आप सोचिए कि आज एलुमनाई नेटवर्क के रूप से जब 2014 में IIM ने एक डेवलपमेंट ऑफिस शुरू किया था, तो IIM रेज्ड इन जस्ट 3 years 200 crore rupees to support its IIM facilities। आप सोचिए, हमारे यहाँ भी वो ताकत कम नहीं है, ऐसे नहीं है। बस हम चाहते हैं कि लोग कल जाके कोई सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी इंस्टीट्यूट को, तो स्वायत्तता की भी बहुत ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट हो तो मैं इसमें क्यों पढ़ूँ, मैं इसमें पढ़ूंगा तो मैं इस एलुमनाई नेटवर्क से मैं क्या करूँगा।
तो हर किसी की अपेक्षा होती है कि कल जाके मेरे इंस्टीट्यूट को, मेरे कॉलेज को, मेरे विश्वविद्यालय को एक स्वायत्तता मिले, एक स्वतंत्रता मिले, तो मैं भी अपने रूप से कुछ न कुछ करने के लिए अपनी ताकत दिखा सकता हूँ। मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ा था कि IIM अहमदाबाद में एक एलुमनाई विश्ववीर आहूजा ने 7.5 करोड़ रुपए अपनी इंस्टीट्यूट को दिए थे, और ऐसे बहुत लोगों ने, अनोनिमस लोगों ने डोनेशन देके एलुमनाई नेटवर्क के रूप से इसको आगे बढ़ाया। जब हार्वर्ड के हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में टॉप 100 में हमारे सिर्फ 3 IIMs है, वो आगे बचे हुए 17 IIMs भी जाए, तो क्यों ना हम इन एलुमनाई को वो सपोर्ट दें। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी सरकार को कि 5 एलुमनाई, पहले सिर्फ 3 आते थे उस बोर्ड ऑफ गवर्नर में, अभी 5 है और 3 महिलाएं इसमें शामिल कर रहे हैं, तो इसकी बहुत सराहना करनी चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री महोदय को। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अभी यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा गया था कि बहुत जगहों पे जगहें खाली है, लेकिन जब स्वायत्तता मिलती है तो काम करने की ताकत भी बहुत बढ़ती है और विचार करने की भी शक्ति ज़्यादा मिलती है। जब स्वायत्तता आती है तो ये हमें नहीं सोचना पड़ता किसकी सरकार आई है और किसकी सरकार गई है और किस सरकार का सुनना और किस सरकार का नहीं सुनना है। इट इज़ ऑल अबाउट डिलीवरी, कॉम्पिटेंस एंड व्हाट आई कैन डू फॉर माई इंस्टीट्यूशन। आज उस रूप से स्वायत्तता मिलने के बाद मुझे लगता है जब डायरेक्टर और बोर्ड गवर्नर्स खुद उनको ऑटोनॉमी ग्रांटेड हो जाएगी कि वो तय करेंगी कि IIM और कितना सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने। चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि अकाउंटेबिलिटी CAG से तो होती है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं मंत्री महोदय को, लेकिन IIM में सरकार की कितनी रुकावट कम हो ये इसमें पता चलता है। पहले ये रेकमेंड किया था, पिछले बिलों के बारे में भी आदरणीय थरूर जी ने बात की, तभी 5 सरकार के लोग BOG में आने चाहिए, इस रूप से डिस्कशन होता था। लेकिन ये ऐसा बिल आदरणीय जावड़ेकर जी ने बनाया, उसमें सिर्फ 2 सरकारी मंत्रालय से लोग आएंगे, एक राष्ट्रीय रूप से और एक स्टेट से, क्योंकि स्टेट उन स्टेटों में IIM बनी जाती है, तो ये 2 ही लोग BOG के रूप से अपने रूप से IIM में काम करेंगे। सभापति महोदया, जब हम चाहते हैं कि एक विचार के रूप से कि कल आने वाला हमारा समय, जब आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 में हम देश की जब स्वतंत्रता का एक 75वां साल का एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाएंगे, उस महोत्सव में हम आगे क्या देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि 45% इस देश की जनसंख्या 0 से 24 साल की उम्र तक है। हम जानते हैं कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बने, जो अभी थरूर जी ने कहा, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बने, इसीलिए स्वायत्तता बहुत ज़रूरी है। हम सब युवा हैं, हम चाहते हैं कि हमें हमारे हाथ में सिर्फ ताकत दे, ये ना कहा जाए तुम्हें सिर्फ डिग्री थमा दी और तुम उस रूप से काम करो। आज देश बदल रहा है और हर रूप से, कल भी एक बिल पे हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि आने वाले 2020 तक भारत तीसरी बड़ी वर्ल्ड इकॉनमी बनने वाला है। ऐसी जनसंख्या जब भारत के साथ है तो उसके साथ उसकी स्वायत्तता भी बहुत ज़रूरी है, और यही IIM के इस बिल में दिखाई देता है कि स्वायत्तता पूरे रूप से हमारे साथ, युवाओं के साथ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में IIM में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में 74 ऐसे इंस्टीट्यूट पहले से ही हैं, और अभी उसके साथ IIM की 20 इंस्टीट्यूट जुड़ रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे थरूर जी ने कहा, उसमें मैं थोड़ा उनसे भी मानती हूँ कि 74 इंस्टीट्यूट्स जो अभी है नेशनल ऑफ इम्पोर्टेंस में, उससे ज़्यादा स्वायत्तता IIM को मिली हुई है। IIM's got more freedom than those 74. I would like to request, if I can request the honorable minister, कि हम सबको क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे लाए और उस रूप से स्वायत्तता दूसरे लोगों को भी मिले। तो हम जब चाहते कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस देश को आगे बढ़ा रही है, तो इन 74 के साथ 20 एक साथ मिलने के बाद सबको उस रूप से ताकत मिले और उसको आगे लेके बढ़ते जाए। मैं इतना ही कहूँगी मैडम स्पीकर, एक पार्टी के यूथ विंग की अध्यक्षा हूँ, युवाओं से सब जगह मिलती हूँ। युवा यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे हौसलों की उड़ान के साथ मेरे पंख न काटे जाएं। मुझे लगता है उस पंखों को ताकत देने के लिए IIM जैसा बिल, अभी कहा गया कि वो एलीट इंस्टीट्यूट हो रही है, क्या इस पे ये हो रहा है, फला हो रहा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे IIM में हम ये खबरें पढ़ते हैं कि IIM में जो काम करता है वहाँ पे जॉब, जब ऑन कैंपस जॉब्स जब होते हैं, किसी को 1 करोड़ की जॉब मिल जाती, किसी की 2 करोड़ की, लेकिन ऐसे भी IIM के बहुत सारे उदाहरण हैं जो वहाँ से पढ़ के बड़ी बड़ी NGO में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे IIM के उदाहरण थे। उदाहरण कोई सरकार में काम कर रहा है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र IIM से है, रघुराम राजन जी IIM से थे। हर कोई IIM से अपने रूप से इस देश के आगे बढ़ने के लिए, देश के सपने के साथ आगे बढ़ना चाहता है।
तो युवा यही चाहता है कि मेरे हौसलों की, मेरे विचारों की, मेरे तरक्की की उड़ान को आप पंख न काटें। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी को, उन्होंने उन उड़ानों को हौसला दिया है। आज आईएम के रूप से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई फील द यूथ्स एस्पिरेशन इज द कंट्रीज होप। इफ वी स्टॉप एस्पायरिंग, कंट्री हैज नो होप। और देश की इस आशा के साथ हमारे युवाओं की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। दे अस्पायर, देन ओनली वी कैन होप फॉर दिस कंट्री। एंड आईएम के रूप से आज एस्पायर करना, उनको इंस्पायर करना और देश को इंस्पायर करने के लिए हम आगे हैं। इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 2022 के बाद जिस न्यू इंडिया का सपना लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हर एक युवा का सपना इस भारत का सपना हो, इस भारत को आगे ले जाने का सपना हो, उस भारत के सपने के साथ ये पहली मुहिम है ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी। किसी ने कहा ये तो एक्चुअली फ्रीडम मूवमेंट फॉर आईएम हो गया है। मुझे लगता है एक फ्रीडम मूवमेंट आईएम बना के आईएम ने उधर की फैकल्टी हर किसी को वो ताकत मिली है। और आईएम एक शुरुआत है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के रूप से एक शुरुआत है। मैं खुद आईएम से बहुत रूप से जुड़ी हुई हूँ। हमें महाराष्ट्र में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप से उन्होंने मदद की है। बहुत जगहों पे फिनटेक हो या इंक्यूबेशन सेंटर हो, आईएम ज़रूर बनाता रहता है। हम महाराष्ट्र में भी IFSC बना रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। उसके साथ आईएम अहमदाबाद ने कहा है कि हम खुद फिनटेक बनाएंगे और युवाओं को पढ़ाएंगे कि किस रूप से जॉब प्रिस्क्रिप्शन नया बन रहा है और उसको आगे ले जाए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब इन सब मुद्दों को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, उसमें छोटी तकनीकी दिक्कतें होती रहती है और तकनीकी दिक्कतों के रूप से हम उसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन इतना प्योर एंड क्लियर बिल वेयर it has shown that we as a government, we want to give that freedom to think, freedom to innovate, freedom to go forward to youth of this nation through IIM. So मुझे लगता है इस बिल का सिर्फ और सिर्फ स्वागत करना चाहिए। ये एक शुरुआत है for this golden era where higher education is being questioned so many times, but where the answer to higher education is through this first bill of IIM 2017. I thank the honorable minister for supporting this bill and getting this bill. मैं अपने रूप से इस बिल को पूरी तरह से समर्थन देना चाहती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर शौगत राय। Madam, I am very happy to support this bill, Indian Institute of Management Bill 2017, and to thank the Minister for bringing this bill. Madam, I will speak for only 10 minutes. You give rest of the Madam Chair, I will speak only for 10 minutes, give the rest of my time, even if 5 minutes to Mamta Sangamita. I will be very brief. Madam, I thank the Minister for having brought this bill. On this occasion, without going into contention, I would like to mention the name of Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, whom the President elected did not mention in his initial speech, who set up the first two IIMs in Calcutta and Ahmedabad in '61. I would also like to thank Indira Gandhi, our then Prime Minister, who set up IIM Bangalore in 1973. Because these management institutes are the harbingers of management education in this country. Management, I will not agree with Mr. Shashi Tharoor that management is not a very old science. In America, the modern management started to be taught after Peter Drucker wrote his famous book called Management. And the top institutes in America, they've all come up after the Second World War. Madam, you have heard of the Sloan School of Management in MIT, the Harvard Business School, the Booth School of Management in Chicago University, where Raghuram Rajan teaches now, the Wharton School of Management, the Kellogg School of Management. The top management institutes are all in America, having been set up after the Second World War. There is also a London Business School, and there are good management institutes in Singapore, Japan, South Korea. But I am proud to say that our top three management institutes, ABC, Ahmedabad, Bangalore, and Calcutta, do compare favorably with the best institutes of the world. And
that these three come within the top 200 management institutes in the world. You have to remember that in the top 200 universities in the world, not one Indian universities are there. So IIMs have made a greater stride as far as education is concerned. Madam, these institutes are being declared as institutes of national importance according to 7th schedule Union List entry 64, under which we can declare any institute as institutes of national importance. And the minister has clearly stated that this is done so that they can award degrees. Earlier they used to give PGDM, postgraduate diploma in management, now they will give MBA degrees. Earlier they used to give fellow of the IIM, which was not recognized in many places as a PhD degree. Now they will directly grant PhD degrees, which is a very, very welcome step. Also, Madam, the big thing about this is that the IIMs are being given complete autonomy. Apron strings of the government are being cut by the minister himself. I would appreciate, since IITs are also under you, they are also top 5 IITs are also world class. So I would urge you to also give autonomy to the IITs. The top people always do IIT and then IIM. Our Raghuram Rajan used to be both IIT and IIM Ahmedabad. So the best people go there. Give freedom to IITs also. The other comparable institutions in PD Rai, our, yes, Premdas Rai, our friend, he is also IIT and IIM Ahmedabad, the best in the country. I congratulate him. So what I was saying, madam, that of the national level institutions, AIMS are not under this ministry, but AIMS does not have so much autonomy. There is always a clash with the government. The national law schools are also world-class institutions, but maybe they are also not under your ministry. Whatever is under your ministry, you follow this policy of giving them autonomy, which will appreciate. The other thing to be mentioned, madam, that many people speak of private sector in education. But you'd be surprised to know that very often different magazines bring out the list of top institutions in the country. Among the engineering colleges, all top, first 10 will be IITs. Among IIMs, institutes of management, there are so many private institutes of management. But still the IIMs occupy top position, which means that institutions set up by the central government are still the best in the country. The private sector has tried, they take a lot of fees, but they have not come up to the level of the government institutions. I want the government to really maintain this pristine superiority the central government institutions have achieved. And as I said earlier, that one of the objects mentioned is that management, education and research should reach top levels. Because our IIMs have done very well as far as placement of students are concerned. Fresh graduates, madam, 23-year-old, they get annual salary of crores, sometimes from the financial committees. Most of them get annual salary in terms of lakhs. But the research in management has not developed so much. So I hope that this step will give that thrust to research in management education, which is changing every day. You would be glad to know that, madam, in IIM Calcutta, apart from management, they're also teaching a course called the IT-enabled management. Because management and IT
have become closely interlinked, and it's necessary for management experts to do this IT enabling for them, I hope. But I would point out to the Honourable Minister, you have given the academic council the freedom to form their own syllabus, which is very good. You have given the Board of Governors the power to choose the director and also their own chairman, which is very welcome. Now, the question is that you have not put any control on the fees. Madam, when we were students, some of our friends went to IIM Calcutta, fees were very low. Now already the fees of IIMs are very high. And unless they get scholarship or education loans, 20 lakhs, as he is saying. Without education loans, it is not possible for a bright boy, even if he has cracked the CAT, Common Admission Test for IIMs, to really pay their way through the IIMs. I would like more scholarships to be instituted by the IIMs so that no bright boy is denied management education just because he does not have the money to pursue management education. India should not be up. Isko ensure kariye ki so that they can do this, and money does not become a bar to this thing. Madam, also I like the speech of Poonam Mahajan, our young lady member, very much. She was speaking of the aspirations of the new generation of people. Our boys, young educated boys and girls, really want to do good. They read that one Indra Nui, who was an alumni of IIM Calcutta. She has become the worldwide head of Pepsi. Indian management experts do have the capacity to go to the top. With that, I'll thank the minister again for having brought such a progressive bill. I hope that management in our country will improve. Previously, we had management by the rule of thumb, but management has become a modern science, and we should follow that route to modernize the economy and the country so that we become a big economic power in another 10 years. With that, I thank the minister for having brought the bill. Nagendra Kumar Pradhan. Chairman, sir, Chairman, Madam, I am very much thankful to you because you have allowed me to speak in this bill, Indian Institute of Management Bill 2017. I first congratulate Honorable Minister because since 2003 onwards, the then Honorable Minister Murali Manohar Joshi ji, then UPA government, then Irani Madam, all have tried to just bring this important bill, especially for autonomous standard. But finally, the present minister able to materialize it, and now the discussion is on in this Augustus House. That's why I am very much thankful to him. All aspects that has been there is wonderful good. But the present structure is like this. For example, Indian Institute of Management institutions are important, elite institutions of our country. They are considered amongst the best educational institutions. A management program provides a holistic development of managerial skill through exposure to case studies, teaching, industry training, consultancy, and research, and interaction with the industrial leaders. All these aspects in management education help students cultivate practical and efficient
skill sets required in the industry. When management students enter to corporate arena, they are expected to efficiently identify various issues and come out with the best solution perhaps. Only the most meritorious student finally make into these institutions. Additionally, the high fee charged at IIM between 9 lakhs to 20 lakhs also prevent several students from less privileged background from taking admission to this. There are currently 20 IIMs across India. Based on reports, these IIMs put together have about only 8,000 seats. Compared to this, there are about 5,500 other business schools, 5,500 other business schools, non-IIMs, that offers MBA degree. They collectively have around 5 lakh seats as opposed to the mere 8,000 seats belong to this IIMs. While I comment the government's effort to further the standard of education and research at IIMs I also ask, is the government aware of the fate of other 5 lakh non-IIM MBA degrees holders? I am putting this because, Honorable Minister, I got an opportunity to attend COP21 in Paris. Honorable Minister was there. One situation happened. Foreign Minister USA, John Kerry, wanted to talk to him over phone. I was there. He told that we are committed for certain cause regarding COP agreement, and he didn't talk to him over phone. John Kerry came, discussed, we are there, and he stood like a rock as per the commitment of the government of India. That's why from that point, I am raising these things. Yes, IIM are very best institution of this, and the acts that you are going to implement, its autonomous status and other things, that is very good. But what about others? 5 lakhs non-IIM students, those are passing. What will be their future? According to report, aside from the 8,000 IIM graduates, only 35,000 of 5 lakhs MBA. Most of these jobs offer salary hardly 10,000 rupees only per month. How are these graduates to survive on this little salary? How are they to repay students' loans taking from getting an MBA degree? In such situation, the investment certainly becomes higher than returns. What about the fate of other graduates who do not even get job? I urge to the government to take steps to improve the standard of these other B schools as well as to secure the future of such students. I am stressing over this point because Honorable Minister is a very decisive person, what I marked there in COP21 in Paris. That's why I am explaining these facts of this country. Increased fee in business schools and unavailability of placement are two major reasons for less number of candidates applying for common aptitude test CAT entrance examination. Studies show that a large number of CAT aspirants who clear the exam with 80% seek admission in one of the top 100 colleges which only have a few seats of offer.
this pool of candidates have nowhere to go as they are willing to settle for Tier 2 and Tier 3. Every year there is a drop in the number of candidates applying for CAT. One of the main reasons behind of this, that a lot of students now prefer foreign university on IMS. In foreign universities, there is a possibility and there is a chance also one can get scholarship. But after this amendment, after this new bill enactment, whether there is a provision of any scholarship so that the people, the students, those who are qualified, whether they will able to read in this institution or not. Sir, please conclusion complete. Regarding this, before concluding, I would like to point out that certain recommendations of expert committee formed by Parliament have not been addressed in this bill. These relate to: 1, the board having autonomy to determine faculty pay; 2, creation of an autonomous standing committee for management education under an apex regularly body for higher education. I asked the government for a response regarding why these 2 recommendations were not considered and whether they would be considered and implemented in future or not. Regarding one of IIM in Sambal, in my area, one IIM just established by this government. I want to draw your kind attention, that is IIM Sambalpur. What happened exactly for the for your kind information till today, one minute. For kind information till today, IIM Sambalpur is running in a rented building. The management wrote a letter to the HRD ministry. Just one minute, madam. Ministry for signing MOUs with the Sambalpur University for running the institutions. Odisha government sanctioned building, step, purpose and hostel accommodation purpose for students and staff. Odisha government, just 1 minute. Odisha government sanctioned 200 acres of land. This bill will be passed by 3:30. Please conclude, sir. My request to the Honorable Minister, thank you. Whether the Thank you, Chairman, Madam. to allow signing the MOU. I think this week, this entire week or last 10 days belong to our Minister. I think this is the 5th bill, 4th bill. All those bills related to education and so uploadable that the IIIT bill 2, then RT bill, and this is 1. The Indian Institute of Management Bill 2017. So at the first instance, let me congratulate the Honorable Minister in bringing out such a wonderful bill, which is first thing, the most important thing which I liked out of it is that the autonomy. And that is what we required for a long time. Unless you give autonomy along with responsibility and accountability, we will not get the desired results. What is happening in the all government sectors, why institutes, even in the public sector, the autonomy is not there. Make them accountable. Till we give you autonomy to run the business, show us how much competent you are in the market and prove that you are metal. And then you will find some of the PSUs also will work finely. First thing is that while doing so, हम जब सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाने की ये IIM जो है बने हुए ऑलरेडी, अब वहाँ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ अगर होगा तो मेरे लिए चिंता की बात है। अब इस विषय में जब हमारे पूर्वलक्षी सारे सांसदों ने जो विचार प्रकट किए हैं, मुझे यही बात लगता है, हमने 20 इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेशन का दर्जा दे दिया। आउट ऑफ दिस, अपार्ट फ्रॉम 20,
Hundreds and hundreds institutes are nowadays running like a market. You go to any college, all degree courses, all engineering courses, some of the private, you see the, I mean, while traveling in the plane itself, you pick up any magazine and you see the number of institutes are there, number of engineering colleges are there, number of management studies are there. We do not have any idea what sort of syllabus they are giving, imparting to the students who are learning over there. Are they have the equivalent standards to those of IIM? And we have IIMs who are having an equivalent standard of the global? One has to think of it very seriously, sir. Our second part is that it is come under the RTI also. You have brought this bill where you have said all these IIMs will be under the purview of RTI also. So therefore we will have a nexus to know what exactly is happening. And while doing so, what I have experienced in the past, I'll tell you. Sir, some of the IIMs, forget about IIMs. I can understand IIMs have their own standard, they have got their own syllabus. But the other institutes also, I myself have faced, Prakashji, you won't believe. My nephew who appeared for an exam of the IIM, for the management studies, not IIM. The management colleges like Wellinger and other institutes are there in. You have come from such a place, Pune is a national hub of the education. So you know better than me, in fact. That institute conducted an exam for the admission. A boy who has passed, secured distinction in the engineering, wanted to go for a management study, appeared for their exam. The result he got, 99 point and some percent in marks he got. Still he did not get admission. They demanded money for that. And this corrupt practice is still going on. Some of the institutes have got they have their branches all over the country. So no, you want that boy should be admitted in Mumbai, they'll say no, we have a vacancy at Bangalore, go to Bangalore. If you want Mumbai, again pay money for that. This is the practice which is going on, and therefore I request through you, madam, to the Honorable Minister, when you have brought such a wonderful bill, please look into that also. We will have around 8,000 to 10,000 students studying in the IIMs. 5 lakh students are studying in the other colleges, which are conducting MBA course only. They give MBA degree only. But whether that MBA degree and that of a MBA degree of IIM are they equivalent? We'll have to come out very openly on this subject. Second thing, fees and the donation. Very high fees, sir. One cannot afford. Forget about education. Now the NPS are banking NPS. If you go to the record of the banking NPS, you will find the students we have taken a loan for the education are not able to repay the loan just because they did not get the job of that remuneration, of that quality, or that higher pays. They are not able to repay the loan, sir. Again, we are facing NPA there also. The other day also, while discussing on the triple IIT bill, I said the same thing. This is again a concern. Now we say 20 lakh rupees fee, suppose a middle class or a lower middle class boy who has already, is a talented boy. What government is going to do to protect such a talented child or a talented student? I would like to know you from them. Loan is one of these things, but there again, we have to take care of this, what best we can. Third thing, I appreciate you. What a wonderful, I mean, the minister doesn't want, he has surrendered his post. I don't want to be the chair. It's really, really applaudable. No one in a political field or social field also loves to leave the chair. You are the person who loves to leave the chair. Prakashji, hats off to you. I really heartily congratulate for you. The alumni of these colleges, IIMs, they have throughout the world are working. Some of those are getting very high salary. They show their gratitude to the institutions from where they are learnt. They are also giving the fees and all those things. I had some dreams in my mind. Suppose apart from this institute, existing institutes, if a new IIM is to be opened, who will form the board? Who has got the power to form that board? These are the existing boards. They will run. But if you want to form a new IIM, who has got the powers to form that board and give them the delegations of the power? और छोटी सी बात करूंगा मैं एक, इन्होंने जो बात की थोड़ी सी मुझे शशि थरूर साहब की बात अच्छी नहीं लगी. 1 second, within 1 minute. In education field, we talk about reservations and other things.
We have talented people from our SC/ST, sir. Very high talented boys are there. They are securing good marks. We should go for a talents only. May belong to any caste, creed, region, religion, tribal, scheduled caste, scheduled tribe. Don't go for that. We want to impart, we want to bring the future of this country or of the child of the country, and therefore we should impart a very high and standard education. और बाद में एक ही बात करूंगा जो उन्होंने बताया, हमारी पूनम जी ने भी अच्छा भाषण किया, तो उन्होंने जाते जाते एक ही बात कही थी, हमारे पंख मत काटो, ताकत दे रहे हो, तो मैं उन्हीं को बता, तो आपने अच्छा पंख दिया है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। आपका हौसला बुलंद है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और इस बिल को समर्थन करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। Ma'am, good evening, madam. Thank you very much for giving the opportunity. I will be speaking some other place, madam. First of all, on behalf of Telugu Party and our leader Chandrababu Naidu garu, we fully support this bill. This bill correctly fits into the slogan of our government: less government, more governance. This is the slogan of the government, and I think HRD Minister has definitely, befittingly gave this autonomy to the institutions, thereby decreasing the government interference and increasing the autonomy. So more governance, less government. Sir, out of the track, I would like to tell something to the Javadekar Sahab. He may not be aware of what is reputation among the MPs. You are known as very dynamic minister, sir. Not only for your works, you are liberal, giving KV seats other than the UK allotted quota also. We think so great about you, sir. And you have been very liberal. Please continue to do the same thing, sir. Because we have a lot of obligations back our constituencies about the KV seats, having a wait list of 2 years, 3 years, something like that. This is very serious, Sir, our state, Andhra Pradesh, unfortunately got bifurcated. So we have been suffering a lot. But we never knew in the bifurcation, this boon is disguise. Like we got national importance, like lot of central universities also come into the Andhra Pradesh, the bifurcated Andhra Pradesh. Had the Andhra Pradesh been together, I don't think we would have got these many central universities in the residuary Andhra Pradesh state. Therefore, we feel it lucky that we are getting a lot of central universities, maybe because of bifurcation. Bifurcation, of course, it was very scientifically done. But as far as the central university is concerned, we feel we are very lucky. And we especially feel lucky that Mr. Javadekar Sahab is in the helm of the affairs, and especially when the central universities are coming to the Andhra Pradesh. Sir, at this point, a small discarded note, we have started the IIM in Visakhapatnam, sir, and the Visakhapatnam campus has been identified, the walls were erected, everything is done, but sir, as Mr. Shashi Tharoor said, and others said, there is no fund, sir. Sir, please, because this institute is working in some other surrogate institute, like Andhra University it is working. So therefore, try to allot a lot of funds liberally, sir, not because it is a central university, because after bifurcation, Andhra is suffering a lot for the funds crunch. So please, sir, allot more these things, sir. So apart from this, ABC, there is Ahmedabad, Bangalore and Calcutta, the IIMs which are well known. This autonomy is very good step, sir. But thing is, the faculty which are 233 or somewhere like that, only 2 or 3 are from the scheduled castes, scheduled tribes and the reservation category, sir. This is most unfortunate. This is very, very unfortunate. The reservations, social justice, we have been celebrating Ambedkar's 125th birthday anniversary, but we have also recently elected one of the best, the president also, befitting to the Ambedkar's memory. But this type of vacancies in the higher institutes like IIMs and IITs is most unfortunate, sir. Even my colleague, Mr. Arvind Sawant, he was also telling, give a lot of importance to merit, little less importance to the caste. But let me also tell him through this August House, the SCs definitely require a big push, sir. The centuries, millions of years of neglect, and they have been sidelined culturally and politically, economically, so many. They have been sidelined, therefore they are handicapped. They require definitely a push. They cannot be treated on par with others.
as far as the SC is concerned and the reservations is concerned. We definitely require reservations. We cannot treat them on par with other students and treat them as a merit and a talent. There has to be some amount of relaxation at the entry level, because the reservations are always at the entry level. At the passing out, they have to be on par with the other students. So therefore, we are not giving any reservations for the passing. The merit would be the same. Only entry level, we are giving relaxation. Therefore, this disparity of talent or recruiting less talent does not arise at all. So, my dear Sawant sir, please try to rectify if at all you have that concept, less merit. They're also having more merit. At the exit level, they will have more merit. No, no, sir, ये नहीं चलेगा. It will be acquisition on me and it will be on record. नहीं चलेगा, yes, sir. I have not objected to students for the entry. Ravindra Babu, please conclude. While teaching profession, this is a teaching profession. This is not nothing to worry about the student. Nothing is going on record. Who said no for that? Don't carry that message. Ravindra Babu, please continue. Madam. So, madam, after this LPG, madam, the liberalization, privatization, globalization, these IIMs, especially business schools, gain a lot of importance, a lot of significance also. When we think of business in India, madam, when we think of trading in India, we cannot help but remember in the East India Company. The way they came here as a trading company, how they occupied. We also have a lot of examples recently also. They called a neo-imperialism. In the form of trading, a lot of forces are coming into India. For example, China. My colleague Rahul was telling me how many bulk drugs, how many important drugs are being imported from China. China is almost there in every nook and corner of India. Therefore, we have been subjugated. Financially, economically, we are getting weaker also. But the IIMs being the beacons of knowledge, they are the ones who can create prosperity through business and through trading and through manufacturing and a lot of financial activity. These are the things, these are the people who are heading in the international institutes also. For example, Indra Nui from IIMs, and she is heading the Pepsi Cola. Therefore, these IIMs definitely need to be boosted, and more faculty and more quality faculty need to be also given. That's, of course, Minister Saab is already doing it, and by giving autonomy also. Accountability, there is some problem, sir. I don't know what is the accountability of these autonomous institutes, and also please see to it they don't enhance the fees on the account of the award capacity to award the degrees. Sir, one more small thing, sir. There are certain other institutes also who are not having this power to award the degrees. For example, National Institute of Design. They also have this problem of not able to award the degrees themselves. So therefore, they are becoming only diploma holders. Suppose if they want to appear for civil services and other exams where their degree is required, they are becoming disqualified on the ground that you have an only diploma. Though they are studying for 4 years and 5 years, eligible for PG degrees, they are still not being given the... therefore, I urge upon the minister, sir. Of course, this is not coming under you, sir. NID it works under Textile Ministry. I urge upon the request to give the same facility to the NID also to award the degrees for the par with the IIMs. And thank you very much, sir. We fully support this bill, sir. Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity. And on my party's behalf, welcome this bill, the Indian Management Institute of Management Bill. Madam, my colleague Ravindra Babu was mentioning that because of this bifurcation, they have got good central universities and good institutions. मैं उनका अभिनंदन करता हूँ. I really say that good luck to them. And also I would have been very happy if the central government also gives them a separate high court also, madam. Madam, at the... Governor. Separate governor also. That governor is that you will get definitely within the next few days. But a separate high court also, if they get, we'll be very happy. That's why I'm also wishing them good, sir. Sir, at present, there are 20 Indian Institutes of Management, IIMs. The earliest IIMs were set up in 1961 in Ahmedabad and Calcutta, and the latest was established in Jammu in 2016. Being societies, IIMs are not entitled to
award degrees like university or institution of national importance. And hence they have been awarded postgraduate diploma and fellow program in management. While the PG diploma in management is the fellow program treated as equivalent to MBAs, it has not been universally accepted as eligible degree for enrolling into PhDs. Madam, the highlights in this bill, what I have seen, Madam, the Indian Institutes of Management Bill 2017 declares 20 existing IIMs as institutions of national importance and confers on them the power to grant degrees. The board of governors will be the executive body of each IIM, comprising up to 19 members. It will nominate 17 board members, including eminent persons, faculty members, and alumni. The remaining 2 members will be nominees from the central and state government, respectively. The board appoints its own chairman also, ma'am. The board of governors will appoint the director of each IIM. A search committee will recommend names for the post of the director. The director is eligible for variable pay to the determined by the board. The highlights, so that's what I said. So currently the central government has a role in the functioning of IIMs, which includes appointment of chairpersons of their boards, their directors, and pay of the to the director. In contrast, the bill extends great autonomy to the board in the performance of these functions. Under the bill, the autonomy envisaged for the exceeds this. Certain recommendations for expert committees have not been addressed in the bill. This relates to the board having the autonomy to determine faculty pay and then creation of an autonomous standing committee for management, education, and an apex regulatory body for the higher education, madam. So all these points are welcome and theirs, but the only thing what we also request in this is, madam, that the IIM was promised in the State Reorganization AP Act, which was there. So we wish that the government sanctions us IIM also, madam. Thank you. Thank you. Mr. M.B. Rajesh. Thank you, Madam Chair. And I seek your permission to speak from this seat. Madam, with your permission, I speak from this. Okay. Thank you, Madam Chair. IIMs are our best and prestigious institutions of specialized higher education. Madam, there are criticism from certain quarters that these IIMs, though the best in our country, are far below the international standards. But this yardstick of international standard itself is highly complicated and problematic. So I do not think that applying this yardstick, complicated yardstick, and arriving at conclusion that our IIMs are below international standard or of low quality is not very good. And I just want to draw your attention to the fact that independent evaluations of research outputs, including referred articles in high-quality journals, published case studies, and teaching notes, have shown that IIMs have been improving significantly. Madam, this bill seeks to declare certain institutions as institutions of IIMs as institutions of national importance. And it's good that this bill will empower the IIMs to award degrees, which they could not do in the last 60 years. And one of the major focus of this bill, one of the major objective of this bill is to give complete autonomy, as stressed by the minister in his introductory remarks, to IIMs. Yes, academic autonomy is not a bad idea, and I support the idea of academic autonomy with adequate safeguards and accountability. But still there are some issues related to this concept of autonomy. Number one, who will appoint the members of Board of Governors? Number two, when the government is focusing on this academic autonomy, and this bill was tabled on 9th February 2017,
the very next day, the government did something which is completely against the spirit of this bill. Because on 10, why I'm saying this? On 10 February 2007, a day after tabling this bill in Parliament, the government appointed directors to 10 IIMs the very next day. And they will serve for the next 5 years. Madam, 14 out of 20 IIMs were working without a full-time director. And I'm coming from Kerala, and IIM Kozhikode hasn't had a director for over 2 years. And IIM Ranchi hasn't had a director for more than 3.5 years. So why there was a hurry? Why you hastily appointed directors to 10 IIMs immediately after the tabling of this bill? So that raises some questions about the intentions of this government and its commitment to the so-called academic autonomy. And Madam Chair, the government should have refrained from doing so and should have allowed these IIMs to appoint appoint directors. Madam, IIMs are not only to be made autonomous, but also to be made more inclusive. Inclusive both socially and economically. And I do agree with Mr. Shashi Tharoor, who made a wonderful speech here, and many of our other colleagues who stressed the importance of reservation in teaching posts. If you can have reservation in teaching posts in IITs and still maintain the excellence and standards, why you can't have reservations in IIMs? Why you are not explicitly providing for reservation? As one of our colleagues pointed out rightly, we are busy in celebrating 125th birth anniversary of B.R. Ambedkar, and why you are not showing the courage to make explicit provision for providing reservation for teaching posts in IIMs. And another issue is that, yes, I would like to ask the Honorable Minister whether the government believes that this reservation and excellence cannot coexist, whether the government believes in that argument. And another issue is making IIMs inclusive economically. It is to be ensured that autonomy will not result in converting these IIMs into money-making machines. These IIMs should not be solely guided by the commercial principle of making money. And no student who is otherwise deserving should be denied. No student who is otherwise deserving should be denied the opportunity to study in IIMs only because he cannot afford the cost. And I request the Honorable Minister to ensure that there are substantial number of merit-cum-means scholarships. I'm specifically making this demand because this is not happening in many other institutions of higher learning. Take the case of IISER. What is happening? In IISER, for PhD program, the tuition fees alone have tripled from rupees 2,000 to rupees 24,000 within a period of 1 year per semester. 7,000 to 24,000 per semester. And this tripling has taken place within a period of 1 year. 243% hike within a period of 1 year, to be precise, 243%. And these hikes were affected even as scholarships like Inspire scholarships were, I'm concluding 2 minutes more. And when these scholarships like Inspire scholarships are reduced, the government has cut allocations for research and science education. So given the experience of IISER, where you have tripled the tuition fees and reduced the number of scholarships, I'm requesting the Honorable Minister, please
make sure that no students, I'm concluding in about 2 minutes, sir. 2 minutes, 2 more minutes. This is an important aspect. This is an important aspect to make sure that no student is denied opportunity to study. And finally, this is my final point. Madam Speaker, Madam Chair, I support this bill, but of course with these reservations, and I hope the Honourable Minister will address the concerns raised by me and many other Honourable members. With these words, I conclude. Thank you very much. Mr. Dhananjay Mahadik. Thank you, Madam Chair, for allowing me to speak on the Indian Institute of Management Bill 2017. On behalf of my party, I support this bill. Honorable Minister Sri Javadekar ji has taken initiative to make each of the 20 Indian Institutes of Management as Institute of National Importance and empower them grant degrees to students. It is really a need of an hour, as currently all IIMs are owing to their separate bodies registered under the Societies Act and were not authorized to award degrees. Currently, the students admitted to their master's program are given a postgraduate diploma in management or PDGM. Similarly, those pursuing doctoral studies are awarded the title of fellow at the end of their research. Although the PG diploma and fellow title are recognized by the Association of Indian Universities and HRD Ministry to being equivalent to an MBA and PhD degree, respectively, the equivalence is not universally accepted, especially for the fellow program. Thus, the bill bestows more autonomy than what the IIMs currently enjoy, and the aims at making the IIMs first set of institutions of national importance in which government will have no direct role. I would like to congratulate Honorable Minister for this initiative. Madam Speaker, Madam Chair, I would like to highlight some of the grey areas of the bill which needs attention. Our colleague Honorable Shashi Tharoor ji has already mentioned about the vacancies and situation of the faculties in our country. The bill only has a vague enabling provision on faculty reservation, so which the proposed law categorically states that IIMs will have to provide reservation for scheduled caste, scheduled tribe and OBC students. It has a clause which only says that IIMs shall try to recruit teachers from weaker sections of the society. In the bill, there is a provision of regular review of the performance of the IIMs by independent agencies. However, there is no clarity regarding the performance metrics and agencies shortlisted. The bill should resolve the issue of the status of postgraduate diploma in management currently being offered by the B schools once the bill is through. This is important since the PGDM institution offers 75,000 management graduates every year to the industry, 10 times that of 20 IIMs. Of all PGDM and MBA programs run in the country, government institutes account for just 13% of the total students enrolled. However, the bill is highlighted only the IIMs, not the other institutes, which is a matter of concern, Madam Chair. The most important aspect the bill should address is removing the procedural bottlenecks which setting up the education institutes. Currently, setting up an educational institute requires affiliation, approval, NOCs, permission, recognition, etc. However, the global scenario is only accelerated matters in setting up institutes. This is an unique opportunity for the government to bring in procedural reforms in setting up of new management institutes. Madam Chair, the government should facilitate practical business internships during MBA programs with local Indian companies and foreign companies for students. The curriculum should also include organization development, behavior courses, which are critical to deal with people and to develop soft skills in addition to the core. Technical courses such as marketing, finance, operations, etc. Students should also be compelled to work together in groups with other groups so as to increase collaboration and to mimic the real-world working environment during their business school programs. Professors for business schools must be required to produce independent research
and consulting work with other companies in addition to their academic work in order to increase and improve the local business ecosystem in the country. Part-time visiting faculty from industry must be included in the school curriculum to get more real-world experience for students. A difficult entrance exam must be created for individuals to become full-time MBA faculty and then must be paid well. This needs to be done to increase the prestige of professors in our country, since they are often overlooked and not given respect and importance they deserve. With these words, I conclude, Madam. Thank you. Thank you. Sri Hari Babu. Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on this very important bill. The main objective of the bill is to declare the Indian Institutes of Management to be the institutes of national importance. And the other objective is to give the power to these institutions to award MBA degree, PhD degree instead of PG Diploma in Management and Fellow program. The other objective is to give the autonomy to these institutions. I think these two are the major objective of this bill. As far as the autonomy of the institutions to be given by the government is concerned, still I am not able to believe the proposal of Honorable Minister for HRD Javadekar ji. Nowadays the human instinct is to keep all the powers in his own pocket. Even the Panchayat President does not be willing to delegate his powers to his ward member. But Union Minister, Honorable Minister for HRD, he is relinquishing the chairman of the Board of Governors and giving the autonomy to those institutions is really very, very welcome step, Madam. People talk about giving autonomy, but practically there will be no autonomy. But this is really total autonomy is being given to these institutions. It is a very welcome step. Madam, in 1961, the IIMs were started in Kolkata and Ahmedabad. I think it took another 12 years to start another IIM in Bangalore in 1973. Similarly, another 11 years passed to establish one IIM in Lucknow. In 1996, Indore IIM came up. In 1997, Kozhikode came. 6 IIMs were set up between 1961 and 1997. And in the 11th plan, 7 new IIMs are established in the years 2008, 10 and 11. In these 3 years of NDA rule, Government of India has taken a decision to set up 7 IIMs, 5 new IIMs in 2015. The 6th IIM is being established at Visakhapatnam in the state of Andhra Pradesh in my constituency as per the Andhra Pradesh Reorganization Act, Madam. The latest one is in Jammu. 7 IIMs were established during these 3 years. Another important aspect about establishment of these institutes is that always the government will announce the establishment of an IIM. They will wait for 2-3 years to complete the infrastructure. But the Government of India and Honorable HRD Minister has taken a decision to start the classes immediately from the temporary accommodation, and in my city of Visakhapatnam, IIM started functioning in the Andhra University premises and 2 batches were admitted and classwork is going on, Madam. This is a very good initiative taken by the government. Madam, I would like to point out 4 issues about this bill, Madam. The one issue I welcome is that the Board of Governors are being independent, and 5 out of Board of Governors are going to be alumni members. I think this is one of the very good initiative taken as far as the formation of the Board of Governors are concerned. And social inclusion is also taken care of. SC, ST faculty members are being included in the Board of Governors. Similarly, women members are included, and this is the social inclusive Board of Governors for IIMs, which is a very
welcome step. Similarly, another anomaly I would like to foresee, in addition to IIMs, which are being under societies, which are giving only diplomas, there are private institutes in the country like prestigious one ISB, Indian School of Business at Hyderabad, XLRI, MDI, SPJMR, IMT, and KJ Somaya Institute of Management. They also give only diplomas. When IIMs start giving degrees, what will happen to these institutions if they are not giving the degrees? What will be the future of the students coming out of the institutions? I think there may be a non-level playing field for private sector institutions and the government institutions, which anomaly we should be able to correct it. Whether we force them to be affiliated to the universities or whether we compel them to come under AICTE regulations, I think already those institutions have approached Supreme Court on the ambit of AICTE being implemented, is being thrusted upon them. Madam, another advantage I am foreseeing about this bill is when the IIMs were being given autonomy, IIMs will have the flexibility of establishing the campuses in other countries abroad. If they establish campuses abroad, then the mutual collaboration with the world-class institutions will be possible and it will be benefiting our institutions. Another issue is about the financing agency, madam. So many institutions have come up. The infrastructure has to be built up. I heard that the Government of India is thinking about forming a financing agency for higher education in collaboration with Canara Bank and other banks. I request the Government of India and Honorable Minister to expedite this process of creating a financing agency so as to complete the basic infrastructure for these institutions, madam. Lastly, I would like to suggest that every IIM should have an incubation center to encourage the students coming up with bright ideas to become entrepreneurs. Incubation centers should be collaborated with the venture funds to finance the good ideas coming out of the students. Madam, lastly, I would like to request the Honorable Minister and thank. Because of the bifurcation of Andhra Pradesh, Ministry of HRD is very kind enough to sanction 5 institutes already. IIT at Tirupati, IASCR at Tirupati, NIT at Tadepalligudem, IIIT in Kurnool, IIM at Visakhapatnam, madam. It is a very welcome step for helping Andhra Pradesh. I thank the Honorable Minister. Still, there are 2 institutions to come up as per the Andhra Pradesh Reorganization Act. Establishment of tribal university and establishment of central university are pending. I request the Honorable Minister to take the decision at the earliest and establish those 2 universities also in the state of Andhra Pradesh and start the admissions from the next academic year itself. I will be very much happy. People of Andhra Pradesh will be thankful to Government of India, NDA government led by Narendra Modi ji. Okay, thank you very much, madam. See Shirajuddin Ajmal. Respected Madam, thank you very much for giving me this opportunity to speak on Indian Institute of Management Amendment Bill 2017. Respected Madam, I would like to congratulate Honorable HRD Minister Shri Prakash Javadekar ji for introducing and getting passed various bills related to higher education and institutions like IIT, NIT and now IIM related bills. In addition to that, the Indian Institute of Information Technology Amendment Bill is also to be introduced soon. These are all laudable efforts and I really appreciate these efforts of Honorable Ministers. I appreciate the government for introducing the IIM Bill 2017, which will address a long pending demand of the academia to give degree granting power to the IIMs and also give them academic freedom in pursuit of excellence. Respected sir, I would like to give my comments on the bill very briefly. I am happy to note that the new bill will address
most of the autonomy-related concerns of IIM fraternity, and it will make each of the 20 IIMs an institute of national importance. Sir, it is good to note that the institutes will be managed by an independent board, and each will have a chairperson and director, which will be selected by the board instead of the government. The terms and conditions of the appointment of the board are proposed, determined by the institutions themselves. Very good. A new clause 17, institution of inquiry, has been inserted where the board can initiate an inquiry against the institute which has not been functioning as per the provisions and regulation of the Act. This needs to be thought in deeply, and specific grounds must be enunciated in advance so that no arbitrariness creeps in. Respected sir, while supporting the bill, I have got 5 suggestions. Number 1, IIM were established to help the nation and help the country in managing its resources. However, in the rat race for bigger salary package and the promotions of IIM brand based on such salary and placement figure has diverted the original intention of setting up the IIMs. It was only not by chance that these were called Indian Institutes of Management and not Indian Institutes of Business. I think the new bill should incorporate some provisions where IIMs will be engaged as a management think tank for the local governments. IIMs can also be used as hubs to train, plan, monitor, and help management of social service initiatives. Sir, second one is in the same spirit, there must be a provision for providing extension services by IIMs, as extension services of IIMs should be a partnership. IIMs with state, central, and local government institutions to provide management knowledge and expertise for larger public interest. Beyond the paid consultancy mode that IIMs might be providing at present, the bill should stipulate that a formal IIM extension service is open as all IIMs through which faculty members, educators, administrative staff, and volunteers all associated with an IIM in a particular state will provide solutions for real-life local issues. Third one is the education and training opportunities of an IIM, which are now limited to a select few through CAT admission or through highly priced management development programs, MDPs. It is high time that, recognizing the ever-changing phases of education, educators and students, IIMs should launch outreach education services. This will redefine the IIMs as gateways to the local communities, reaching out to learners in an ever-expanding service area. IIM outreach centers should provide them a platform to try innovative experimental education ideas and build templates of how these programs are offered, partnerships are formed, and quality program and services are delivered. IIM community outreach services should be incorporated as a specific provision in the bill so that IIMs are geared to provide a wide array of specialized educational opportunities, including capacity building and enrichment opportunities. Critical to young students in the surrounding communities, management training customized to meet the needs of workers in nearby businesses, striving to compete in the high-tech workplace, and the showcasing of the educational talent and expertise of IIM's faculty and students through distance education, integration of academic service. Fourth one, sir, I'll speed it up. The absence of Indian universities among the top 5 top-ranking institutions of the world is often highlighted as a criticism of our higher education institutes. In case of IIMs, the government spends a large amount of taxpayers' money to build them, but the research output in terms of publication and patents are minimal. So research professors, there should be research professors should be created so that exclusively they only do on research. Maybe 5% of those professors will handle the research work. Fifth one, many of the IIMs raised concerns about their autonomy very strongly. Sir. समाप्त करिए, समय हो गया. जी. Now, before I conclude my speech, I would like to bring into the notice of the August House that it is very unfortunate that there is no IIM in Assam, as well as most of the northeast states, except one in Shillong, established in 2007, 10 years before. Sir, Assam has been demanding establishment of IIM at public level as well as government level, but unfortunately, the request is still pending. Assam is one of the most educationally backward states in the country. One of the main reasons is lack of educational opportunities and lack of educational institutions. Sir, 1 minute only 1 minute.
I request honorable minister साहब to kindly, sir, एक मिनट खाली. I request honorable minister to kindly propose establishment of IIM in Assam, particularly in Borpeta. सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017 पे बोलने की अनुमति दी है। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे विद्वान मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि भारत में आज 20 IIM है और मुझे इस बात का संतोष है, प्रसन्नता है कि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वो IIM अहमदाबाद बहुत ही इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेपुटेशन है और इसका मुझे गौरव भी है। इस संस्थानों को IIM को स्वायत्तता देने का काम किया है, इस संस्था को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करने का कार्य किया है, बहुत ही अहम कार्य किया है। और जहां तक मानव संसाधन विकास का काम है, इस प्रकार का बिल जब मंत्री जी के लेके आए हैं तो मैं पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर ऐसा कहते हैं कि न्यूनतम शासन और अधिकतम प्रशासन। मैं समझता हूं कि यह बिल जो मंत्री जी लेके आए हैं उसका श्रेष्ठ उदाहरण है, उसका बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी की मंशा जो IIM में आज फैकल्टी की कमियां है, कई IIM में ऐसी है कि लोग फैकल्टी के लिए कब से वो लोग राह देख रहे हैं मगर उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। ये बिल आने के बाद इसका बहुत ही फायदा होगा और इसका जो IIM है वो अच्छी तरह से एक ऑटोनोमस तरीके से कार्य करेंगे। ये जो ऑटोनॉमी होगा इसकी वजह से जो डिग्री है, पहले IIM सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया था और इसकी वजह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद है और अन्य थे वो सिर्फ वो डिप्लोमा प्रदान कर सकते थे, वो फेलोशिप दे सकते थे और इसकी वजह से इसके जो फेलो या डिप्लोमा होते थे विदेश में जाते थे तो भी उनको कई दिक्कतें आती थी क्योंकि इनके पास सही डिग्री नहीं होती थी। इस बार इसको डिग्री का इनायत होगा, अवार्ड होगा तो वो अच्छी तरह से आपका परफॉर्मेंस कर सकेंगे और उनको डिग्री दी जाएगी, डिग्री विल बी अवॉर्डेड, वो उनको PhD भी दी जाएगी। इस बिल की जो मैं विशेषता देखूं तो ये डिग्री प्रदान करेगा और इसके साथ IIM को जवाबदेही के साथ स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी मिलेगी। ये स्वायत्तता 3 प्रकार से होगी, एजुकेशनल स्वायत्तता होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्वायत्तता होगी और इकोनॉमिकल स्वायत्तता होगी। जब ये तीनों स्वायत्तता इंडियन इंस्टीट्यूट के पास आएगा तो बेहतरीन परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा। संस्था के चेयरमैन और डायरेक्टर निर्देशकों का जो चयन होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग होंगे उसमें विशेषज्ञों का उसमें होगा, उसमें पूर्व छात्रा यानी के एल्यूमिनी होगा, इनकी अधिक भागीदारी होगी, इसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, इसमें जो पिछड़े वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी इसमें शामिल होने का प्रावधान है और इसलिए इस बिल का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। इस बिल को स्वतंत्र एजेंसी के जरिए उसका आकलन किया जाएगा और ये पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये पारदर्शिता, सरकार की ओर से पारदर्शिता की एक बड़ी मिसाल होगी और जहां तक इसका वार्षिक रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में रखी जाएगी और CAG द्वारा इनको ऑडिट किया जाएगा। ये भी बात बताती है कि ट्रांसपेरेंसी का इसमें ख्याल रखा गया है। जहां तक बिल में अनुसूचित जाति और जनजातियों का सवाल है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य जो रिजर्वेशन है वो इसके एडमिशन की प्रक्रिया में वो बरकरार रहेंगे और इसके लिए मैं सरकार को अभिनंदन करता हूं। मगर सरकार को मैं सभापति जी आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि फैकल्टी में उनको लेने का प्रावधान है मगर फैकल्टी में उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए, संविधान के तहत जो भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी का उल्लेख नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इनकी भागीदारी के लिए कुछ इसमें प्रावधान किया जाए। जहां तक फीस का सवाल है, बच्चों को फीस का सवाल है, फीस जो अफोर्डेबल फीस, बच्चे जो गरीब
जो पायदान से आते हैं वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें एक ऐसी मैकेनिज्म इवॉल्व करना चाहिए ताकि गरीब तबके के लोग भी उसमें फी भर सके और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसी नेशनल इंपॉर्टेंस वाला इंस्टीट्यूट में वो भी अपना अभ्यास कर सके। दूसरी बात, जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो ज्यादातर हमारा ख्याल, हम तो इसमें लेमैन है, मगर हमारा एक मोटे तौर पर ऐसा ख्याल है कि ये इंडस्ट्री के लिए मैनेजमेंट की बात होगी, ये कॉरपोरेट सेक्टर के लिए मैनेजमेंट के बात होगी, ये बड़े बड़े सेक्टर के लिए बात होगी। भारत एक गांव में बसता हुआ देश है, गरीब है, गांव के लोग आते हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अपने जो क्यूरिकुलम है, अपना जो सिलेबस है, वो देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ सिलेबस करे, उसमें शिक्षा में मैनेजमेंट कैसा किया जाए, आर्थिक जो असमानता है इसके लिए किया जाए, किसानों के लिए किस प्रकार का मैनेजमेंट किया है इस पर भी बल देना चाहिए, और जो सामाजिक न्याय के बारे में जो समानता या असमानता है उसके लिए भी प्रबंधन का उसमें निश्चित रूप से उसमें प्रावधान करना चाहिए। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। और मुझे लगता है कि सभी दलों के लोगों ने इस बिल को पूरे दिल से जिस तरह से जो उसका समर्थन किया है वो बिना कोई अवरोध के बजाय इस बिल को सभी लोग पूरा 100% सम्मति से पारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पीडी राय जी। Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to participate in this very important debate. I rise to support the bill. My party, the Sikkim Democratic Front Party, supports this bill fully. And through you, sir, we would like to congratulate the Honorable Minister and the NDA, the party, for bringing in this historic bill. First of all, let me thank the Honorable Minister on behalf of the Pan-IIM community. Now, this is a community, a huge community of alumni all across the world, all across India. And since I'm the only representative of the IIMs in Parliament, I find this a very historic and an opportune time to be speaking on the granting of autonomy to the IIMs. I would like to just start by saying that why is the IIM such an important institution? Why is it that 20 IIMs today are being, through this bill, being granted the kind of importance as institutions of national importance? It is because there is a brand association of the IIM. Just like the IITs have a brand association, the IIMs is a brand which is recognized the world over. It is on account of institutions which have been built on solid foundations, like the IIM Ahmedabad, through which I had graduated way back in 1978. This is an institution which is built on solid foundation of teaching, of faculty teaching, of their research, and of their consulting. And through the process of consulting and through the process of teaching, they were able to impart cutting-edge thinking into the young minds that go through these IIMs. All the speakers from different parties have welcomed this bill. So this bill will be the harbinger for the next generation of IIMs that will be built, of IITs that will be built, and perhaps, as many across the board have stated, that many other institutions under government control can also be given the freedom. I would like to just say that in the case of IIM Ahmedabad,
I mean, there has been a lot of concern expressed today regarding how can teaching be made to service the rural people. Why should IIMs be such an elitist organization that only then we think of the Nuis of the world or Raghuram Rajans of the world? There is ample examples of people coming out of IIMs who have gone into different streams, have picked up have become entrepreneurs, have now started giving back through building of angel funds. Today, if you see, one of the biggest angel funds within the country are actually directed and managed by the IIM alumni. I would also like to state, sir, that the Jawaja experiment of Ravi J. Mathai, the first full-time director who was brought into IIM Ahmedabad by none other than Dr. Vikram Sarabhai in 1965. He created the first institutional mechanism in which a director would be there only for one term of 6 years. He felt that a director should not stay for more. He felt that it was the faculty who would actually drive these institutions. So the Jawaja experiment, which was done in a remote part of Rajasthan, led to the formation of the Indian Rural Management Institute of Rural Management at Anand. So this is the kind of experiments in rural areas that have been done, and this is just one of the examples. Let me also talk about the collaboration in, say, one of our friends here talked about incubation centers. I recently visited the IIM Calcutta to see their incubation center, and they have one of the top-class incubation centers which has been established there, and which is actually giving fillip to startups in the state of West Bengal, Orissa, and the entire northeast of India. Sir, I would again like to state that across the world, there are the MITs and the Harvards and all the Ivy League institutions. The brand IIM has to be, you have given it now the autonomy that they will be able to propel themselves forward in this direction. And I give you the assurance, sir, that because I'm in touch with the Pan IIM Alumni Association, we give you the assurance that through collaboration, through research, we will take the brand IIM to the rest of the world and indeed to the rest of India as well. There will be a lot of reservation from people, and some of it has already been expressed. But there is ample evidence to show that there will be innovative means by which no student who is worthy of an IIM would be left behind. So with these words, sir, I would like to again thank you for bringing in this wonderful exercise in liberalizing not only the IIMs, but like I said, as a harbinger, that the entire higher education ecosystem would get this kind of fillip, as well as the kind of inspiration how to propel themselves in the future. Thank you very much, sir. कौशलेंद्र कुमार जी। आपने मुझे भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2017 पर बोलने के मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से 20 IIM के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा प्राप्त होने जा रहा है, जिससे उन संस्थानों को अपने छात्रों को डिग्री देने की शक्ति होगा।
IIM अब पूर्ण रूपेण स्वायत्त संस्था बन जाएगी, सरकारी हस्तक्षेप रुकेगा और वहां अच्छा प्रबंधन कार्य होगा। विद्या संबंधी पाठ्यक्रमों में संस्थान स्वयं निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगा। यह बहुत अच्छी बात है। अब सभी 20 IIM के पर्याप्त जवाबदेही होगी। सभी संस्थानों का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा एवं संस्थान के चेयरमैन और निर्देशक का चयन भी बोर्ड द्वारा होगा। बोर्ड में विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों की अधिक भागीदारी भी होगी। महिलाएं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी बोर्ड में रहेंगे और कैग से ऑडिट होगा। सलाहकार के लिए एक फोरम भी होगा। इस सुविधाओं के बाद देश के सभी राष्ट्रीय IIM की एक अपनी विशिष्ट पहचान होगी और विश्व के मानक पटल पर इसका एक उत्कृष्ट स्थान होगा, मुझे जैसा मानना है। सभापति महोदय, यह विधेयक जब लाया गया तब से प्राइवेट बिजनेस स्कूल चलाने वाले काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी IIM के तर्ज पर समान अधिकार मिले। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा कि देश में बिजनेस संस्थाओं की कमी को देखते हुए प्राइवेट बिजनेस संस्थानों को उचित मांग पर विचार करने की जरूरत है। वो भी काफ़ी संख्या में छात्र को PG DM की डिग्री प्रदान कर रहे हैं और उक्त संस्थानों के छात्रों को भविष्य पर कोई खतरा न होना चाहिए। महोदय, मैं बिहार से आता हूं। वहां की आबादी 11 करोड़ से अधिक है। राज्य में मात्र एक IIM 2015 में बोधगया में चालू किया गया। बोधगया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर IIM की स्थापना का अपना एक महत्व है, किंतु मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रथम वर्ष में मात्र 30 सीट दिया गया और द्वितीय वर्ष में 60 सीट। संस्थान 118 एकड़ की भूमि पर बना है और काफ़ी अच्छा है। 300 से 400 सीट होनी चाहिए। अभी फाइनेंस और मार्केटिंग और HR सिर्फ 3 विषयों की पाठ्यक्रम चल रहे हैं। सभी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी बोधगया में IIM में होनी चाहिए। यहाँ पर पूरी सीट भरता भी नहीं है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। बोधगया IIM का संचालन IIM कोलकाता से के तहत हो रहा है। उसे स्वतंत्र करने की आवश्यकता है। कोलकाता से फैकल्टी यहाँ आते हैं, यह कब तक चलेगा? इसलिए IIM बोधगया को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। बोधगया IIM में शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूटिव कोर्स और पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव कोर्स एवं अन्य छोटे छोटे 1 वर्ष के कोर्स को खोलने की आवश्यकता है, जिससे कि संस्थान की पहुंच बढ़ेगी और छात्रों का प्रोफेशनल को भी लाभ मिलेगा। महोदय, देश के सभी 20 IIM में करीब 10,000 सीट है, उसे भी दोगुना करने की आवश्यकता है। सरकार इस पर विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, सिर्फ 6 IIM में करीब 400 या उससे अधिक सीट है। 6 IIM में मात्र 120 सीट है। बाकी IIM में 45 से 60 सीट है। तो प्रश्न उठता है कि खर्च सरकार करती है, संसाधन जब दे रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मैं फैकल्टी पर IIM की फैकल्टी की काफ़ी कमी है। सभी संस्थान फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं। अतः फैकल्टी की जल्द भर्ती हो और आधे से अधिक IIM में तो निर्देशक तक नियुक्ति भी नहीं हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले IIM के निर्देशक की नियुक्ति का चयन के बावजूद है अभी भी मंत्रालय के तरफ से देरी हो रही है। मेरा अनुरोध है कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अंत में सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में जैसे बड़े राज्य के होने के कारण IIM दिए हैं, वह एक है। आपसे मेरा अनुरोध है कि बिहार में 2 IIM, एक उत्तर बिहार में और एक दूसरा ज्ञान की भूमि नालंदा है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी है, वहां पर भी एक IIM की स्थापना करने की व्यवस्था करें, जिससे कि राज्य के काफी बड़े भूभाग को उच्च शिक्षा से वंचित हो रहा है। इसे लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Sir, this legislation
is most welcome. 20 existing IAMs will have to be declared as institutions of national importance, and 90-member Board of Governors will decide. They will appoint director of the institution. That also is a progressive part of this legislation. Similarly, sir, we all know that we had made an experiment in the engineering side earlier. The then RECs, or Regional Engineering Colleges, were declared as NIT. It really improved its standard, and that was a board experiment. I hope that this also will become a success. Power of academic council has been categorically defined in this. Formation of a coordination committee giving due representation to different IAMs, that also is properly defined in this. Yesterday I was closely listening to the Honorable Minister's very brief speech. In that speech I saw his vision, that is to make the our IAM of higher quality institution. And he was saying about the autonomy also. I hope that his dream will become a reality and his wonderful ideas can be translated into action. So with regard to the Board of Governors, its number has been reduced to 19. In some IAM cities, even 23 like that. It has been reduced. Similarly, representation of the government in the board, that also has been reduced. That also is a most significant recommendation. Sir, I would like to say only one thing. एक मिनट रुक जाए। अध्यक्ष महोदय, जब तक ये विधायी कार्य संपन्न नहीं होगा IAM बिल, तब तक इसका समय बढ़ाया जाए और बाद में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस लिया जाए, यही निवेदन। सदन की सहमति है कि इस बिल के पास होने तक समय बढ़ाया जाए? यस यस। चलिए, सदन की सहमति है, ये बिल पास होने तक समय बढ़ाया गया, उसके बाद निजी संकल्प लिए जाएंगे। Yes, sir. Sir, I must congratulate the minister for a particular thing. That is, he is showing a good model. See, government is not interfering in appointing the head of the institution. That's the Board of Governors. This is a good signal, I want to say, because we had a lot of controversies. Indian Institute of Advanced Studies, IIT Mumbai, NCRT Directorship, Vice Chancellors of Banaras Hindu University, Tata Institute of Fundamental Research, Indian Council of Historical Research, Indian Council of Cultural Relations, National Book Trust, and all kinds of institutions. Now, government is not going to interfere in that way. That's a good signal. I especially congratulate you for that. Sir, if you verify a SWOT analysis of our IAM, what exactly is that? We are having very strong, very powerful situation because this century is knowledge-driven. Society is knowledge-driven society. As far as India is concerned, we are having chances than any other country in the world to get employment markets. So here, that strength, of course, is there. Similarly, medium of instruction in our higher learning, that is English, that also is a favorable situation to us. What exactly is our weakness? That also we have to realize. This, we all know that this is internationalization of education. This era is that of internationalization of education. So what we have to do is to make all of our institutions to the standard of that of the world standard. So what is wrong with us? We have no exposure to R&D institutions and industries. Linkage with industries and linkage with R&D institution, that is the need of our. Sir, I would like to say only one thing in the end. That is with regard to reservation. Such a committee is known as the Magna Carta of the minorities in the country. They have evaluated what is the reason for the backwardness of the minorities. In that case, they have also suggested in the higher education institutions such as IIT, IIM, and the Central University, representation of the minorities are negligible. That is to be corrected. I hope that the Honorable Minister will show boldness for that also. When we talk about the inclusive development, these kind of issues will have to be addressed properly. With these few words, sir, I once again congratulate the Honorable Minister for taking such a bold initiative. Thank you very much. Shri N.K. Premchandran. Thank you. Thank you very much, Chairman, sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion
on the Indian Institute of Management Bill 2017. Sir, I also take this opportunity to congratulate the Honorable Minister for having a good bill so as to protect the academic standard of our Indian Institute of Management in the country. The sole purpose of this bill is to give effect to a statutory recognition and also the autonomous status to the higher educational institutions in the country. Sir, the main concern of the higher education scenario in the country is regarding the quality of higher education. Definitely, the House has to discuss about the quality of education which is being imparted in our country. That is a major concern the academic field is now facing. We have to compete in the period of LPG, liberalization, privatization, globalization. We have to compete with the global standards just like in the Western world, the academic institutions in the Western world. And we know that lot of students, thousands and lakhs of students of our country is going abroad for having better quality higher education. Sir, if we try and if we take initiative or earnest efforts, definitely, my suggestion is that India can be a best destination for higher education or quality education, for which my suggestion is the government have to strive endeavors so as to have India be the best destination for having higher education, quality education. That is the first point which I would like to make. Sir, regarding the second point, that is my reasonable apprehension, I would like to make before the Honorable Minister. Last time also, when we took part in the discussion on the IIM partnership, private partnership bill also, I have made the same apprehension. Here also, if you go through the clause 9, subclause 2, sir, clause 9, subclause 2, the provision is there, every institute shall strive to raise funds for self-sufficiency and sustainability. That means, pardon? After 7 years, yes, fully, yes. Even then, after 7 years, I do agree, that is well and good. After 7 years, every institute shall have their own capacity and resources to have run the institute. So, and another also regarding the fees discrimination also, that is fee determination is stated in clause 7, subclause 1. Because of the paucity of time, I am not going to read it. There also it is being specifically stated that the fees should be as per the women fancy of the institute concerned. That should be decided by the institute concerned. So in this case, after 7 years, according to the minister, definitely what would be the fate of the poor students who are coming from the rural areas, who are not able to pay the higher fees? That is the apprehension which I would like to make. So I urge upon the Honorable Minister to take into consideration of this aspect. Because higher fees means poor common people or students will be denying the right to have access to the higher educational institutions like Indian Institute of Management in our country. So that should be taken care of. Otherwise, the poor, downtrodden, rural people and the students will be denying the opportunity to have higher education, quality education in the country. That is the second point which I would like to make regarding clause 7, subclause 1 of the bill, and also regarding clause 9, subclause 2 of the bill. Clause 7, subclause I, not 1, subclause Y. And the third point, I will confine my speech within 2 minutes, sir. So regarding the third point, last time also I have appealed to the Honorable Minister, that is regarding the governance of the Indian Institute of Management in the country. Sir, this, by virtue of this bill, we are providing the statutory status to 20 IIMs in the country. That is a good thing. I fully agree and accept. But regarding the governance of the Honorable Minister may kindly see, you have to come again to the Parliament to have an amendment. If you want to avoid that fate accompli in the future, please consider the suggestion and consider my amendments also. Sir, considering the amendments which I have made in section 10 or clause 10, kindly see, the board of governors of each institute shall be the principal executive body of the institute. Clause 2, the board of each institute shall consist of the following members, namely. Sir, it is practically not possible to constitute a board. See, the chairperson, who is appointing the chairperson? The board. A chairperson shall be appointed by the board. Where is the board? There is no board. And coming to the second, one nominee of the central government. Okay, I do it. Sir, with this, one nominee of the central government and one nominee of the state government. Only 2 persons are there. The board consists of the following. Then what are the other persons? 4 eminent persons appointed by the board. Where is the board?
and 2 members from the faculty of the respective institutions to be nominated by the board. There is no board. And coming 1 person from the scheduled caste and scheduled tribe appointed by the board. And 5 persons to be co-opted by whom? By the board. Sir, kindly understand my point. The governing body or the board of governors is the executive body of the institute, and the board will consist of the following: chairperson nominated by the board or appointed by the board, except the central government representative and the state government representative, all other representatives are being nominated by the board. Then what is the constitution of the board? This is a technical problem. It's a technical issue. How do you constitute a board by virtue of section 10? Since there is no board, so kindly see the position, or at least please convince the parliament, convince the house that how this board is going to be constituted. That is the third point. And the last 2 points are regarding the donation, receiving donation or gift from foreign countries. That has to be restricted because that some conditions should be there. Okay, FCRA is there, so my amendment, I will withdraw the amendment at the time of moving the amendment. And then finally, regarding the land problem. Sir, suppose the state government or the central government is providing land for the establishment of an Indian Institute of Management. If the board or if the institute want to dispose of the land, only provision is central government's permission or approval is required. So my suggestion is, suppose the state government is providing the land without cost to the establishment of an institute, definitely the state government approval should also be obtained. Otherwise, it will be an injustice to the state government. Sir, with these words, sir, I am concluding. With these words, and kindly look into the amendments which I have moved. With these words, once again, I support this bill and congratulate the Honorable Minister Prakash Javadkarji for having such initiative in bringing this bill. Thank you very much, sir. Speak on this important bill, sir. Sir, first of all, I would like to thank the Honorable Minister for bringing in this progressive and innovative bill. Sir, this was the need of the hour, and it is high time, it's most welcome that with change in the global scenario, in the educational standards and the educational requirements, this bill has come. This is the most opportune time, and it's a requirement of the day. Secondly, sir, what does this bill propose to do? This bill proposes to declare all the 20 existing Indian institutes of management as institutions of national importance and confers on them the power to grant degrees. Sir, apart from this, the bill also proposes to give functional and financial autonomy to these educational institutions. The institute should be able to decide their own curriculum, their own funds and administration. And this is a progressive step. Apart from this, the government also proposes to reduce the size of the board. Earlier it was 28, now it has been reduced to 19. This is a welcome step. The smaller the group, it's easier to take decisions and it's faster to take decisions. But in this, I would request the minister to consider a few suggestions. Like the 2 members appointed by the government, one is to be a nominee of the central government, one of the state government. Amongst these members, sir, please ensure that these are the people from academic background, academic excellence, not government nominees like a deputy secretary or a joint secretary. This will be injustice to the educational system because these are institutes of educational importance and excellence. So this should be taken care of. Apart from this, these are supposed to be centers of educational excellence. Sir, they should not be centers of educational excellence in isolation. They should have extension centers in rural areas, in backward areas, in isolated areas. And for that, I would suggest, I come from a backward constituency called Dausa in Rajasthan. Why not to start with? Try your experiment there. Otherwise, your excellence will be confined to few urban areas, few rich people. Everyone should have a say in these resources. Apart from this, जो इनका शिक्षा का माध्यम है सर, सब में अंग्रेजी है. हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या का एक वर्ग है जो अंग्रेजी भली भांति नहीं जानता. उन बच्चों के साथ अन्याय होता है. आप सर खुद गांव की, गरीब की, किसान की, पिछड़े की आपसे ज़्यादा पीड़ा कौन जानता है. अगर उस बच्चे को आप अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, वो कोशिश तो करेगा सर, पर उतने अच्छे नंबर उतने नहीं आएंगे जितने उसकी मातृभाषा में आओ. तो जो जिसकी मातृभाषा है उसका भी प्रावधान होना चाहिए. उसको इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उसको अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती.
तो शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया इसका भी आप ध्यान रखें। दूसरा सर, ये इन सेंटर्स का आपने इसको बोर्ड को पावर दे दिया कि अपना चेयरपर्सन तो ये बोर्ड नियुक्त करेगा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, पर इस बोर्ड को कौन नियुक्त करेगा वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं 19 मेंबर्स, 2 का तो आपने कह दिया कि एक केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, एक राज्य सरकार करेगी, बाकी 17 को कौन नियुक्त करेगा वो बिल में स्पष्ट होना चाहिए कि ताकि किसी में इस तरह का वो गड़बड़ नहीं हो। दूसरा सर, आपने इसमें प्रावधान रखा है कि जो फैकल्टी है सर फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स देते हैं या और इनका बच्चों का देख रेख बहुत नज़दीकी तरीके से करते हैं। सर, इसमें जो समाज के कमज़ोर तबके हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नहीं, ये लड़के सर कभी भी, और मेरे पास तरह तरह के मैंने लोग देखे हैं, वो वहाँ भेदभाव महसूस करते हैं। तो कृपया जो आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो टीचिंग फैकल्टी है, उसमें भी सरकार की नीति के अनुसार जो भी रिजर्वेशन के पात्र हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अन्यथा आपकी जो मंशा है इस अच्छे बिल लाने की वो पूरी नहीं हो पाएगी, उसमें कोई कमी रह जाएगी। सर, इसमें चूंकि ये महंगी शिक्षा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बड़ी फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे होनहार प्रतिभावान बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गरीब क्षेत्रों से आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, सरकार पूरी स्कॉलरशिप भी नहीं देती 100%। तो कृपया नियम बने, कम से कम जो बीपीएल के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो गरीब तबकों के बच्चे हैं, उनकी 100% फीस माफ हो, सरकार उसका वहन करे, तभी आपको प्रतिभावान ग्रामीण छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा। अंत में सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आईआईएम्स में नौकरियाँ कैसे मिलती है। एक शब्द है सर, कैंपस प्लेसमेंट। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं दुनिया की, वो उन कैंपसों में आती है आईआईएम के, और वहाँ बच्चों को ढूंढती है। सर, ये एजुकेशन आईआईएम है, सरकारी है, शिक्षा सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है, और कैंपस जो रिक्रूटमेंट होता है प्राइवेट लोग करते हैं। वो क्या करते हैं सर, सरकार की नीति के विपरीत काम करते हैं। सरकार की नीति कहती है हम गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए हम रिजर्वेशन रखेंगे, और ये जो प्लेसमेंट करते हैं किसी का रिजर्वेशन नहीं रखते। तो अगर सरकार के कैंपस में कम से कम सरकार की नीति की तो पालना हो। मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब अपना जवाब दें, कृपया इन चीज़ों का जवाब दें। और अंत में सर, ये बहुत ही प्रगतिशील एक इसका बिल है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, इसका मैं समर्थन करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये देश की भावनाओं के अनुरूप इसमें सब प्रावधान किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017 पर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र से आने वाले और बड़े प्लेजेंट पर्सनालिटी के धनी हमारे मंत्री जावड़ेकर जी ने ये बिल लाया है, और इसका मैं समर्थन करता हूँ। जावड़ेकर जी को शायद पहले से ही ये मिनिस्ट्री दी, अगर प्रधानमंत्री उनको ये मिनिस्ट्री देते थे तो शायद और ज़्यादा काम इसमें होता था, और मैं ये बिल का यहाँ पर समर्थन करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बातें निकली, और ये बातों की जब चर्चा कर रहे थे, अहमदाबाद के आईआईएम की बात हुई, बेंगलोर के, कलकत्ता के आईआईएम की बात हुई, और ये जब बातें हो रही है सभापति जी, तब 60 साल में क्या हुआ ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो 1961 में प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना हुई, और मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल की सही शुरुआत पंडित नेहरू जी के ज़माने में ही हुई थी, और इसीलिए इंदिरा जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन ये आईआईएम में रहा है। अब आज ये बिल पर हम जब चर्चा कर रहे हैं, ये बिल पर चर्चा करते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि करीब 21% की वैकेंसीज टीचर्स के, फैकल्टीज़ के इसमें जो 20 अपने आईआईएम है इसमें है। तो अगर ये 20% की वैकेंसीज है और कई सारे वैकेंसीज आने वाले समय में बढ़ रही है, तो इसके बारे में टाइम बाउंड क्या सरकार ने सोचा है, क्या इसके बारे में कोई रोड मैप सरकार ने बनाया है कि नहीं, ये मैं मंत्री जी से यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ। इस बिल में यहाँ पर लिखा गया है कि IIM shall try to recruit teachers from weaker sections of the society। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ इतनी लाइन लिख के ये सब होने वाला है,
इसके लिए आने वाले समय में रिजर्वेशंस की बात आईएम में हम करने जा रहे हैं कि नहीं, ये भी हम सरकार से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि समाज के हर घटक को यहाँ पर फैकल्टी के रूप में काम करने का मौका मिलना चाहिए और उस दिशा में सरकार ने भी अपना स्पष्ट रुख रखने की ज़रूरत है। मंत्री जी को मैं यहाँ पर सरकार को ये बताना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी की एग्ज़ाम है, नीट की एग्ज़ाम है, ये हम लोकल लैंग्वेज में भी लेते हैं और लोकल लैंग्वेज में भी पेपर आता है। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, क्या ये रहने वाली है या एवरी आईएम का सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होगी। अगर सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होगी तो 20-20 टेस्ट बच्चों को देने पड़ेंगे। उस दिशा में भी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आने की ज़रूरत है। और सभापति जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि नीट की हमने लोकल लैंग्वेज में तो परीक्षा ली, लेकिन एक लैंग्वेज में जो एग्ज़ाम पेपर था वो अलग आया, दूसरे लैंग्वेज में अलग आया और हिंदी और अंग्रेजी में अलग आया। तो कम से कम यूनिफॉर्मिटी उस दिशा में होना चाहिए और उस दिशा में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए। मंत्री जी, आप महाराष्ट्र से हो और महाराष्ट्र की तरफ आप ध्यान तो पूरा दोगे ही, और मैं मराठवाड़े से हूँ, मराठवाड़े में कोई भी आईएम नहीं है। तो मेरी आपसे विनती है कि आज के इस शुभ दिन पर औरंगाबाद या हिंगोली में आईएम के बारे में अगर आप घोषणा करोगे तो बड़ी खुशी होगी। यहाँ पर दूसरा मैं हिंगोली में चाहता हूँ, हिंगोली में अगर वो घोषणा कर दे तो बड़ा आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर मंत्री जी, आपने आईएम नागपुर में शुरू किया और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उसका जो फर्स्ट कॉन्वोकेशन हुआ, वो फर्स्ट कॉन्वोकेशन का जो उसके बाद जो डिस्कशन हुआ, उसमें जो फर्स्ट बैच निकली है वो फर्स्ट बैच को प्लेसमेंट पूरी तरह से नहीं मिल पाया है और ये आईएम के डायरेक्टर ने कंफर्म किया है। तो मेरी आपसे विनती ये है कि देयर शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि अहमदाबाद से जो बच्चे जो सीख कर बाहर निकलेंगे उनको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और नागपुर और रांची और त्रिची से जो आएंगे अगर उनको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस होगा। और उस दिशा में मंत्री जी को मेरी ये विनती रहेगी कि सिर्फ ऑटोनॉमी देकर चलेगा नहीं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की दिशा में सरकार द्वारा मदद हमने करनी चाहिए और उस दिशा में हमको काम करने की ज़रूरत है। अध्यक्ष जी 2 मिनट। इसमें अब जब हम ये बातें कर रहे हैं, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ। जो आरटीआई के द्वारा खुलासे हुए हैं, जो 20 आईएम है उसमें से 20 में से 14 आईएम आरटीआई का जवाब भी नहीं दे रहे। उनके पास कौन सी फैकल्टी है, कौन सी फैकल्टी नहीं है, क्या किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, कम से कम जवाबदेही तय होनी चाहिए और आरटीआई के दायरे में उनको पूरी तरह से लाने की दिशा में सरकार ने काम करने की ज़रूरत है। और आखिरी पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाह रहा था कि ये जो फीस स्ट्रक्चर की बात आपने की, हमारे भाजपा के सांसद सदस्य हमारे मीना साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, वीकर सेक्शन अहमदाबाद आईएम में 20 लाख 21 लाख की फी है। अब जिसका साल का जो आय है वो 2 लाख और 1 लाख का होगा, वो कहाँ से 20 और 21 लाख की फी भरेगा। तो मेरी विनती इसमें यह है कि जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से पूरी तरह से स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इस दिशा में सरकार ने डिसीजन लेने की जरूरत है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आज ही मंत्री जी मराठवाड़ा में आईएम की घोषणा करें, ये विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं और समय में ज्यादा लूंगा नहीं। एक छांदोग उपनिषद में एक कहानी आती है। कहानी ये है कि नारद का और सनत कुमार का दोनों का संवाद होता है और नारद उनको कहते हैं कि मैंने दुनिया की जितनी विद्याएं थी सारी पढ़ी, सारे वेद पढ़े, सारी विद्याएं पढ़ी। तो सनत कुमार ने पूछा क्या तुमने आत्मा के आत्मविद्या के बारे में क्या पढ़ा? उसके बारे में तो कुछ पढ़ा नहीं। अगर आत्मविद्या के बारे में पढ़ा नहीं तो कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए छांदोग उपनिषद सूत्र है आत्मा वा द्रष्टव्य। हमारे इन जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं वहां पर जो है डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, फाइनेंस में देंगे, मार्केटिंग में देंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देंगे, अलग अलग तरह का वहां पर देंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आईएम के अंदर भी 2008 से लेकर 2011 तक इंटरनेट ये दिखाता है कि हमारे जो है कोची आईएम के आत्महत्या की बच्चे ने, शिलोंग के अंदर आत्महत्या करी। जगह जगह ऊंची पढ़ाई करने के बाद भी लोग आत्महत्या करते हैं। क्या आजकल के जमाने में जहां इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है,
क्या हम स्ट्रेस के ऊपर को मैनेजमेंट कोर्स शुरू करेंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2, आज दुनिया के अंदर जितनी भी अशांति है जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, चाहे घरों में हो, चाहे बाहर हो, या दुनिया का अलग अलग देशों का हो, क्या जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है उसके बाद को मैनेजमेंट कोर्स शुरू करना चाहेंगे? आज दुनिया के अंदर इंटरनेट के कारण जिस प्रकार से नॉलेज का, जिसको ज्ञान का, जिसको बोलते हैं विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, क्या आज जरूरत है कि हम मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज का जो है कोर्स उसके अंदर शुरू करें? तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, और जिस प्रकार का निवेदन जो है माननीय हरीश मीणा ने जी किया, आज हिंदुस्तान के अंदर 6 से 9% जो है लोग जो है अंग्रेजी समझते हैं। क्या यह आयाम केवल अंग्रेजी लोगों के लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए है? हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरी भाषाएं पढ़ने वाले लोग हैं, विशेषकर राजभाषा जिसको हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, उस हिंदी के अंदर भी हमारा कम से कम 20 में से कम 1 इंस्टीट्यूट तो हमारा भाषा बने या नया बनाया जाए जो केवल मात्र हिंदी माध्यम से इंडियन मैनेजमेंट का काम उसमें होना चाहिए। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 2 मिनट दीपेंद्र हुंडा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2 मिनट में ही आपने कहा, क्योंकि हमारे पार्टी का समय 2 स्पीकर रह गए। मैं 2 सुझाव और 1 सवाल मंत्री जी से करना चाहूँगा। पहला सुझाव तो कोऑर्डिनेशन फोरम को लेके, जो आपने कोऑर्डिनेशन फोरम बनाया, बड़ी अच्छी पहल है, जिसमें 33 सदस्य रहेंगे और एक एमिनेंट पर्सन उसको उनके चेयरपर्सन रहेंगे। आप रह सकते थे, मगर आपने एक एमिनेंट पर्सन का वहाँ पे प्रावधान रखा। मैं समझता हूँ अच्छा सुझाव है। ये पीएमओ से सुझाव है। मैंने सुना कि पिछला जो प्रारूप था, पिछली जो आपकी प्रेडिसेसर मंत्री थी, उस समय ऐसा हमें लगता था कि खबर ज़्यादा आती है, काम आपके मंत्रालय में कम हो रहा है। अब लग रहा है कि काम भी हो रहा है, जो जैसे IIIT पास हुआ और आज ये नया बिल आया। इसमें कोऑर्डिनेशन फोरम के लिए क्या अभी तक ये रखा गया, इसका जो मैंडेट की है, जो 20 के 20 IIMs का आपस में जो आपस के इश्यूज हैं उनको लेके कोऑर्डिनेशन। मगर मेरा एक सुझाव है, खुद मैं एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्योंकि मैं काउंसिल ऑफ IITs में 10 साल तक सदस्य था पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में। तो इसका जो मैंडेट है उसको बढ़ाया जाए। उदाहरण के तौर पे कोऑर्डिनेशन फोरम में मैं कहते हैं, पहली बात, कुल हमारे देश में हर साल 5,20,000 छात्र MBA की डिप्लोमा लेते, डिग्री लेते, 5,20,000। इसमें से 1% से भी कम इन 20 IIM से। हम लोग इसी पे ज़्यादा समय अपना लगाते हैं कि इन IIMs में किस तरह इनको सुधारें, मगर बाकी जो छात्र हैं, अभी असोचैम की रिपोर्ट आई कि जो इन 20 IIMs को हटा दें तो बाकी MBA के जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें केवल 7% कैंपस प्लेसमेंट है, केवल 7%। तो इसको, इन IIMs को आगे जो है कुछ इंस्टीट्यूट्स को आपने, जो जैसे IIM अहमदाबाद है, वो कुछ इंस्टीट्यूट्स को ले सकता है, जो उसको एक तरीके से मेंटरिंग कर सकता है, उनको गाइडेंस दे सकता है, और उनकी लेवल को ऊपर लाने के लिए किस तरीके से जो बाकी के हमारे देश में 5,500 बिजनेस स्कूल्स हैं, MBA के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका भी स्तर बढ़ाया जाए। दूसरी, मंत्री जी, मैं स्वयं एक इंजीनियर भी हूं और इंजीनियरिंग के बाद मैंने MBA भी किया है। तो मैं एक चीज़ जो कमी महसूस करता हूं हमारे सिस्टम में, और ये मैंने देखा कि अमेरिका के सिस्टम में उन्होंने इस बात को समझा है। जैसे MIT का जो अल्फ्रेड स्लोन बिजनेस स्कूल है, उसमें MIT के इंजीनियरिंग स्कूल को, अल्फ्रेड स्लोन को बहुत वो नज़दीकी से काम करते हैं। इसी तरीके से स्टैनफोर्ड का ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस जो है, वो स्टैनफोर्ड के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छे से, नज़दीकी से, क्लोजनेस से काम करता है। हमारे यहाँ IITs और IIMs ये विश्व के अंदर सबसे बढ़िया ब्रांड है, इनको आपस में लाने की जरूरत है। जो काउंसिल ऑफ IITs और कोऑर्डिनेशन फोरम आपका बन रहा है, इनको दोनों को एक साथ लाया जाए। मेरी अच्छा अध्यक्ष महोदय, एक सवाल भी ये मेरा सुझाव है कि काउंसिल ऑफ IITs और कोऑर्डिनेशन फोरम IIMs को एक साथ लाया जाए, ताकि मिलके जो है काम किया जा सके। मेरा एक सवाल भी है, सवाल IIM रोहतक को लेकर, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है। 2007 में 7 नए IIM बनने का प्रस्ताव आया था। 2009 के अंदर IIM रोहतक समेत इन 7 की मंजूरी मिली थी। 2010 के अंदर उसकी क्लासेस शुरू हो गई थी, हमारे IIM रोहतक की क्लासेस भाई यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हो गई थी, बिल्डिंग बननी शुरू नहीं हुई थी। 2011 के अंदर उसका फाउंडेशन स्टोन कपिल सिब्बत जी ने रखा था और उसकी बिल्डिंग पे कार्य शुरू हुआ था। 2011 में केली स्कूल ऑफ बिजनेस, जो मेरा अपना बिजनेस स्कूल है अमेरिका का, उसका कोलैबोरेशन हो पाया था IIM रोहतक के साथ। अब मगर जो मेन कैंपस है उसमें केवल 35% काम हुआ है। पिछले कई समय से काम बहुत ही धीमे गति में चल रहा है। और अभी पीछे हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने सवाल पूछा कि हरियाणा में कोई IIM नहीं है। ये IIM 5 साल से चल रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि आईएम अभी है नहीं, मगर मैं आईएम लाने के प्रयास कर रहा हूं। 5 साल से 5 क्लासेस भी पास आउट हो गई और कैंपस भी है, उस पर कैंपस पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये अभी पिछले महीने की बात। तो मेरा एक जो है सवाल है कि इसकी तेज कराई जाए, इसकी जो है कंस्ट्रक्शन तेज कराई जाए और जो है इसकी जल्दी से जल्दी, ताकि इसमें आप उसका उद्घाटन करना है जावड़ेकर जी। And Honorable Minister, ever innovative one, and again placed another innovative bill. I am very glad that the autonomy this is the more or less first time as a form of institutional autonomy in an educational institution is going on, and it will be apart from this government influences and political influences, and it will be away from the red tape limitations. But as there is no time, and the various stalwarts of this parliament has spoken in this bill, so I will just go to say about some limit. It is very good to have autonomy, but I am not sure whether total autonomy is very good for any of the institution or person even. I will only say about few limitation or apprehension what I have about this bill, and that many of the persons, my colleagues have already spoken to that this board formation itself is fallacious. So how come the board can appoint the person? That is the thing. And if in case some illegality, irregularity, also corruption and nepotism goes on in this board, so how it is accountable and who is going to look after this? That is my first apprehension. And as already Shashi Tharoor ji ne bataya tha, and some other colleagues also bataya, what about the disparity between the educational system in these, at least in these two, not to say about the private ones. So how it should be all of these 20s will be at upgraded, is taken as a national institute of national importance. But that should be, the educational parity should be there. How we are going to do it? Only coordination forum cannot do it, I think. And then another thing is students' fees. About everybody has said, that is also my apprehension, that who is going to decide? You said the board of particular institution will be, the bill says that will be responsible for the fee structure. But the contribution of central government or whatever in the budget is also be decided by the board. So that budget will be not same for all the 20s, and the fee structures will be different in given that. But the entry point, that is the entrance examination, is the same for all. How it should be decided, the students will come to which college and which side. That is another one. And these are the few, students are taken into account in performance basis. So what will be that thing that should be decided? And these are my few limitations and apprehension points I am taking. Shri Ramesh Vidhuri ji, 2 minutes, केवल 2 मिनट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर जो युवाओं के भविष्य के आधार पर उनके भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ है, आईएएम बिल 2017 पर बोलने का मौका दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके लाभ क्या होंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके बारे में बहुत लोगों ने कहा है। अभी ऑनरेबल मेंबर बोल रही थी, वो भी यही बात कह रही थी कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया इनके मन में भ्रम क्यों है। आईआईटी, एनआईटी, एम्स इस प्रकार की ऑटोनोमस बॉडी के रूप में देश में पहले भी काम हो रहा है, और इसकी सभी प्रकार की एक्टिविटी सीएजी के अंडर भी आएंगी और कहीं ना कहीं पीएससी के अंडर भी आएंगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। 19 सदस्यों का जो इनका मेंबर बोर्ड होगा, जिसमें से बोर्ड का चेयरमैन चुना जाएगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडी उसको ऊपर जांच रखेगी। इसमें सबसे बड़ा लाभ तो एडवांटेज तो हमें ये होगा कि हमारा जो
निश्चित रूप से एक डिग्री कोर्स के लिए बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर उनको एक सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड होने के नाते एक डिग्री नहीं दी जाती थी। डिग्री ना देने के कारण से उनको ये लगता था कहीं ना कहीं कुछ जगह उनको क्वालिफाई माना जाता था, कहीं नहीं माना जाता था, तो कई प्रकार के बच्चे उसमें एडमिशन लेने से कतराते थे। और जो यूजीसी के अंदर यूनिवर्सिटी है आज उनमें जितनी भरमार हो रही है, इसको भी अगर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन चाहूंगा कि इसको यूजीसी से अगर कनेक्ट हो जाए किसी न किसी रूलिंग के अंदर, तो मुझे लगता है कि और जा सकते हैं और इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। मेरे प्रतिपक्ष के जो बंधु जो इस प्रकार का भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा? हमारे यहाँ सीएजी है, हमारे यहाँ पीएसी है, और मैं फिर दोहराना चाहता हूं इसी प्रकार की ऑटोनोमस बॉडी। और अभी कह रहे हम जैसे लोग कहां जाएंगे? फिर सरकार भी तो कंट्रोल करेगी उस चीज को जी। तो इसीलिए मैं इस बिल के फेवर में बोलते हुए और माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक इंपोर्टेंट बिल लेकर आए लंबे समय के बाद, जो जिसको एक मान्यता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले बजा देते हैं। माननीय सदस्यगण, जब कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बैठिए साहब, विधुरी जी बैठिए, अरे बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए, अरे विधुरी जी बैठिए, चलिए। माननीय सदस्यगण, सभा तालिका के कोई माननीय सदस्य सभापति उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय सौगत राय जी से आग्रह करता हूं कि वे अब सभा का संचालन करें। अभी मिनिस्टर The HRD minister. Don't disturb, let the minister speak. शशि थरूर जी 20 आईएएम की भविष्य को लेकर 22 सदस्य बोले हैं। So on 20 IIM's future, 22 members have spoken. शशि थरूर जी, पूनम महाजन, सौगत राय जी, नागेंद्र कुमार प्रधान जी, अरविंद सावंत, डॉक्टर पी रविंद्र बाबू, जितेंद्र रेड्डी, एमबी राजेश, धनंजय महाडिक, हरिबाबू, सिराजुद्दीन अजमल, किरीट सोलंकी, पीडी राय, कौशलेंद्र कुमार, मोहम्मद बशीर, एनके प्रेमचंद्र, हरीशचंद्र मीना, राजीव सातव, सत्यपाल सिंह, दीपेंद्र हुड्डा जी, ममताज संगमिता एंड रमेश बिधुड़ी। सबने बहुत अच्छे विचार रखे और सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि सबने सपोर्ट किया बिल को। ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसकी ये निशानी है कि हम स्वायत्तता के पक्ष में सभी पार्टियां एक होकर बोले हैं। ये देश को एक संदेश, ये फ्रीडम क्या है? मैं इन ईयर 2000 I was appointed in the Atal Bihari Vajpayee government chairman of working group on IT for masses, and we went there in MIT to negotiate MIT Media Lab Asia project. So when I returned, Atalji asked me what we are importing, and to that I said that, sir, we are importing the freedom of research, culture of research, freedom of ideas, freedom of curriculum, interdisciplinary studies, experimentation, freedom of governance. That's what freedom is all about. And now we have nothing to import. दुनिया देखेगी कि IIM जैसे संस्थाओं को सही मात्रा में स्वायत्तता देकर इस देश ने एक नई पहल की है। लोग इसका जरूर स्वागत करेंगे, ये निश्चित है। So we are actually giving real freedom to our institutes. And as I said earlier, we must trust our base brains. We must trust our base institutes. They have proved, and you have also rightly said, sir, that over so many years, IIM ecosystem, IIM culture and institutional character has been on the display that they are institutes of excellence. When they are institutes of excellence,
we must accord them status of institutes of national importance. That's so correct. कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि आपने पावर छोड़ दी, आपने डेलीगेट किया, आपने, लोग कुर्सी नहीं छोड़ते, लेकिन मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है। तो मैं पर्यावरण मंत्रालय में था, when I was working as Minister of Environment, we decided, because there was so many cases, every day I used to get these many files. 1 hectare forest diversion, 2 hectares forest diversion. For what? For road, transmission line, rail line, drinking water canal, irrigation canal, simple things, public utility things, but for that diversion also, 1 or 2 hectares also, file used to come to the central minister. I decided that we'll do away with this. We established 10 regional centers, offices, and we gave participation to the states also into that, because states were just applicants otherwise. We said that states are also part of the process, sabka saath, sabka vikas. So iske liye we called states also made participators, and I delegated all my powers as a minister to those 10 committees, and there were experts also. So one of my senior officer, for last 3-4 days when we were taking that decision, he used to come and say, sir, what you are doing, then we will not have any file. हमारे पास कोई फाइल आएगी नहीं। मैंने कहा मुझे फाइल आने का मतलब नहीं है, मुझे काम होने का मतलब है, और इसलिए हम करेंगे ये। And we did it with determination, and that decentralization has actually brought the average time period for granting environmental clearance was 600 days. We brought it down to 180 days with that one single basic policy decision. So I believe that we must, आखिर क्या लेकर जाते हम, कुछ नहीं. So power छोड़ना आसान होता है, मन अगर वैसा है तो इसलिए मुझे लगता है कि they are the best guardians of, and we are experimenting, and as I said, there will be a parliamentary accountability. Parliament accountability है. So, but minister's power, and I told all IIM directors when we met in Shillong 7-8 months ago, when we met, I said, now there is a bill, we are ready, and that will be passed by Parliament unanimously. And therefore, this is our last meeting as me as a chairman. So next time, if you call me for tea, I'll come. Otherwise, all the best. So I have already done that. System set karna is the issue. We must set the systems in order, and then things roll out automatically. दुनिया में हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और MIT और बाकी सारे केलॉग्स और big good institutes, how they became world class. We also, thousands of years ago, if there would have been a ranking, Nalanda, Takshashila and Indian universities would have been the first, second, third, fourth, all ranking would have been with Indian universities. But we lost that. Now today, other universities have become, because they are independent, they are free, they are autonomous, and that is the basic strength of educational institutes to survive and flourish. And I'm very sure with this historic decision which we are participating today, we will really make a change, and our IIMs also will go to a next level, and the whole education sector will aspire to be more, because not only this, we are reforming UGC, we are reforming AICT regulators, and the whole reform is about you achieve quality and you will get more freedom. It's a graded autonomy for other higher education institutes also. So that is the direction in which we want to go. Research, what was happening, because this fellow of IIMs were not regarded by many as PhDs. And that was a problem, and therefore there were less students for PhDs to become fellows. They used to go after doing diploma here, they used to go in foreign country and do research. Now the research will be here. That's the basic game. The research management is very important because it's a complex world. It's a changing world.
And we will get that research now based in India, done in India, and used in India also, and used in the world over also. So I can say now, because today's debate is being seen by all the IIMs all over the countries, and all those who are listening, who are interested in this kind of higher education autonomy. So I can say now it's yours. Now we believe in you. It's yours and we believe in you. That's how, let's make a definitive change. That's the basic. Now as far as the issues, and this is the vision of Prime Minister Narendra Modi ji. He wants to make a difference and give real autonomy to the higher education quality institutes so that they flourish and reach to their optimum. That's the vision with which this government is working. Now on the issues. Yes, people said Jawaharlal Nehru ji, Indira ji. Here is a Prime Minister, Narendra Modi, has umpteen times said that 70 years we are not ruling. Every party has ruled and everybody has done something good. And so it's a contribution of everybody. We never deny any such thing. So we are not mean-minded. There are 2-3 main issues. My friend Shashi Tharoor said that what has happened to HIFA, which was hyped. No, it's not hyped. It is on the ground, and Higher Education Finance Agency has started functioning. The first meeting is also done, and now within 1 month you will have the first application cleared also, and the first loan also granted. So that's the beginning of the Higher Education Finance Agency, which will put in nearly $3 billion in next 3 years into the higher education sector to essentially upgrade and create new world-class research infrastructure. That's the aim with which Higher Education Finance Agency will be working. There are n number of quality initiatives which this government has taken. RUSA helps with 2 crore rupees to the good colleges and 20 crore rupees to good institutes, good universities. So RUSA has nearly more than 4,000 crores we have invested, and it has resulted in good development of infrastructure. TechWhip. Now these are 3 phases: technical improvement of quality of technical education. So that is also 3 phases. Now this 3rd phase is all about hilly states, northeastern states, Andaman, and so-called Bimaru states earlier. Now they are good progressing states. Orissa, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal. So all these states are now will get benefit of this technical. This is 2,800 crore rupees. Imprint is a research initiative in which we ask proposals in 10 domain areas from all the professionals, then working people, students, teachers, faculties, everywhere. And we received 1,500 proposals, 200 finalized, 600 crores government is going to give. And it has already started rolling out, and the research is on. Uchchatar Avishkar Yojana. This is industry-academia interaction. And many people talked about incubation centers. Yes, incubation centers are there, very good centers in IIM also, in IITs also, in all these higher learning institutes. We have also started one proposal of GYAN, where 600 professors from 58 countries have come here last year and conducted a course, each one conducted a course here, remaining here for 2-3 weeks and conducted a course. That has benefited hugely to the students, to the teachers, the more interaction, and this year 800 foreign professors from 60 countries are coming here. This is what exchange was needed, and that is happening, and we are recording also. That will be these courses will be available on Swayam also. That will be always be there, and so these good courses will not be only limited to one institute, but will be available to all. So there are n number of initiatives of quality improvement, and therefore we aspire that now there will be new guidelines also issued for, and the cabinet will soon take a decision about world-class universities. 10 in public sector, 10 in private sector. These institutes will be, today will be called as Institute of Eminence,
But after a certain time, we aspire that in a decade, they will acquire the ranking of first 200. They will come into that bracket of first 200, and then they will also go up in the first 100. So that is how we are going ahead. एक दूसरा इशू महत्वपूर्ण उठाया फैकल्टी का क्या? Yes, faculty is the issue, but that's all over. We have to inculcate teachership also, and we have started right from that point. Ki teachership, you are a good professor yourself. There are 60 professors in Parliament, professors and teachers, and we must be proud of that. Last year I felicitated Guru Purnima, and this year also on Guru Purnima, that was Sunday and not Parliament session. So I felicitated our past president, Pranavda, and I felicitated him, and मैंने Guru Pranam किया, because I believe that this is what the Parliament is all about. And this 60 is our strength. So this faculty is an issue. So we have to imbibe and inculcate the teachership. Then further, more importantly, vacancies. There were Ahmedabad, I am a chairman, Board of Governance chairman, Kumar Mangalam Birla called me last week. They have found out so many people, good people, they want to recruit somebody as a director, IMA. So they were asking that today's pay structure is very limited, and therefore if we want to give variable package, we are not allowed by present act. I said just wait for 1 week. I am very sure that Parliament will pass this bill, and after this bill you will get that freedom and you can give variable package, because that is what very important, and that is the way we want to attract. We are also attracting best of the best Indian researchers who are doing research in foreign countries. Last fortnight I was in IISc, Indian Institute of Sciences, Bengaluru, and there 3 of best talented Indian youngsters who had done research and who had got good offers in foreign countries have come back to India to work in IISc. Why this is happening? I talked to them for 1 hour, because I believe that this is the new trend. People want to come back, people want to serve the country, and so there will be more and more such people returning, and more people will be available as faculty also. So we are, this is how we are going ahead. So faculty issue will be done. Then there are, Shashi Tharoorji, only one thing, you asked about the expenditure is not reduced. For IIMs, 13-14, 284 crore, 14-15, 320 crore, 15-16, 460 crore, 16-17, 722 crore, and 2017-18, 1030 crore. That is the progression of the expenditure. So it is not getting reduced. Let us understand. Then, there is one, you said that we are, IMC is the brand. That is what exactly the amendment is, because when the bill was drafted, they made, because the Calcutta was changed to Kolkata, so my draft was, I am Kolkata. We are actually putting, my official amendment is, now we will be saying it, again original name, IMC. So that is what the amendment is. So there was little confusion, but this is what we are bringing, so you'll be happy. Second is that somebody said, you said that there are no, 14 institutes don't have directors. No, sir, only 4 institutes. Only 4 institutes. And therefore also Bodh Gaya, the person selected, did not join. So that was 15th. Then Kozhikode proposal is at advanced stage, Jammu is at advanced stage, and Amritsar search and selection committee is working. So all are addressed. But we can't say both, that directors are not appointed, and also we can't say that we can't have, दोनों तरफ से कैसे बोलेंगे कि डायरेक्टर्स नहीं है और डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहिए, तो वही तो कर रहे हैं हम. So that's one. Second is major issue was reservation. Let me make it once for 2 issues only, and then I'll conclude. Reservation and fees.
As far as fees is concerned, let me be very clear that no genuine merit student who has got the admission or who is eligible to get admission will not be denied education anywhere. That is the affirmative action. That is what government has promised, and government is very well taking care of that. कोई भी जो छात्र गुणवत्ता के आधार पर जिसको प्रवेश मिलेगा उसको फीस वो नहीं दे सकता, गरीब है इसके लिए वो शिक्षा से वंचित नहीं होगा, इसका व्यवस्था हम निश्चित करेंगे। क्योंकि इसमें 3-4 प्रकार है। एक तो स्कॉलरशिप्स है, मेरिट मीन स्कॉलरशिप आईएम में आज भी है और जो भी गरीब स्टूडेंट्स है उनके लिए होता है। वहाँ अर्न व्हाइल यू लर्न ये भी स्कीम होती है। एजुकेशन लोन भी बहुत मात्रा में मिलते हैं और सारे आज चल रहे हैं इसलिए है क्योंकि वो रिपे भी कर सकते हैं विद देयर पैकेजेस। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल कंटिन्यू एंड वी विल एंश्योर दैट नो जेन्युइन स्टूडेंट loses the chance of education and the higher education because he doesn't have money. तो ये नहीं होगा। अब जहां तक रिजर्वेशन की बात है, छात्रों का रिजर्वेशन तो है ही, फैकल्टी में भी हम वी आर ट्राइंग, यानी लास्ट वीक ओनली वी हैव इशूड ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड आई होप दैट दिस विल बी द लास्ट डायरेक्शन because now after bill passes we are not going to issue any direction, they will be on their own. But what we have issued direction is very important, that we must make positive and affirmative action and positive efforts to fill up scheduled caste, scheduled tribe and other reservations in faculties very importantly. Kyonki, or we must make positive efforts and we have lined up 5-10 methods of how we can do it. It will be a walk-in interview type thing. It's a 24 hours advertisement on display. If you need any affirmative action, you can do it. If you want to prepare somebody, you can do it. But there is also a problem. The best of the best scheduled caste and scheduled tribe students get so many offers elsewhere also that they also compare packages. And naturally, anybody will do. But now with this flexibility getting, I think more and more such students also will join as faculties. Because मैं हमेशा मानता हूँ कि बुद्धिमत्ता किसी जात की मिरास नहीं होती है और बुद्धिमत्ता सबके पास होती है। ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानोगे वो किसी को ऐसा कम नहीं करता। तो जो भी बुद्धि मिली है उस बुद्धि के आधार पर वो लोग करेंगे और बहुत आगे आ रहे हैं एंड देयर वी विल हैव बेस्ट ऑफ द थिंग। एक उल्लेख हुआ, उसका जरा भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम एक डाइकोटॉमी में रहते हैं कि रिजर्वेशन की हम बात करते हैं। एक ने, हमारे बशीर साहब ने माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की भी बात की, स्ट्रक्चर कमेटी का हवाला भी दिया, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन नहीं होता है। यानी ये भी एक समझना चाहिए, एक छोटा सा मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी का नाम हमने बदला नहीं है भाई, आईएएम को किसी भी आईएएम को नाम नहीं है, तो ये कोई खुन्नस से नहीं कुछ काम करते हम। अरे वही मैं बता रहा हूं, किसी भी एक बारिंग शिलोंग देयर वाज नो अदर 20 आईएएम्स, देयर इज नो नेम ऑफ पर्सन। तो एक प्रथा परंपरा है तो उसी के अनुसार चलना अच्छी चीज है, उसमें कोई किसी के प्रति नहीं। बहुत जगह राजीव गांधी जी का नाम है या बाकी किसी का, अब आपके समय एक ही फैमिली का देते थे, हम तो सबका दे रहे। आइसर के फीस के बारे में राकेश जी ने पूछा, एक मिनट राकेश जी ने पूछा तो आइसर की फीस कितनी है बढ़कर, जो उन्होंने कहा 246% बढ़ी। कितनी बढ़ी? बीएसएमएस की फीस 27,000 रुपए है, 27,500। यह बढ़कर हुई फीस इतनी सी है। लेकिन आप अगर यह समझोगे कि डीयू जैसी फीस चाहिए, डीयू में कितनी फी है? 15 रुपए महीने की, 15 रुपए फी। मैंने पूछा अधिकारियों को 15 रुपए भी क्यों लेते हो? क्योंकि लेने का, लिखने का, रिसीट देने का खर्चा ज्यादा है, वो क्यों लेते हो? लेकिन एक समझना चाहिए, मैं डीयू के हर कॉलेज में जाकर बताता हूं कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर स्टूडेंट पर ईयर कॉस्ट इज 2,50,000 प्लस। तो ये 2,50,000 देता कौन है? ये देश का गरीब आदमी जब टैक्स देता है तब उससे आता है।
तो स्टूडेंट्स 5 साल यहाँ पढ़ते हैं तो 10 लाख का उधार उनका समाज का है, उन पर 10-12 लाख का, और समाज के लिए उन्होंने काम करना चाहिए, यही मैं कहता हूं हमेशा जाकर। तो यह हम ऐसे कल्पना में ना रहे कि फीस हो ही ना, ऐसा नहीं होता। फिर दूसरा कोई भरता है जिसका बच्चा कभी भी जिस संस्थान का मुंह नहीं देखेगा, वहां के स्टूडेंट की फीस दूसरे भर रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि अमीर को फीस है और गरीब को नहीं है, ऐसा नहीं है। अमीर को भी 15 रुपए फी है। अब ये तो उल्टी सब्सिडी हो गई। शशि थरूर विल अप्रिशिएट। ये जो 4-5 मुद्दे निकले आईआईएम के संबलपुर, रोहतक, बोधगया, विशाखापट्टनम, ये नए सारे आईआईएम्स है, ये सब जल्दी पूरे होंगे। किसके डीपीआर बन रहे, किसके एडवांस स्टेज में है, किसका पैसा रिलीज हुआ है। लेकिन और हिफा का भी फंडिंग है। एक दूसरा भी एक व्यवस्था की हम अरुण जेटली जी से चर्चा कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि जिससे 2 साल में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हायर एजुकेशन का पूरा हो जाए और बाद में हम 4-5 साल में उसका करते रहे बाकी काम। इस तरह का हमें लगा, तो हम इस विचार कर रहे हैं और इसलिए इसका भी काम जल्दी होगा, ये आप भरोसा रखिए। लास्ट 1 सेंटेंस, मातृभाषा का एक मुद्दा उठा, उतना कहकर मैं बात समाप्त करता हूं। मातृभाषा में हाँ, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, आई टेल यू, प्रेमचंद्रन जी आपको इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का बताता हूं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आज सब जगह है। वही बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पहला बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा इन ए न्यू अरेंजमेंट, एंड दे विल अपॉइंट द नेक्स्ट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। सो द प्रोसेस विल कंटिन्यू लाइक दैट, and there will be no role of government in selection of board of governors. Tenure लिखा है 5 साल है। I'll just correct and I'll get back to you. So they will continue, no, only 2 terms. It's a 4 years and only 2 terms. So maximum 8 years, but after that it will be a continuous process in an autonomic way. So I'll request, don't worry, गवर्नमेंट को बाहर आना ही अच्छा है। देखो, इस देश में केबल रिवॉल्यूशन हुई, 10 करोड़ घर केबल से जोड़े गए टीवी का। क्यों हुआ? बिकॉज देयर वाज नो गवर्नमेंट। इफ देयर वुड हैव बीन अ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस, इतने नियम करते कि एक केबल एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकती थी। लोगों ने बांध दिया घर, सारे केबल रिवॉल्यूशन हो गई। तो बहुत सारा, इतने सारे मोबाइल हो गए, इतने सारे रिवॉल्यूशंस हो गए। तो नहीं, मोबाइल में रेगुलेटरी रेजिम है, ट्राई है, लेकिन जहां नहीं था वहां प्रोग्रेस क्लैरिफिकेशन मिस्टर राजीव साहब। नहीं, लेकिन मैं बाद में बताता हूं ना। आपका जो दिल मांगे मोर है कि मराठवाड़ा में भी करी है, यह अच्छे सुझाव देते हो, उसको हम सुनते हैं, उस पर विचार भी करते हैं। तो डोंट वरी, आप शुभ बोला है। और मैं कहूंगा कि देखो, जीएसटी सफल बनेगा, जीएसटी सफल बनेगा, ज्यादा पैसा सरकारी तिजोरी में आएगा। फ्रॉम ए 1 मिनट मैं बताता हूं, फ्रॉम ए नॉन टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी वी विल बिकम ए टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी, एंड देयरफॉर देयर विल बी मोर मनी फॉर एजुकेशन। और आपकी इच्छा भी निश्चित रूप से जल्दी कभी पूरी होगी। तो नहीं होगा वो। और मातृभाषा का एक मुद्दा निकला, और मैं क्योंकि 4:30 बजे है, 1 मिनट, मातृभाषा का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था है। जैसे सभी जगह, एक मैं इजराइल में गया, 80 लाख की पॉपुलेशन है, दुनिया में कोई देश हिब्रू नहीं बोलता, लेकिन वहां ऑटोमिक साइंस से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर सब कोर्सेस हिब्रू में भी पढ़ने की अनुमति है और लोग पढ़ते भी है। तो ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसका मटेरियल भी तैयार करना पड़ेगा, उसकी स्थिति भी तैयार करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है प्रेशर जैसे आता है ना, इस बार नीट का हमने एग्जामिनेशन किया तो 9 लाख छात्रों ने इंग्लिश मीडियम लिया, तो 1.5 लाख छात्रों ने हिंदी मीडियम लिया, 40,000 ने गुजराती मीडियम लिया, 40,000 ने बंगाली मीडियम लिया। तो ये कम संख्या नहीं है, ऐसा ही होगा। और मुझे लगता है और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अगर मार्केट फोर्सेस नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? यही तो बेस्ट प्लेसेस है, दे विल ओनली अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चलेगा। तो निश्चित रूप से ये भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। सबने
इस ऐतिहासिक बिल को जो समर्थन दिया, फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। ये बिल पास करने की अनुमति ये करता हूं, और आपके विड्रॉ करें ताकि इतना वोटिंग में समय नहीं जाएगा। बाद में प्रेमचंद्रन जी। The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we shall take up clause by clause consideration. The question is clauses 2 to 6 stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Clauses 2 to 6 stand part of the bill. Sri N.K. Premchandran to move amendments number 2 to 4. Yes. Sir, I am not moving amendment number 4, but I am moving amendment number 2 and 3 because only one amendment, affordable and reasonable fees. That is my amendment. Because the institute may not impose unaffordable and unreasonable fees. That is my amendment, kindly. So you are moving your amendment. So the question is that amendment numbers 2 and 3 moved by Sri M.K. Premchandran be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think noes have it. Noes have it. The amendments are negative. The question is that clause 7 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 7 stand part of the bill. Mr. M.K. Premchandran to move amendment number 5. I am not moving amendment number 5. Thank you. The question is that clause 8 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Clause 8 stand part of the bill. Mr. Premchandran to move amendment number 6. Sir, amendment number 6 is budgetary support to the IAMs is also there. That is a provision which I would like to make an amendment. Kindly that amendment may be carried. The question is that amendment number 6 moved by Sri N.K. Premchandran be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. Noes have it. Mr. Premchandran is a prolific amendment mover, which is very good. Amendment king. The question is that clause 9 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Clause 9 do stand part of the bill. Sri N.K. Premchandran to move amendment number 7 to 17. Sir, 1 second. Honorable Minister has now clarified that board of governors are being constituted or nominated by the board. I do agree. Sir, kindly go through the definition of clause 2B. Board means in relation to any institute means the board of governors referred to in subsection 1 of section 10. What is subsection 1, section 10? The board shall consist of the following. So as per the minister's observation or version, just in his reply has stated that the present board can nominate. No. See, present board, is there a board? But what will happen after the law is passed and comes into effect, immediately the composition of the board will go change. Our representatives will come out. There will be the new alumni and other representatives coming in. So that will be the first board under the new law. And that board will create next boards after 4 years. So, Mr. Premchandran, are you satisfied? Yeah, or are you with this the explanation, I'm withdrawing my amendments. Huh? You are withdrawing. Thank you. Now, the question is that clause 10 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 10 stand part of the bill. The question is that clauses 11 to 39, there are no amendments to this, do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 11 to 39 stand part of the bill. Honorable Minister to move amendment number 1. I move amendment number 1.
The question is that the amendment number 1 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. The amendment is adopted. The ayes have it, so amendment is adopted. Adoption of schedule as amended. The question is that the schedule as amended do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The schedule as amended stand part of the bill. The question is that clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 1, enacting formula and long title stand part of the bill. The minister may now move the bill as amended be passed. I move that the bill as amended be passed. The question is, abhi pass nahi hua. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is, as amended is passed. The chair, especially Professor Saugat Rai, for smooth passage of this bill by adorning that chair. By adorning that chair. So now government business is over. I thank the members because they allowed government business to go into private members' time, but we had the duty to pass the bill as a whole. We have done it. Now we shall take up private members' business. Sri Ratanlal Kataria to move the following. That this House do agree with the... महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 35वें प्रतिवेदन से जो 26 जुलाई 2017 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है. Thank you. The question is that the House do agree with 35th report of the Committee of Private Members Bill and resolution presented to the House on 26 July 2017. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Item number 18. Further discussion on the resolution moved by Mr. N.K. Premchandra on 11 December 2015. Jugal Kishore Sharma to continue. जुगल किशोर शर्मा जी है. हाँ, कितना टाइम है उनको? तो आप रेडी नहीं हैं? तो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री बंडारू दत्तात्रेय बोलो ना, वो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं. अगर कुछ नया बोलना नहीं है तो मिनिस्टर को रिप्लाई देने दीजिए. बोलिए बोलिए. क्या बोले? तब ऐसा ही पेपर ही नहीं है जो बोलते. पेपर तो नहीं है सर. मुझे 2 मिनट चाहिए. मैं थोड़ा कागज निकाल. कागज ढूंढे अपने बैग में. छोड़ दीजिए. ढूंढ लो. The Honorable Labour Minister may now reply. Honorable Minister may please reply. Your reply, sir. Sir, Honorable Chairperson, sir, see, at the outset, I would like to commend Honorable Senior Member Sri K. Premachandran ji for raising a very set of valid concerns about with this private member resolution. Particularly, a large number of employees, provident fund pensioners are there, and subscribers are there. And the issue raised by Premachandran ji about this pension scheme. This is 1995.
which is framed under the Employees Provident Fund Miscellaneous Provision Act of 1952. And now this is totally administered by our EPFO and our ministry. First of all, I wish to assure this August House that concerns raised in the private member resolution have been receiving sympathetic consideration in the government. I would like to inform this House that the EPFO and Ministry of Labour and Employment has been receiving a large number of representations from individual pensioners of EPS 1995, and as well as many associations. They introduce the benefits of commutation and return of capital which are previously available under the scheme. And regarding the important points which raised by Ramachandranji is, one is restore the benefit of commutation and return of capital to the Employees Provident Fund pensioners. Second one is provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of 12 months immediately preceding retirement. Third one is ensure the payment of full pension to pensioners as per the Employees Pension Scheme of 1995 after realization of full amount of commuted pension from pensioners, and increase minimum pension to rupees 3,000 per month under the EPS scheme of 1995, and also implement the welfare schemes of pensioners including housing, utilizing the unclaimed provident fund amount to about the rupees 27,000 crores. These are the major concerns about the honorable member. But another I wanted to impress upon all these things which I was also mentioning, that I wanted to put the matter in a perspective way. That's why the things are, our pensioners under EPS 1995 earlier had the provisions of taking benefit of commutation as well as return of capital. Under the commutation, the member could opt to commute up to 1/3 of his pension so as to receive an amount equivalent to the 100 times to the commuted value that was paid in lump sum amount at the time of claim itself. Under the benefit of return capital, the member had 3 options to receive certain sums of money in lump sum in the event of certain eventualities by preferring to receive reduced pension to avail these benefits. And this EPS 1995 did not have any provision of restoration of commuted value of the pension, because these provisions were withdrawn in 2009 at a time when the fund valuation over several years they had shown the large deficit of the amounts. So that's why it has become necessary to arrest and curtail the deficit, and this commutation has already been deleted with the notification wide GSR number 688E dated on 26/9/2008. So demand of the members, pensioners for the restoration of the commuted value of pension has been based on the premise that since a value of 100 times the commuted amount of pension was given upfront, the pension should be restored after 100 months, as the amount so paid is recovered through the monthly deductions in that period of 100 months. However, the principle that had been adopted for commutation in the provisions of EPS 1995, which is self-funded contributory scheme, was that commuted amount that is paid upfront is in the
nature of payment of portion of corpus. Therefore, the amount reduced pension was not restored and continued for life. The actual valuation of the fund was also carried out. Accordingly, the restoration of commuted value was considered in such valuation. Why I am mentioning this, sir? This commuted आप सीधा होके बोलिए. actuary, in this actuary, when the valuation was taking on, the first 16/11/1996, the surplus was 1,689 crores. And when it comes to the second year, third year, when it has come down from plus to minus, that is, when it has come to 2008, it has gone to 54,203 crores minus. And again in the 2009, it is increased to 61,608. So when after this 2009, then again, now the recent, the recent actual surplus, now it has come to on 31st March 2015, that is 5,026 crores 87 lakhs surplus. So that's why now it is in the surplus conditions. So through this, when our Central Board of Trustees meeting, we reconsidered the matter after consultation with the actuary, who has worked out a cost-neutral computation factor for future cases, which involves restoration of computed value of pension after 15 years. However, the restoration of the computed value in respect of the pensioners who had availed commutation earlier involves a financial impact of approximately 750 crores. That has to be absorbed in the fund. Based on this, our Central Board of Trustees, they have recommended and approved the reintroduction of the provisions of the computation as well as the restoration of commuted value of pension under Employees Pension Scheme of 1995 after 15 years. So this proposed as stated, the financial implication and the matter included in the necessary amendment in the Employees Pension Scheme 1995 is being considered by the government. So the restoration of benefit of return of capital was not found to be financially viable, and hence was not recommended by our Board of Trustees, and now we have not considered further. So regarding the determination of the pension under EPS 1995 on the basis of 12 months salary immediately preceding retirement, I would like to inform that the pension is presently determined based on the average of 16 months salary. 16 months salary prior to the exit with a view to rationalize it as advised by the Ministry of Finance. So the government has recently made the amendments to the Employees Pension Scheme 1995 and introduced provisions of minimum pension that is 1,000 per month. For that, now even for that also we are taking, because earlier the pension was 30 rupees, 80 rupees, 200 rupees, 250 rupees. But we have taken a decision, minimum pension should be 1,000 rupees. Even then, to give the benefit of that 1,000 rupees, the Government of India now providing 825 crores annually, and this also in perpetuity. So that's why the minimum pension we have increased to 1,000 rupees only. And in the EPS 1995, this is a contributory scheme, sir, where the obligations of all payments are met from the assets of the fund only. And the government is not required to finance any payment obligation. That's why whatever is
request about 3,000 rupees. 3,000 rupees per month. It is not possible without the compromising the financial viability of the scheme. So that's why these two things. And as regards, however, I have, as a minister, I have directed that a complete valuation of EPS 95 be done by the actuary, and then I will review and see that. I will see that a high-power monitoring committee will be formed, and I will take the cooperation of our Premachandra member also in it, and then I will totally review the scheme as far as EPS is concerned. As regards the implementation of welfare of schemes, this government, we are very proactive government for workers. These things, he was asking about the health, housing, other benefits he was asking. As far as our PF subscribers are concerned, the Honorable Prime Minister, Housing for All, he has appealed, he has said that by 2022, Housing for All. In that perspective, our EPFO, we have also formulating a new credit-linked subsidy scheme for housing for the EPF subscribers in 2017. This scheme has been notified in 2017. Under the scheme, the minimum members, there will be 10 members. They can form into a cooperative society, and now the members will be eligible for availing the scheme under the Pradhan Mantri Awas Yojana scheme, in which they will get the subsidy of 2.2 lakh subsidy on the interest, and the beneficiaries of economically weaker sections are the low income group people also. They also would be eligible on an interest subsidy at the rate of 6.5% for a tenure of 20 years. So this is the credit-linked subsidy scheme, sir, will cover two segments. And this is a middle income group which provide 6 lakhs to 12 lakhs. And middle income group, that is, they get 12 lakhs to 18 lakhs, that they will get the 4% subsidy, and the second they will get 3% subsidy. And regarding the interest subsidy, EPFO, we withdraw up to 90% of then their balance of EPFO. And we are going to have a scheme, housing scheme, within the 2 years. We wanted to go with 10 lakh workers for the housing. For the EDLI, for the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, this benefit, we have increased from 3.5 lakhs to 6 lakhs maximum, and from 0 to 2.5 lakhs minimum. So this is also the new initiative which our ministry and EPFO has taken. Another important thing which our Ramachandranji was also asking about the health of the workers. It is a very priority for us. We are going to consider and cover about the retired pensioners also, those who are EPF members. We are going to form with a medical benefit scheme for all pensioners in association with the ESIC, and this will be a contributory medical benefit scheme with a subsidy, and now details are working out. You're happy with this, Mr. Premchand? You're happy with this? It's a very good announcement. Not only that, sir. Other important aspect is regarding the pensioners. We are giving
we are giving we are providing pensions to the 59 lakh pensioners in the country, out of which now the 23,148 pensioners, they have been Aadhaar seeded. And now all the pension disbursement, all the disbursement of pension, they will done by core banking system. Core banking system. And number two, we were issued all the instructions to all field officers to ensure that pension in pension accounts only on first working day, on the first working day of the month. And other important is nationalized commercial banks, HDFC and ICICI and Axis Bank and our other banks also we have instructed all over India, all the post offices, even all the post offices, they can avail their pensions. So other important aspects also there, but many things which I have mentioned, other e-governance initiatives which we have taken, and Honorable Prime Minister is very serious about the employment generation. For the employment generation also, because it is social security. The EPFO is one of the world's biggest social security organization. So the Prime Minister, he has announced Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana, for which 8.33% of PF contribution for a new employee to incentive for an employer for creating a new jobs. So for that, 1,000 crore rupees in this budget, they have been provided. With this, employment generation also can take place, sir. The other two are important things which I wanted to mention. We have started the portability to the workers, that is UAN, Universal Account Number. With this Universal Account Number, now if the worker shifts the work of another factory or another area, they can also avail the PF or pension, everything, wherever it is. And now the total UN numbers, now we have issued 11 crores. These are the many initiatives, sir, which I wanted to mention. By requesting, my only request with the Honorable Member, that I would request, because when I am taking out many new initiatives and also raising the very valuable concerns, I have taken note of it. I have positively I have garnered, and other things, whichever he was mentioning, all the things, other 2-3 things are which I already told you, it is active consideration. And now I request, because 25 to 26 members, honorable members, they have discussed this issue and they have given many suggestions. I will keep it in the mind that the pensioners, they should get justice, because retired people, they need more incentives also. I request with our honorable member to withdraw this resolution, private member resolution, and all other things also, so that they likely to severely compromise the long-term financial viability of the EPS 95. So that's why I request honorable member to withdraw the resolution. So now Mr. Premchandran has the right to reply, and my time is over, so I'll request Mr. Suresh Angadi ji to take the chair. Mr. Premchandran, you start. Mr. Angadi ji is coming.
Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for getting this opportunity to present or to reply to the debate in your august presence as the chairman of this August House. Sir, this private member resolution, as rightly the Honourable Minister has stated, 26 Honourable members have participated in the discussion, and this private member resolution took 6 days in having detailed debate about the Employees Pension Scheme 95. And sir, you may kindly note, more than 9 hours have taken for having a detailed discussion of the Employees Pension Scheme of 95. I'm thankful to the Honourable Minister for having the reply. Though all the matters are not being addressed, he has agreed and assured the House that a high-level committee will be constituted so as to review and revamp the entire Employees Pension Scheme of 95. I am thankful to the Minister. That is one of the demands of the resolution, to have a relook into the Employees Pension Scheme. Sir, you may kindly see Employees Pension Scheme has come into existence in the year 1995. Now 22 years have elapsed. And at the time when the Employees Pension Scheme was presented in the House, the then Labour Minister, the late Dr. Sri P.A. Sakma, has assured the House that once in every 10 years, this Employees Pension Scheme will be reviewed and appropriate changes and enhancement will be made in case of pension and all other benefits. But it is quite unfortunate to note that so far, even after 22 years, this Employees Pension Scheme is not being reviewed and not being revamped. So the suggestion of the Minister or the assurance of the Honourable Minister to have a revamping of the entire Employees Pension Scheme by constituting a high-level monitoring committee or a supervisory committee to look into all the aspects of the Employees Pension Scheme is a welcome suggestion, and I am thankful to the Honourable Minister for constituting such a committee to have a detailed look and revamping of the entire Employees Pension Scheme. That is the first point which I would like to make. Sir, I express my sincere thanks to all the honourable members who have participated in the discussion. Sir, one thing you may kindly note, and the government may also kindly note, Honourable Parliamentary Affairs Minister also very supportive to this private member resolution, and almost all the members across party lines, without any political barriers, entire House has supported this resolution. I think no resolution in the House has been given such support. All the 25 members, even the Honourable Minister is also supporting the resolution. That much gravity and that much significance and importance is there to this resolution. And I am thankful to all the members of all the political parties who have supported this resolution also. I fully express my sincere thanks to it also. Sir, coming to some major issues I would like to make. That is, Honourable Minister has addressed some of the issues, and I would like to place it on record. This resolution was presented in this House in the month of December, 11th December 2015. And during the course of the discussions, Honourable Minister has given 2-3 assurances before the House. And as per the assurances, 2 years weightage has been provided during this period of discussion or during the course of discussion. And also, the Honourable Minister has now given another assurance that the housing facilities will be provided with a nominal interest of 6.5% to all the pensioners. And another assurance given by the Honourable Minister, I am thankful to them, that is one of the demand of this resolution, that all the pensioners should be given the medical benefit, and he has assured the House that employees insurance scheme will be extended to all the pensioners. That means it will be beneficial to 58 lakhs of the pensioners, for which also I am thankful to the Honourable Minister. Sir, the other issues, one of the major issue, that also he has assured, if I am wrong, kindly correct me, because sir, you may kindly see at the opening remarks also I have made the point. Suppose I have commuted an amount from the pension amount, and even after payment of the full amount which I have commuted, till the lifetime deduction is there from the pension. Sir, I have so many examples in my constituency. I am from the cashew sector. I am a trade union leader also in the cashew sector. Poor cashew workers
These cashew workers, one cashew worker, she has come to me, old-aged lady, 85 years, old-aged lady, she has come to me. She has taken an advance of 18,000 rupees from her pension fund. She has repaid 48,000 of rupees by way of deduction from her pension. Even after taking 48,000, that is 30,000 rupees in excess, that she has advanced from the commuted amount or the commuted pension, still the amount of deduction is going on. I have got so many replies since paucity of time. I am not going to the response from the PF organization. When I represented this matter, the PF organization, all the replies to the pension organization is that there is no provision in the employees' pension scheme. This is for the lifetime. That means till the end of the life, deduction will be made from the pension. Sir, as Honorable Minister, Parliamentary Affairs Minister, in my personal talk, he has also said that this is too much, this is little bit draconian. So Honorable Minister has assured that that will be looked into, and immediately after the realization, within the 15 years, that should be, the pension should be restored. That is a good announcement made by the Honorable Minister, for which also I express my sincere thanks to the Honorable Minister and to the government. Sir, coming to the another points, I am not going in detail because of the paucity of the time. The commutation benefit has to be restored. That is one of the demands. Kindly look into it. Commutation benefit is taken away not by this government, but by the then UPA government in the year 2018. They have taken away the commutation benefit and also the return of capital, in which we will say in our constituency, in our state, we will say that it is a death fund that was available to the poor workers. These two benefits have to be restored. That is the demand in the resolution. That may also be taken into consideration. And another very contentious issue which I would like to express before the Honorable Minister and Government is, on 23/3/2017, during the course of discussion of this private member's resolution in the House, I have made a suggestion and submission to the Honorable Minister, because there is a Supreme Court verdict is there. What is the Supreme Court verdict? Those who have opted for higher pension on the basis of the actual salary, they are entitled to get the higher pension. But unfortunately, those workers who were not able to opt, on the basis of the actual salary, they are not entitled to higher pension. This was the position. So many pensioners have approached the High Court and the Supreme Court, and the Honorable Supreme Court has finally made a judgment that though they have not opted for a higher pension on the basis of actual salary, they are entitled to opt even afterwards. This was the judgment. I am not going to the details of the judgment. Judgment in writ petition OP 33022, 322 and 23. Two judgments are also there. On the basis of the Supreme Court judgment of these two cases, kindly see that the government has issued an order on 23/3/2017 that even though those do not have any judgment in their favor, all pensioners are entitled if they are come within the criteria, even though they are not having any judgments. The Employees Provident Fund organization was providing higher pension only those who have obtained the judgment from the Supreme Court or the High Court. Those who are not gone to the court, they are not entitled for the higher pension. So 23/3/2017 order is there. In that order, it has made applicable to all, but in that order also, those members who are after 2014, they are not eligible for the pension. So that matter is becoming a national debate, big debate in the country, and it is still going on. And subsequently on 31/5/2017, that is subsequent to the 23/3/2017, on 31/5/2017, another order has been, a circular has been issued by the Central Provident Fund Organization, in which it is that there is a classification between exempted establishment and non-exempted establishment. So exempted establishment means those establishments, especially the newspaper industry, so many public sector undertakings like FACT and Cochin Shipyard, so many industries. In those industries, they are having their own trust. That is exempted trust. Non-exempted trust means it is directly being administered by the PF organization. So in 31/5/2017, Employees Provident Fund Organization has issued a circular stating that the 23/3/2017 order is only applicable to the non-exempted establishments. Sir, according to me, that order is against the spirit of the Supreme Court judgment, against the assurance given by the Honorable Minister in the Parliament. That has to be relooked. Because
I know in one newspaper industry in Kerala, sir, kindly see in Malayalam Manorama, a big newspaper industry, 14 workers have retired. They are in the non-exempted establishment. Even then, this option is, they have taken the option, everything is done. Even then, they are not being provided this pension. Most of the regional provident fund commissioners, officers are not, they are all confusing these issues. They are all making the issue more confusing. It is very difficult to the poor pensioners to get the pension. So my point is, and subsequently on 31/5/2017, on 21/6/2017, another circular has been issued by the Chief Provident Fund Organization. Sir, what is the circular? In which the classification of exempted and non-exempted is removed. But another provision has been incorporated. What is the provision? Only those pensioners or only those members of the EPS scheme who have paid actual salary, 8.33% of the actual salary to the PF organization is only entitled to the higher pension, and option is only available to them. In a way, the final, what is the final result? Only exempted establishments are not entitled to get higher pension on the basis of actual salary. This is only applicable to the non-exempted establishments. This is wrong. This is not the Supreme Court judgment. Supreme Court judgment is entirely different, and the Kerala High Court has given a verdict. There is no classification about exempted establishment or non-exempted establishments. Supreme Court judgment is very clear, and the Kerala High Court has also given a judgment that is, those who cannot opt at the time of joining the employees' pension scheme, they should be given an opportunity to join by paying the arrears of the pension, or arrears of the contribution. High Court judgment. Against the High Court judgment, the Employees Provident Fund Organization has approached the Supreme Court, and the Supreme Court has said that there is nothing merit in it to interfere, so we are not interfering into this. So the High Court judgment is final. In the High Court judgment, sir, kindly see, the Honorable Minister also, I draw the attention, even we can discuss even after this also, can have a meeting, definitely we can discuss this. The High Court judgment is very clear, and so many exempted establishment workers, so many pensioners who are in the exempted establishments, they are also getting higher pension on the basis of actual salary. But 21/6 and 31/5, these two circulars, when these circulars are there, at the same time, in the exempted establishments also, these pensioners are getting higher pension on the basis of their actual salary. So many confusion is there in respect of this pension on the basis, higher pension on the basis of actual salary. That has to be clarified. I know that it is a very complicated subject. It is even very difficult to understand the terms and conditions of the pension scheme. An ordinary common man cannot understand it. Sir, I have worked a lot in this. Even then, I am not fully conversant with the facts and figures. Even the regional provident fund commissioners are not aware. Even the officials are not aware. It is such a complicated, confusing, lakhs and lakhs of poor workers are being affected. So kindly look into the matter. Higher pension on the basis of actual salary should be provided, whether disregard of exempted or non-exempted. Otherwise, we will be again forced to approach the Supreme Court for getting an order so as to get a higher pension. Instead of avoiding the litigation, kindly this matter may be, once again, review may be done on the leadership of the Honorable Minister. I know that the Honorable Minister is from a background of the poor workmen. Definitely he will look into it. I hope that that matter will be looked into by the Honorable Minister. That is a submission which I would like to make. Sir, 2-3 points, because 9 hours discussion has to be replied, no? And 26 members have took part in the discussion. I will limit my, and sir, another point, this is on actual salary. Then coming to another point, sir, very important point, kindly see. By the 95 scheme, by 1995 scheme, what was the provision? A person or a worker is entitled to get pension who has completed 10 years of service. Ananda Kumarji, please kindly note, a worker who has completed 10 years of service and contribution for 10 years, then he is entitled for a pension. But by virtue of the amendment in the 2014 scheme, by amending EPS by 2014, after this government has come to power, you have made an amendment. 10 years of continuous service has been amended as 10 years of continuous contributory service. 10 years of continuous contributory service means a worker is entitled to
pension only if he has attained the attendance of 3,650 days. That means, sir, Honorable Labour Minister, you kindly examine it. That means a worker has to work for 365 days in a year. Sir, is it fair? Is it proper? A worker has to work for 365 days. Then only he will be entitled to pension after the 10 years of service. Suppose if 3,650 days is there, what will be the fate of the cashew, kaya, traditional workers, sir? I will tell. In cashew industry, maximum work will be 100 to 120 days. Kaya sector, it will be there. In the poor downtrodden people who are working in the traditional industry, maximum working days will be 100 to 120 days. And see, even if a worker who has completed 30 years of work, suppose 100 days, then it will be 3,000 days. Even after the completion of 30 years of service, a poor workman is not entitled to pension. He has to complete 3,650 attendance means. It is highly anti-labor. I know that it is from the PF organization. Some bureaucrats, some bureaucrats or executives simply making amendments. What is the pension, sir, you are providing? You are providing a minimal pension amount of 1,000 rupees. And in that, in my state, almost all the working class are getting welfare funds of minimum rupees of 1,000 rupees. If that be the case, sir, I appeal to the Honorable Minister. This is not industrial, organized industry is not being up. They will get the attendance. They will get 3,650 attendance by virtue of 10 years or 15 years. But as far as the poor seasonal industry is concerned, they are not. So you are denying the right to have the pension to lakhs and lakhs of traditional workers in our country. That is to be relooked, that is to be reviewed. That is my suggestion. And then, yes. Premchandran. Yes. Through you, I want to appeal to Premchandran ji that during the course of the entire debate on this issue, as well as his personal persuasion with the Honorable Minister and with me and other honorable members of the government, whatever points he has made has been very well taken by the government. And Honorable Minister of Labour and Employment, my dear colleague Bandaru Dattatreya Garu, has already assured also of setting up a high-powered committee to review the entire structure of EPF and EPF's various facilities, including pension. Therefore, I request him to conclude his speech so that the next resolution can be taken. And I also request him to withdraw the resolution. Please conclude. Even with the Honorable Parliamentary Affairs Minister, I will conclude within 5 minutes. Within 5 minutes. There are a lot of points to be discussed, but already 3 minutes. 3 minutes. Sir, 3 minutes. I do appreciate, but the points, see the entire, sir, I will suggest to finish it within 2 minutes, please. Yes, please. Sir, the next resolution, and after the next resolution, my resolution, I am also very much interested. That is NRIs, the issues of NRIs, that private member resolution is also my resolution. Please, time is... Yes, I will conclude within 2-3 minutes. I will conclude within 2-3 minutes. Please. So, sir, one more point, very important point. Suppose, sir, the entire industrial workers in the country is watching live television now. I know it very well. Because they are all totally agitated by these so many amendments to this employees pension scheme. Sir, regarding you have stated about the 12 months. Sir, you may kindly see prior to 2014, pension is calculated on the average of the 12 months. Now it has been changed to 60 months. That is to be relooked, that is to be reviewed, because pension amount will be, nowhere in the world the existing benefits cannot be curtailed. That is my point. And also, pension is being calculated on the formula pensionable service into pensionable monthly amount divided by 70. That is, I will conclude. That is the formula. So my suggestion is, all these matters, so many other issues are also there. I have said all these issues in the opening, as rightly Honorable Parliamentary Affairs Minister has suggested. And one more point, 1.16% is the contribution of Government of India, which has come in the year 1971. 45 years have elapsed. So far it has not been increased. So the contribution on the part of the Government of India to the employees pension scheme should be, BMS suggestion is, kindly say, BMS suggestion is, Government of India's contribution to the employees pension scheme should be not less than 6%.
That is a suggestion made by the BMS that may also be looked into. And all other issues, definitely, if the Honorable Minister and the government is constituting a high-level committee, during the course of the discussion, very well, as rightly Honorable Minister has said, definitely it will be taken. The assurance, sir, the assurance... Please conclude already. Yes, the assurance... The assurance... The Minister has told you. Yeah. Please conclude it now. Yes, I'm concluding, sir. When I'm concluding, the Honorable Parliamentary Affairs Minister as well as Honorable Labour Minister has assured the House that such a committee will be constituted and the revamping of the entire employees' pension scheme will be reviewed or revamping will be done. And on the basis of that assurance, and I think that the Honorable Labour Minister could comment on any of the issues which I would like to, then I will withdraw the resolution for a while. Okay. Sir. Sir, already I have replied many of his answers, number one. Number two is, regarding the restoration of pension commutation, I already positively come into the answer. And other important aspect which I has mentioned, all the scheme of pension scheme of 1985, by seeing all these things, that's why I have told him, we will revamp the scheme, number one. Number two, whatever the gaps are filled with that. And other important aspect also, that after revamping the scheme, because by this high-level committee, taking your help also, I told you, that definitely will restore the scheme. And number one. Number two is Supreme Court judgment is concerned, we are implementing. Last time in the Parliament itself, I have indicated to you. Now again, if any circulars which may not in line with the Supreme Court judgment, that also I will examine. And other important aspect, cashew workers also you are telling. Already I told you that I will look into. Because this government is very sensitive government and pro-worker government. That's why many new initiatives we have taken. And lastly, I thank Sri N.K. Premachandranji and all our honorable members, those who have participated in this discussion, 25 members. I thanks all of them, and definitely see that all pensioners regularly now they are getting the pensions. I already requested him 2-3 issues which you are telling. I also understood about the pensioners, their issues. And government is, that's why they have come to minimum pension 1,000. But even then your demand at 3,000 otherwise is there. I told you that actual valuation comes, then I can go ahead for what is to be done. So that's why I once again request you, Premachandranji, to withdraw this resolution and go further. Sir, on the basis of the assurances given by the Honorable Minister that a high-level supervisory committee to review and revamp the employees' pension scheme of 95 and all other issues which we have discussed will be positively considered by the government. Enhancement of pension will be after the actuarial valuation of the employees' pension. That will also be considered, as you have rightly told. And on the basis of all these assurances, I am very happy to withdraw the resolution which I have moved before this August House. Very good. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor of may say ayes. Those who against may say no. I think the ayes have it. The leave is granted. The members may now withdraw the resolution. Sir, I move that the resolution be withdrawn. Item number 19, Sri Gopal Shetty ji.
अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो भवन निर्माण के संदर्भ में है, जो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे देशवासी जिसके वजह से हैरान परेशान है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हमारे नेवी है, आर्मी है और नेवल फोर्स है, इनके एस्टेब्लिशमेंट के आजू बाजू में अगल बगल में आने वाले जो भवन निर्माण का काम है, इनको बहुत दिक्कतों का परेशान सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में मुंबई शहर में एक आदर्श बिल्डिंग का घोटाला यूपीए सरकार के समय में सामने आया और ये घोटाला सामने आने के बाद में यूपीए के सरकार के समय पर एमओडी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने 2011 में एक सर्कुलर निकालकर कंस्ट्रक्शन वर्क पर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ बंधन लाने का काम किया। अध्यक्ष जी अब ये आदर्श के विषय में बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो आज का मेरा विषय नहीं है, लेकिन 2010 से 2017 7 साल पूरे हो गए और मुझे पता नहीं कि ये इसका अंत कब आएगा, जो दोषी है उनको दंडित कब किया जाएगा, जो हमारे बेजवाबदार डिफेंस के अधिकारी है। हम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का बहुत सम्मान करते हैं। मैं तो सबसे पहले इस बात को रखना चाहूंगा, जो हमारे सिपाही है, सेना है, जो सरहद पर लड़ते हैं, जो 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा करते हैं, उनका हम बहुत सम्मान कल भी करते थे, आज भी करते हैं और हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हम करते रहेंगे। लेकिन ऑफिस में बैठकर, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर जो अधिकारी मनमानी ढंग से काम करते हैं, जो अपने देश के लोगों को हैरान परेशान करने का काम करते हैं, उनको हम इस लोकसभा के माध्यम से उजागर करने का काम मैं और बाकी मेरे साथी आने वाले दिनों में करने वाले इस रिजोल्यूशन के माध्यम से। अध्यक्ष जी ये बेगबे लैंड है, महाराष्ट्र की सरकार ने इसको रिक्लेमेशन करके, भरनी करके जमीन वहां पर निर्माण हुआ, एक बीएसटी की डिपो वहां पर बनी है और बाकी के जमीन पर आदर्श का बिल्डिंग खड़ा हुआ। अब 2010 से लेकर 2017 तक हमारे डिफेंस के लोगों ने ये जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये भी आज तक इसका कोई खुलासा हुआ नहीं है। मुझे पता नहीं ये कब होगा, लेकिन वो जब होना है तब होगा। लेकिन 2011 के सर्कुलर ने एक रिस्ट्रिक्शन लाया कि डिफेंस लैंड के बगल के 500 मीटर तक के लैंड पर कोई भी नया कामकाज नहीं होगा। उपाध्यक्ष जी इसका असर क्या हो गया? इसका असर ये हो गया कि उसके अगल बगल के जितने भी जमीन थे, डेवलपर सामने आए, रीडेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ, बिल्डिंग तोड़ा गया, लोग शिफ्ट हो गए। मुंबई महानगर पालिका ने बिल्डिंग का प्लान पास कर दिया और उसके बाद में ये रिस्ट्रिक्शन आने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं तो 6 साल तक काम बंद रहे। उपाध्यक्ष जी बहुत सारे लोग तो जस्ट शिफ्ट हो गए और मर गए। पहले 1-2 साल में बिल्डर जो होते हैं उन्होंने भाड़ा दिया लोगों को, बाकी में उन्होंने भी भाड़ा देना बंद कर दिया क्योंकि बिल्डर कितना दिन भाड़ा देगा, उन्होंने भाड़ा देना बंद कर दिया। जो सीनियर सिटीजन मेरे ऑफिस में आकर, बहुत सारे प्रतिनिधियों के ऑफिस में जा जाकर रोते थे, वो हमको कहते थे, अभी पेंशन का बात यहाँ पर चर्चा हुआ, वो कहते थे कि साहब हमको 10-12 हजार रुपये पेंशन आता है लेकिन हमको 20,000 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। From their own pocket, they have to spend 8,000, 6,000, 10,000 more to pay their rent. वो अपने बिल्डिंग में रहते थे, डेवलपमेंट का एग्रीमेंट हुआ, बिल्डिंग तोड़ा गया, मुंबई महानगर पालिका ने परमिशन दिया, कोई एमओडी का, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। 1903 का जो हमारा एक्ट है, ब्रिटिश के जमाने में बना हुआ था, वो एक्ट के हिसाब से कामकाज चलता था। लेकिन ये सर्कुलर आने के बाद में काम बंद हो गया। 2014 में अब जब हमारी सरकार आई, मेरा 2 ही मकसद था, एक है एमओडी का सर्कुलर विड्रॉ करना और हमारे मुंबई शहर में 3,500 लोग, सर यू विल बी सरप्राइज टू हियर, मुंबई शहर में 3,500 लोग रेलवे में से गिरकर कटकर मर जाते हैं एवरी ईयर, हर साल, और उतने ही लोग इंजर्ड होते हैं। तो ये 2 मकसद को लेकर मैं इस लोकसभा में आया था। एक मकसद तो हमारे सुरेश प्रभु जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, इसलिए उस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरा ये जो विषय है एमओडी का रिस्ट्रिक्शन, इसके बारे में अरुण जेटली जी ने तो एक ही मिनट में सुनते ही कहा इट इज ए फेक, इलीगल, बोगस सर्कुलर, इसको हम विड्रॉ करेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद में अरुण जेटली जी का
मंत्री पद बदल गया, पर्रिकर जी आए और स्वाभाविक है कि कोई भी जब नया मंत्री आता है तो उसको सेटल होने के लिए समय देना पड़ता है। वो सेटल होने के लिए उनको हमने थोड़ा समय दिया और लगातार मैं, किरीट सोमैया जी और हमारे मुंबई के बाकी सारे एमपीज हम पीछे पड़े उनके, और एक सर्कुलर उन्होंने निकाला, उसको भी इन्होंने माना नहीं, उसमें भी करेक्शन करनी पड़ी। दूसरा निकाला, उसमें करेक्शन करना पड़ा, और अंतिम में तीसरा सर्कुलर जो निकला, वो तीसरा सर्कुलर 21 अक्टूबर 2016 को निकला। ये 21 अक्टूबर 2016 को जो सर्कुलर निकला, ये बहुत क्लियर कट है। ये सर्कुलर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों का उल्लेख किया हुआ है। सिर्फ तीनों का उल्लेख किया, इतना ही नहीं, उसके साथ में जो एनेक्सर पर्रिकर जी ने इतना मेहनत करके निकाला, वो एनेक्सर ए में 193 स्टेशन पूरे देश भर में उनको परमिशन देना चाहिए, ये उस सर्कुलर में लिखा हुआ है। और ये एनेक्सर ए में जो 193 स्टेशन है, उनको सिर्फ 10 मीटर का रिस्ट्रिक्शन डाला गया। और दूसरा एक एनेक्स बी है, उसमें 49 स्टेशन आते हैं, उसको 100 मीटर का रिस्ट्रिक्शन डाला गया। और उपाध्यक्ष जी, आपको आश्चर्य होगा, पर्रिकर जी ने कितना मेहनत करके ये सर्कुलर निकाला। ये जो 10 मीटर का रिस्ट्रिक्शन एनेक्सर ए में 193 स्टेशन के लिए है, उसके लिए भी ये लिखा है कि ये लोग भी आकर कंसर्न ऑफिसर के पास परमिशन मांग सकते हैं। अगर वो उसमें नियम में बैठता तो इनको भी परमिशन मिलेगा। लेकिन अप टू 10 मीटर दे नीड नॉट want to visit any MOD officers to take NOC. They can approach direct to the local municipal corporation and corporation will give them permission. ये इतना क्लियर कट होने के बाद में एयरफोर्स का और आर्मी का क्लियर हो गया। आई एम थैंकफुल टू पर्रिकर जी एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। लेकिन नेवल के लोगों ने एक टेक्निकल पॉइंट निकाल दिया। वो कहते कि हमको ये सर्कुलर लागू नहीं। आई एम सरप्राइजिंग, मुझे आश्चर्य होता है। एनेक्सर में लिखा है, सब स्टेशन का नाम लगाकर सारा ये एनेक्सर में लिखा है कि कौन से स्टेशन को परमिशन देना। 1903 का जो डिफेंस का एक्ट है, ये एक्ट पहले से ही बहुत क्लियर है। इट इज वेरी मच क्लासिफाइड। नोटिफाइड एरिया है, अननोटिफाइड एरिया है, और ये नोटिफाइड और अननोटिफाइड एरिया के हिसाब से कॉर्पोरेशन के पास एक सूची है, एक यादी है। उस यादी के हिसाब से वो महानगर पालिका के लोग परमिशन देते हैं, और ये सब ठीक ठाक चल रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये आदर्श बिल्डिंग का प्रॉब्लम निकलने के बाद में, 2011 का सर्कुलर निकलने के बाद में ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, आपको आश्चर्य लगेगा, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के लोग डिफेंस के ऑफिसरों का बहुत सम्मान करते हैं। करना भी चाहिए, हम करते रहेंगे, लेकिन सम्मान कब तक करना, कितना करना, यह मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट ने आने वाले दिनों में तय करने की आवश्यकता है। आज हम जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वहां पर जाते हैं तो हमको भी परमिशन लेना पड़ता है। अच्छी बात है, क्योंकि यूपीए के सरकार के दिनों में हम सुनते थे वहां पर कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, कोई कॉन्ट्रैक्टर, उनके दलाल, उनके कमीशन एजेंट, ये सारे डिफेंस के ऑफिसर में जाते थे और वहां पर बहुत बड़ा एक बाजार जैसा लगा हुआ होता था। लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद, मोदी जी की सरकार आने के बाद में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आया, और ये अच्छा है, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है। हम लोगों को थोड़ी पर परेशानी, दिक्कत होती है, लेकिन